ओके, लेट्स स्टार्ट। आप सब भी प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। विजय जी थोड़ा टाइम निकालेंगे, 10 मिनट। विजय जी कहीं बिजी है, ठीक है, चलिए। ओके, बैक स्ट्रेट, लिफ्ट योर चेस्ट अप, roll your shoulder blades back and relax. Elbows towards your body, palms up towards the ceiling. Once you are comfortable, gently close your eyes with a gentle smile on your face. Slowly bring your awareness towards your breath. Now join your palms together. You can chant with me or you just feel the vibration. Dehi me saubhagyam आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि ओम शांति शांति शांति। Hands on your knees, gently open your eyes. Now everyone first open your mouth. Now inhale and exhale from the mouth. We do Ujjayi breathing. First 5 rounds from the mouth. Inhale from the mouth, exhale from the mouth. तो मुंह से श्वास लेंगे, मुंह से श्वास को जाने देंगे. Three more. बिल्कुल धीमा गहरा लंबा मुंह से श्वास लीजिए. मुंह से श्वास को जाने दीजिए. जस्ट लिसन द साउंड. आप देखें जब आप श्वास भर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो आपको कैसी आवाज आ रही है. जैसे समुद्र के पास आप बैठते हैं. जस्ट लाइक ओशियन ब्रेथ. लिसन द साउंड. Same way, close your mouth. Now bring your awareness towards your throat. अब आप श्वास तो नाक से लेंगे, बट सेम साउंड को आपको ध्यान में रखना है. और जब आप नाक से श्वास लेंगे, नाक से श्वास छोड़ेंगे, तो पूरा ध्यान गले पर. और सेम जस्ट ओशियन साउंड, और जस्ट लाइक अ बेबी साउंड, बेबी स्नोरिंग साउंड, सेम ऐसी साउंड आपको अपने गले से निकाली है. तो मेक अ लिटिल कॉन्ट्रैक्शन एट योर थ्रोट. So deep inhale, deep exhale. Ujjayi breathing. Excuse me. 5 rounds. पूरा ध्यान गले पर. Feel the contraction at the back of your throat. 5 rounds of Ujjayi. Now, after your exhalation, relax. Left hand in Agyana Mudra. Right hand Nasagra Mudra. First 2 fingers closed. Close your right nostril. Inhale from the left. Exhale from the left. Left-sided nostril breathing for next 60 seconds.
inhale, slow exhale. So उल्टी नासिका से श्वास भरिए, उल्टी नासिका से श्वास को खाली कीजिए. Slow inhale from left nostril. Slow exhale from left nostril. धीमा, गहरा और लंबा श्वास लीजिए. Very gentle, slow, deep inhale. Slow, deep exhale. Now, after your exhalation, close your left nostril with your ring finger. Remove the thumb. Inhale from the right nostril. Exhale from the right. धीमा, गहरा और लंबा श्वास सीधी नासिका से भरिए और सीधी नासिका से श्वास को खाली कीजिए. Slowly make your inhale and exhale long. Try to inhale in 4, 5, 6, 8, 10 or more than 10. Count in your mind. Very slow inhale from right nostril. Very gentle, slow exhale from right. धीमा, गहरा और लंबा श्वास लीजिए. उतने ही धीमे, गहरे, लंबे श्वास को जाने दीजिए. Now, slowly switch to alternate nostril breathing. So inhale from left, exhale from right, inhale from right, exhale from left. Slow inhale from left nostril, exhale from right, inhale from right, exhale from left. I'm so sorry. If you feel little discomfort with your right hand, you can support your right elbow with your left hand. But don't change your hand. Only use your right hand. Only you and your breath. Leave everything behind. Last 2 rounds. Last round. Once you fully exhale from the left, you can relax. Fully exhale from the left and then relax. Don't open your eyes. Hands on the lap. Palms up. Shoulder relaxed. Just scan your body from toe to head with inhale and from head to toe with exhale. Just natural breathing. Do not try to control your breath in any way. Just simply watch your breath coming in and going out. Your breath is your best friend. Connect with your best friend. बिल्कुल धीमा श्वास लीजिए.
Do not pass any judgment. Observe each inhalation and each exhalation. Just accept your breath the way it is. If your mind wanders here and there, command your mind. Right now, I am healing. Bring your awareness back to your breath. Very slow inhale, slow exhale. Scan your body with each inhale. Move your concentration from toe to head with inhale, head to toe with exhale. Feel the lightness, feel the calmness in your body. If you feel any sensations in your body, don't pass any judgment. Now observe the slight pause after your inhalation and before your exhalation. So when you inhale and immediately after your inhalation, there is a slight pause. Concentrate and at that point and then exhale. Slowly and slowly make that slight pause into a hold. When you inhale, there is a slight pause after your inhalation and just before your exhalation. Slowly make that pause into a hold. So inhale, hold your breath, and then exhale. Effortlessly hold. Hold as much as you can. You just simply inhale, श्वास भरिए, श्वास को रोकिए और रोकना छोड़ दीजिए. After your each inhalation, slight pause, slight for internal retention of your breath. And once you feel discomfort, you just simply exhale effortlessly. Last round. Slow, deep, long inhale. Hold your breath. And then exhale. Eyes still closed. Now we do few affirmations. You can chant with me or after me. I am powerful, peaceful, and a loving soul. I repeat, I am powerful, peaceful, and loving soul. I am happy soul. I am happy soul. I am successful. I am successful. I am perfect. Repeat. I am
perfect. I am easy and simple. I am easy and simple. I am healthy and strong. I am healthy and strong. I am giving unconditional love and acceptance. I am giving unconditional love and acceptance. I am fearless. I am fearless. And very important, my family is united. My family is united and I have time. Repeat 3 times. I have time. One more. I have time. And lastly, everything will be great with me. Everything will be great with me. Fully relax. Eyes still closed. Now rub your palms. Once you feel the warmness, do cupping on your eyes. One more. Rub your palms. Once you feel the warmness, do cupping on your eyes. Now massage your head, face, neck, shoulder, arm, forearm, hands, organic body, back, spine, legs. Fully energize your body from head to toe. Now gently open your eyes. Thank you. Hare Krishna. Jai Hind. Thank you so much. Thank you for bearing my bad throat. I'm so sorry. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you, Tanvi. Oh, Thank you. Thank you, Dr. Neha, for a very positive start to the morning with these set of positive affirmations. thank you. Good morning, everyone. Good morning. Thank you. So, I know that I had said that we will be having a photograph Thursday morning, but since some of us haven't joined yet, so what we will do is we will take the photograph at the first morning break at 11 a.m. And our coach for the day, Mr. Arvind Deshmukh, has already joined. So I'll just tell you the plan for the day. So today, day 10 is all about innovation. We will be starting with the topic of what it takes to have an innovative mindset with Arvind, and moving on to building an innovation culture with our next coach for the day, Dr. Kirti Bala. Since it's your first topic, Arvind, with this very interactive batch of BSF, I will be introducing you to them briefly before we start. Mr. Arvind Deshmukh is a certified corporate coach, author, and learning development professional with over 16 years of work experience. Arvind holds a Bachelor of Engineering in Instrumentation and Control and MBA in International Business from Thunderbird School of Global Management, USA. Arvind has developed and delivered several in-person and online training workshops in both the developed countries and emerging markets. He's a certified global mindset facilitator and design thinking coach.
He has worked with highly reputed academic institutions such as Thunderbird School, Arizona State University, and Amity University. So I will be giving the stage to you, Arvind. Over to you. Thank you very much, Tanvi, for the kind introduction. And is my voice coming all right? Yes, yes, Arvind. Perfectly fine. Okay, perfect. Okay, so first of all, a very good morning to all of you. After a very nice, rejuvenating session, the yoga session with Dr. Neha, I think we are all set to begin the day. So yeah, and this is I think this is the fifth time I'm taking a session with the BSF Commandants, and whenever I take a session with the BSF Commandants, I am super excited because this is always a very interacting group. They are very amazing insights that come out of it. So yeah, so I'm going to share my presentation, and I have taken this session 4 or 5 times previously as well with the BSF Commandants, and there was a lot of interaction that came in. I hope the same level of interaction and the energy I'll be able to see with this group as well. So without further ado, I will share my screen and we'll get started. Okay, so is my screen visible? Yes, yes, sir. It is. Okay. That's great. Yeah. So today is all going to be about innovation. From morning to the evening, we'll be discussing about innovation. I am with you till your lunch break, till 1:30, and we are going to be discussing this very interesting topic on what it takes to have an innovative mindset. अब जब इनोवेशन के ऊपर चर्चा होती है तो वो चर्चा एक पक्षीय तो होती नहीं है वो चर्चा हमेशा बहुपक्षीय होती है so all of us talk, all of us interact, all of us give our inputs, then only the interest comes in this topic. So I'm expecting that all of you are going to contribute in this session as well, so that we learn from the content at the same time we learn from each other as well. Okay, so yeah, so today's topic is, and of course there is, I'm sure by this time you're very comfortable with the Zoom platform as well. तो आप लोग यहाँ पर हमारा चैट बॉक्स है, तो चैट बॉक्स में आपको जो भी कमेंट्स आप डालने हैं आप डाल सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि आप अपना जैसे है कि माइक टर्न ऑफ करके आप लोग बोले. So whenever you speak, there is an interaction, it is even more fun. But in case you want to throw your comments in chat, you can throw your comments in chat as well. But again, I would suggest that we can talk. It is going to be even much better. Okay, so yeah, so innovation is a very interesting topic, and it is the hot topic these days. हर जगह innovation की चर्चा हो रही है. Private sector में भी innovation की चर्चा हो रही है, government sector में भी innovation की चर्चा हो रही है, multinational platforms पे भी innovation की चर्चा हो रही है. So we are discussing innovation everywhere. So today's topic is about what it takes to build an innovative mindset. So before we understand innovation, it is very important for us as individuals to understand that do we have an innovative mindset or not. और हम लोग इसी की चर्चा करने वाले हैं कि हम लोग अपना एक innovative mindset कैसे बनाएं, अपना एक mindset जो innovation के प्रति जागरूक है, innovation के प्रति सतर्क है, हम लोग वो mindset कैसे बनाएं. So that is going to be the topic of the day, and we are going to be discussing various aspects of building an innovative mindset, and I would expect your contributions there as well. Okay, so but before we begin the topic, to set the context right, I wanted to ask all of you, I wanted to show all of you a video. So let me try and play this video ताकि आप लोगों को इस सेशन का एक कॉन्टेक्स्ट हमारा बिल्ड हो जाएगा, उसके ऊपर फिर हम लोग चर्चा करते रहेंगे. जब तक तन्वी ये वीडियो चलाती है, लेट अस हम लोग एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं इनोवेशन के बारे में. व्हाट डू यू थिंक इज इनोवेशन? आपके हिसाब से इनोवेशन क्या होता है? कैन आई गेट अ फ्यू रिस्पांसेस आप लोगों से? Introducing something new or different, maybe in a simple way for betterment of result, maybe some out of box solutions in a simplistic way for betterment of results. Exactly. Thank you so much, Vishalji, for mentioning that. We are doing something creative, we are doing something out of the box, we are doing something new, and that new has an outcome, right?
like we are trying to improve something or we are trying to make something better. Right. So thank you so much, Vishalji. I mean, that was like a very, very apt definition. Can I have a few more responses? कि आप लोगों के हिसाब से innovation क्या है? What are the different aspects of innovation? It's not only for the betterment of the existing product or processes, but it can be a good substitute also. Okay, thank you, Singh sir, for that. How can it be a substitute? Can I? Substitute means the cheaper version of any high quality product by way of innovation, which we call in India jugaad. Exactly, Singh sir. In fact, we are going to be discussing jugaad like after this video. And आपने जैसे ना Singh sir, like you have been thinking ahead of the time. तो अभी हम लोग आगे इस presentation में we are going to be discussing about positive destruction कि किस तरह से हम लोग पुरानी चीजों को अच्छा और सस्ता कर सकते हैं. Because innovation is all about incremental change. It is all about making technology better. It is all about making processes better. It is all about making processes and products more affordable and more accessible. तो उसके बारे में भी हम लोग अच्छी तरह से चर्चा करेंगे. एंड थैंक यू सो मच सिंह साहब फॉर मेंशनिंग दैट, क्योंकि आप थोड़ा सा मतलब है कि आप आगे की सोच रहे हैं. तो थैंक यू वेरी मच सिंह साहब फॉर दैट. Okay, can I have a few more responses by the time Tanvi gets ready with the video? As far as good morning, sir. Good morning, Raghavendra ji. It is in our parlance, if we'll say, as far as our tasks are concerned, it is a different and better way to evolve or to find out the different and better way to address some problem or to manage some kind of the task or to do some task to solve it. That is what I have to say. Right. Thank you, Raghavendra ji, for mentioning that. In fact, and Raghavendra ji has mentioned actually a very important aspect of innovation, that innovation has a purpose. And that purpose is, one purpose is like, as Vishal ji and Singh Saab said, like to create something new, to create something different. But innovation has another purpose, and that is to solve the problems. राइट तो हम लोगों को प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है इनोवेशन से. जैसे हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स लाइक इन अ लाइन ऑफ वर्क, मतलब बीएसएफ में तो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, आर्मी में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, सरकारी काम करने जाओ वहां पर प्रॉब्लम्स आती रहती हैं. बट इनोवेशन इज अ मैकेनिज्म वेयर वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन न्यू एंड इफेक्टिव वेज. Even if you're not using new and effective ways, can we use some of the older ways in a new method, in a new process? Like, can we use some of the older mechanisms to solve existing problems? कि हमें हमेशा नया ही लाना पड़ेगा चीजों को, पुरानी चीजों को. The existing problem can also be sorted out by betterment of product and the innovation. Old method means like case study of old thing happened in which the result you got by introducing something different. That can you find is applicable here also, and you apply that. Exactly, sir. So the old practices, let's say like we were using a practice in 1950s, but it became obsolete now. लेकिन अभी 2020s में we realized that वो 1950s की जो practice थी, that was not all that worthless. We can reintroduce that in a different way, and we can start getting good results. Like one of the big examples is like what you were doing before this session, yoga. So like a few years back, like when we were growing up, it's basically introduction of new idea, by using the available resources, having an aim to minimize the cost and increase the efficacy or effectiveness. Basically, that is what we basically mean in our parlance innovation is. Exactly, Chaudhary Saab. Thank you very much for mentioning that point. In fact, we are creating efficiency, we are creating efficacy, we are creating effectiveness. Yeah. So like whatever we are doing in a new and a different way, we have an output. So unless and until innovation has an output, innovation does not hold good. अगर एक आइडिया हमारे दिमाग में है लेकिन आइडिया हमारे दिमाग में ही रहता है, आइडिया stays in our head, idea does not come out of the head, then is that idea any good? वो आइडिया अगर दिमाग में ही रहता है, बाहर नहीं आ पाता है, no use, that is of no use. Right, absolutely, Chaudhary Saab. So like an idea, innovation तभी होता है
जब उसमें हमारे तीन एस्पेक्ट्स होते हैं. द फर्स्ट इज इंस्पिरेशन, कि यहाँ हम लोगों को थोड़ा सा इंस्पिरेशन है दैट वी वांट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. अच्छा, ये वीडियो आ गई है, फिर उसके बाद हम लोग इसकी चर्चा करते हैं. ये वीडियो आ गई है, so let's play this video and then we can start discussing. Yeah, 1 minute, Arvind. I'm just putting it on screen share. Okay, sure. Sir, I remember one famous lecture which became quite controversial also, Yes, PM sir. Modi, where he said that somebody made tea out of some मीथेन गैस नाले से चाय बनाई. we can talk of the town, the gas is produced out of the sewage, and then he was able to make tea out of that and sell tea. Yes. So we couldn't find the examples, but it could be one his ideas of regarding innovation on this simplistic way. Exactly. So that was a simplistic way because this guy realized कि वो नाले के सामने अपनी वो टपरी, जो चाय की टपरी होती है ना सर, खोखा ठेला, वो लगाया करता था. So he realized कि जो नाले से मतलब बदबू आती है, क्यों बदबू आती है? कि वहां पे मीथेन गैस जा रही है. हाँ, तो उसने कहा इस मीथेन गैस का हम लोग यूटिलाइजेशन कर देते हैं. गांव में तो हम लोग जैसे गोबर गैस के प्लांट लगा देते हैं. हाँ, so he actually transformed that methane gas into a fuel and he started making tea out of it. So that was an idea, that was an innovative idea on his part. लेकिन अब जैसे ये है कि अब पॉलिटिक्स में तो कंट्रोवर्सीज वगैरह होती रहती है. So when our honorable Prime Minister Modi ji made that point, so like there was some controversy around it, but ultimately Modi ji had the last laugh because they realized that this idea is actually actionable. And in fact, Vishal ji, in fact, like this is something very interesting because last week I was doing a session with one of the Delhi University colleges. और वहां पर बच्चों ने ये हमको आइडिया दिया. They said like we are going to work on this idea and we are developing a prototype wherein we are going to be generating fuel from sewage. तो फिर मैंने उनको बोला कि सीवेज, यह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, तो वहां से जाके उनका जो स्लज होता है उससे फ्यूल ऑलरेडी बन रहा है. कहते नहीं सर, मोदी जी ने जो आइडिया बताया था उससे हम लोग मीथेन गैस से हम लोग फ्यूल बनाने वाले हैं. तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है. इनफैक्ट दिस आइडिया दैट मोदी जी had initially suggested in one of the speeches is now being put into practice of in the process of renewable energy, because now India is actively looking for alternate means of fuel, and this idea is going to work very well. क्योंकि अगर कुछ भी किसी चीज की अगर हमारे पास कमी नहीं है, वो हमारे पास इंसानों की है. और like the human waste can actually be used for different things, and this is also a concept in the circular economy. जैसे अभी तक हम लोग लीनियर इकोनॉमी में रह रहे थे, जहां हम लोग जैसे है प्रोड्यूस, यूज, डिस्पोज, ये हमारी लीनियर इकोनॉमी थी. लेकिन अब हम लोग सर सर्कुलर इकोनॉमी में आ गए हैं. तो धीरे धीरे प्रोड्यूस, यूज, डिस्पोज, रिसाइकल, अगेन यूज. So basically, innovation is a methodology wherein we are actually pushing the economy from being linear to being circular. And thank you very much, Vishalji, for mentioning that. That was actually a very, very good example. So let us see the video. That is the thing. Absolutely. In fact, like in my previous sessions, I've heard so many stories wherein our commandants came up with creative ideas and they implemented at minimal cost, and they were creating huge impact. So I have heard the story of using the bamboo on the Bangladesh border, because like people cut the wire. So like they started using bamboo sticks because bamboo is actually difficult to take. It takes time to cut. So when you actually, in the process, when you're trying to cut the bamboo, I mean, people, BSF Jawans are able to get time and they're able to identify. Yes, reaction time, that gives the reaction time, because it cannot be cut with wire cutter. You have to use hacksaw sort of or other that sort of equipment. So in that case, there will be sound. In that case, you need some time. So our boys are sufficiently alert in that case to react within that period of time. They got the reaction time, I mean to say. They get their reaction time and they react appropriately accordingly. Right, absolutely. They know the problem, they are thickly into the problem, and they have a mindset with the minimum resources. Forces them to go for Jugaad or innovation.
However, आप इंडिया में तो सरकारें भी जुगाड़ से चल जाती हैं, ये तो सेंस है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर तुम्हारी सरकारें भी जुगाड़ से चल जाती हैं, सब कुछ यहाँ पे जुगाड़ से चल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक विडंबना है, एक थोड़ी सी विडंबना है जो मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूंगा और आपसे उसके बारे में चर्चा भी करना चाहूंगा कि ये जो जुगाड़ है हमारा, इसे हम लोग जैसे है कि अगर हम लोग इसको थोड़ा सा इनोवेशन के टर्म्स में अगर हम लोग इसको देखें तो हम लोग इसे कहते हैं ब्रेक फिक्स, यानी कि काम चलाओ, काम चलाओ। तो ये जो जुगाड़ है, क्या ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बन सकता है कि ये केवल शॉर्ट टर्म में यूज होता है? Ma'am, look, basically, in this case, this can be done for a long-term solution, provided there is a support system. हम्म, Once a Jugaad is established, can, yes, for example, Punjab में, if you see in Punjab, पंजाब में तो सबसे ज्यादा मैंने देखा हूँ जो ऑटोमोबाइल में जुगाड़ सबसे ज्यादा मैं पंजाब में देखा हूँ। एक मोटरसाइकिल होगा, मोटरसाइकिल के पीछे एक ट्रॉली लगा हुआ होगा जिसमें उसको 3 बोरी भी डाला है, एक बंदा भी बैठा हुआ है, मोटरसाइकिल भी चल रहा है, उसका 3 बोरी भी जाएगा। That person who is not capable to procure a car or procure a vehicle for transportation, he used his motorcycle to his best advantage. That is the thing. If it is systematized in a proper manner, if government gives some incentives, government work out on some policy with respect to the financial support and other support, infrastructural support, that may be a long-term solution. That can be a long-term solution. राइट। इनफैक्ट सर चौधरी साहब, इनफैक्ट मैंने तो पंजाब में ये भी देखा है कि जैसे जनरेटर होता है ना, जनरेटर घर में जो चलाते हैं, जनरेटर से ये लोग गाड़ी चला लेते हैं। गाड़ी चला, यस यू विल फाइंड। और ट्रैक्टर को भी आप बोलोगे, ट्रैक्टर को मैं आई हैव सीन इवन ट्रैक्टर को एसी गाड़ी बना के चलाते हुए आई हैव सीन इट। ट्रैक्टर को पूरा प्रॉपर बॉडी बनाया, पीछे उसको एसी लगाया और पूरा म्यूजिक सिस्टम एकदम, इट इज वेरी वेल फर्निश्ड। आई हैव सीन दैट आल्सो, सो दैट इज हियर। एग्जैक्टली। इनफैक्ट इवन इन उत्तर प्रदेश, जैसे है कि उत्तर प्रदेश में गांव में लाइक देयर इज एक्चुअली अ व्हीकल, उसका नाम ही है जुगाड़। तो वहां पर भी ये लोग जनरेटर लगाते हैं और जनरेटर, इन्होंने आगे जनरेटर लगा दिया, पीछे जो मतलब है ट्रक का के टाइप का एक बड़ा कैरियर टाइप का लगा दिया और उससे ये लोग सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं। Yeah, in Bengal also you will find, in Coast Bihar region, you will find that what you can say, that is machine that is used for water pump sort of things, that is used to convert into a transport vehicle. Right. They use it for transportation. They use it for transportation. So everywhere it is fine. And even in the NCERT book, in the class 4 book, you will find that is concept of jugaad. That is there. I have seen it in social science. In that book, I have seen the concept of jugaad. Exactly. In fact, sir, let me tell you a story. This jugaad has actually reached in foreign countries also. Because when I was doing my MBA from US, this was like 10 years back, I was doing my MBA. So, हमारे professor साहब हैं, like, you know, Professor Dr. Michael Finney, like, I mean, he's like one of the global authorities when it comes to, you know, leadership and consulting and innovation. तो उन्होंने जैसे ये कहा कि have you guys heard of this term before? JUGGAD, जुगाड़. Indian guys must have heard it. American guys, have you heard it before? that must be the Indian influence. That must be Indian influence, I'm sure. Exactly. And there was actually a case study and a full day was dedicated on discussing only jugaad. And in fact, like the term that was given to jugaad was low-end technology disruptive innovation. Low-end technology disruptive innovation. Right. Yeah. So jugaad has got many benefits and jugaad is being used everywhere. लेकिन अगर हम लोग जुगाड़ को एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरह हम लोग बात करेंगे तो समटाइम्स लाइक यू नो इन प्रैक्टिस, लाइक हमारे जो सॉल्यूशंस, हम लोग जो ब्रेक फिक्स लेकर आते हैं, हम लोग जो काम चलाऊ सॉल्यूशंस लेकर आते हैं, तो ये हमेशा लॉन्ग टर्म में अगर हम लोगों ने इनको इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया तब तो ये चल जाएंगे, जैसे चौधरी साहब आपने कहा। लेकिन इफ वी डोंट इंस्टीट्यूशनलाइज देम, then like you know these solutions don't last for long. So that's why like you know like there is a very thin line which kind of delineates jugaad and innovation. So when we say jugaad, we think about solving an immediate problem. When we think about innovation, we think about institutionalizing that jugaad so that we get like a long term and a permanent solution to that. We institutionalize and we incorporate that jugaad or a break fix within the process. And once that process is being built in,
तो हमारा इनोवेशन होने लग जाता है। क्योंकि इनोवेशन जब तक हम लोग सिस्टम में नहीं लाएंगे, इनोवेशन जब तक हम लोग प्रोसेस में नहीं लाएंगे, तब तक वो इनोवेशन होता नहीं है। क्योंकि जो एफिशिएंसी है वो शॉर्ट टर्म एफिशिएंसी तो हमारे जुगाड़ में आ गई, लेकिन हमारा जो प्रोसेस है इनोवेशन का वो हमारा आता नहीं है। क्योंकि अगला सेशन जो है, जो हम लोग लंच के बाद डिस्कस करने वाले हैं डॉक्टर कीर्ति बाला के साथ, दैट इज गोइंग टू बी हाउ टू बिल्ड एन इनोवेटिव कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग जब इनोवेशन का कल्चर हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, तो देयर आर अ फ्यू थिंग्स इन द सिस्टम एज लीडर्स। जैसे एज कमांडेंट्स आप लोग लीडर्स हैं, आप लोग मैनेजर्स हैं, तो एज लीडर्स यू हैव टू इंट्रोड्यूस अ फ्यू थिंग्स व्हिच एनकरेजेस योर जवान्स एंड योर ऑफिसर्स टू इनोवेट। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको जुगाड़ के बारे में समझाएं। We ask them to come up with solutions with minimal resources, but at the same time we also find ways in which we can institutionalize these solutions in a more efficient manner, so that these solutions can give us long term outputs, right? Okay, so I'll quickly take I would like to add here one thing. In case of Mhm. Jugaad, that what we look for Jugaad, that is a very short-term solution sort of thing. I am having a problem, so I need a solution immediately. Sorry, I need a solution immediately. In that case, I will go for something. You can say in your term it is innovation. In my term, I will say it is Jugaad. So I'll Right. go something, and that appears to be something new, and that will be something new, and that gives me solution to that problem. So naturally that you will term it as Jugaad. So to make it innovation, it is to be institutionalized properly and need proper backup, which may ultimately convert into invention. Innovation, invention. That is ultimately lead to the invention. Innovation will lead to your invention ultimately. So that is require proper backup. You need proper this thing set up where you can shape it up properly so that your Jugaad can be converted to innovation. एग्जैक्टली चौधरी साहब, एग्जैक्टली। तो जुगाड़ को हम लोगों को जैसे है कि अगर हम लोग एक इनोवेटिव आइडिया लेकर आते हैं, इफ वी ब्रिंग इन सम काइंड ऑफ एन इनोवेशन, दैट इनोवेशन हैज टू बी बैक्ड अप, दैट इनोवेशन हैज टू रिसीव द इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। once it receives the institutional support, then like it can be institutionalized in the system, in the process, और फिर उसके बाद हमारा इनोवेशन होना शुरू हो जाता है। तो जुगाड़, so like usually the way I put it across is जुगाड़ is the first step towards innovation. कि हम लोगों ने पहला कदम उठा लिया इनोवेशन के प्रति, अब उस पहले कदम को हम लोग दूसरा कदम बनाएंगे, ये हमारे ऊपर है, या फिर हम लोग पहले कदम पे ही अटके रह जाएंगे। इसलिए like we have to take steps in order to innovate and build that strong innovative culture in the society. So jugaad is the first step here. And jugaad actually creates this unique thing in us. It helps us think creatively. So innovation is all about creativity, right? How many of you agree with me that innovation is all about creativity? We have to think out of the box. हम लोग ऐसे नहीं सोच सकते हैं, हम लोगों को थोड़ा सा अपना दिमाग खोलना पड़ता है, and we have to think out of the box. Sometimes we have to come up with ideas which are technically called crazy ideas, जो usually in normal day and age we will not apply. लेकिन कभी कभी हम लोगों को लगता है कि crazy ideas लगाने से ही हमारे पास solutions आएंगे, इसलिए हम लोग वो ideas हम लोग लेकर आते हैं. Okay, so I'll quickly take a look at the chat window also. Okay, so Tandon Saab says, has the word jugaad been patented? Probably every invention was a jugaad. Of course. Yeah, every invention. So yeah, and we're going to be discussing this also. Like we're going to be discussing these three aspects of innovation. One is discovery, the other is invention, and third is innovation. And we're going to be seeing that what is the difference between discovery, invention, and innovation. Yeah. So has the word jugaad been patented? तो अगर पैटेंट से टंडन साहब आपका मतलब है ट्रेडमार्क या कॉपीराइटेड, तो कॉपीराइट तो नहीं हुआ है जहां तक it was just on the lighter side. राइट तो या तो जुगाड़ के ऊपर से कॉपीराइट तो नहीं है, तो जुगाड़ तो कोई भी कर सकता है। तो जुगाड़ it's a common term. I mean, it's a term that is a part of the literature now. तो जैसे हम लोग जब researchers हैं, हम लोग जब research करते हैं, so we can use this term. This term appears in the literature, so anybody can use this term jugaad. Yeah, and it is now it is not like a local term anymore. I mean, it has become like more of it has become more of an academic term as well.
and it has become more of a corporate term as well. कि हाँ यहाँ पर हम लोगों ने जुगाड़ लगाया, let's use जुगाड़. So yeah, low end technology disruptive innovation. Yeah. So I was coming back to this aspect. Let me try using some of these annotative tools here. So हमारे पास, we have got these three things. We have discovery, invention, and innovation. So हमारे पास discovery, invention, innovation. अब आप मुझे ये, let us take a look at these three terms: discovery, invention, and innovation. और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं, discovery, invention और innovation. क्या ये तीनों terms एक हैं? Are they one and the same, or like there is a difference between these terms? No, they are not same. They are not same. They are definitely different. Discovery is something which is exist but not traced by anybody. That is something like that. Exactly. Say Columbus discovered America, for example. So America already exists in the earth. So it was not before that, nobody has discovered that. Columbus has first traced it, and that is why discovered. Invention is like Thomas Alva Edison has invented light. So light was not earlier there anywhere. But Thomas Alva Edison has developed an idea, developed something based on which he has invented that light. Means he has introduced the light. Concept of light means how artificial light, not light means I mean to say artificial light. Right. That is. Innovation is means local resources are there. Something is there. I have something modified, something to suit to my requirement. It is already there, but I have modified the system. I have modified the resources to the suitability of my requirement. That is innovation. So this clear to something different, although interconnected, but they are different, definitely. They're definitely different. Thank you so much, Chadri sir, for mentioning that. They're definitely different. We have got different aspects, different perspectives. Can I have another take on this as well? Discovery, invention, innovation. Good one. Yeah. Good morning, sir. Sir, I think I lost you for a little bit. अगर आप एक बार दोहरा दें बात को. दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बने रहे, ऑपरेट अर्निंग्स में ग्रोथ दिखाते रहे, तो मेरे हिसाब से हमारी मार्केट यहाँ से अच्छा करेगी. अगर दुनिया की मार्केट उनकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार रिसेशन आती है, तो वो डिस्काउंट हो चुका है, उससे मार्केट में कोई इम्पैक्ट ज्यादा नहीं आएगा. तो प्लीज अप्रिशिएट कि हम सुनील कुमार यादव की तरह है, लोगों की बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन हमसे बिल्ड हुई है, हम और बाकी देश Okay. So I mean, I actually could not make out. कुछ market recession के बारे में कहीं चर्चा हो रही थी. I could not exactly make out. नहीं, कहीं बैकग्राउंड से कोई वॉइस थी. हाँ, बैकग्राउंड से कहीं से वॉइस आ रही थी. तो हाँ, जगीर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. I think all these three terms are deeply interconnected. Somehow they are interconnected. They are interrelated. Invention is basically using the already using something which is existing, and discovery is discovering something, and invention is using the discovered things and making something new, I think.
Exactly. Thank you, Jagirji, for mentioning that. In fact, so these terms are interrelated. These terms are definitely interrelated. Tiwari sab, Yeah, you want to actually, I am very much agree with Khanindra that what he said about discovery and invention. say? Just I want to add about innovation. Innovation is using something new in your process. Simply, if you are doing something and you are using something new, some new gadget, some new process, it is innovation. Exactly. Thank you, Tiwari ji, for mentioning that. So, अगर हम लोग इन तीनों terms को देखें, these three terms are definitely interrelated. अब डिस्कवरी है कि जैसे चौधरी साहब ने कहा कि कोलंबस he discovered America. So when he say he discovered America, it does not mean that he kind of built America from the scratch. America तो already exist करता था. That mass of land, what we call America today, already existed. Yeah, he just discovered the route to America. रास्ता यूरोप से अमेरिका कैसे जाना है, he only discovered that route. That route also existed. He only identified that route. So basically, discovery is an identification of something that is often already existing phenomena. Say पेड़ से गिरा और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोज डाला. ग्रेविटेशनल फोर्स का सिद्धांत जो था उसने वो खोज डाला. अब ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट था, गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत था, वो तो पहले से ही एग्जिस्ट किया करता था. ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों ने मतलब गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पहले एग्जिस्ट नहीं करता था. न्यूटन ने उसकी खोज की. तो डिस्कवरी इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ न्यू फिनोमेना और अ न्यू प्रोडक्ट और अ न्यू स्ट्रक्चर विच ऑलरेडी एग्जिस्ट, जैसे आप लोगों ने कहा. फिर उसके बाद हम लोग इन्वेंशन पर आ जाते हैं. इन्वेंशन, ये हमारा जो इन्वेंशन का काम है, ये बीएसएफ में रोज होता है. एवरी डे दिस इज हैपनिंग. प्रतिदिन इन्वेंशन का काम होता है. नए नए आइडियाज इन्वेंट होते हैं, नए नए सोल्यूशंस इन्वेंट होते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स इन्वेंट होते हैं. थॉमस एल्बर्ट एडिसन ने बल्ब बनाया. उसने बल्ब बनाया जिससे हमें हमारा घर जो है वो जगमगा गया. तो दैट बल्ब वाज एन इन्वेंशन. लेकिन जब थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली बनाई, और वो बिजली, थॉमस अल्वा एडिसन और टेस्ला, तो इन लोगों ने जब बिजली बनाई और घर घर पावर सर्किट पहुंचा दिया ताकि सारे घर जगमगा गए, दैट वाज इनोवेशन. So basically, any invention, unless and until it has impact on the society, on the nation, on the organization, cannot be called innovation. इसलिए innovation होने के लिए it's very important that any discovery, any innovation, any process improvisation, any jugaad, any break fix has to have an impact on the society. It has to have an impact on the nation. It has to have an impact on the organization. It has to have an impact on the people around it. अगर किसी को इन्वेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डिस्कवरी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो इनोवेशन नहीं है. तो इनोवेशन की जब हम लोग चर्चा करते हैं, तो इनोवेशन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि इनोवेशन हैज टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी. Unless and until like it has an impact on the society, unless and until innovation has got a structure, we don't call it innovation. तो इनोवेशन का एक ऑपरेशनल मॉडल भी होता है, एक प्रोसेस मॉडल भी होता है, एक बिजनेस मॉडल भी होता है. तो यूजुअली जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे वी डोंट टॉक अबाउट बिजनेस मॉडल्स मच, बट वी डेफिनेटली डू अ लॉट ऑफ डिस्कशन अराउंड प्रोसेस मॉडल्स एंड ऑपरेशनल मॉडल्स, एंड वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग दैट इन टुडेज प्रेजेंटेशन एज वेल. So thank you very much for making those points. I'll quickly take a look at the chat window. Right. So like we had a very interesting discussion on innovation, that what is innovation. अब मैं ये annotations हटा देता हूँ. Okay, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. So Steve Jobs, इस बंदे को तो आप सब लोग जानते ही होंगे, Steve Jobs. तो Steve Jobs said that innovation is the only way to win. अगर हम लोगों को लड़ाई जीतनी है, जंग जीतनी है, चाहे वो कॉर्पोरेट वॉर हो, प्राइवेट सेक्टर में कंपनियों के बीच में जंग हो, या दो देशों के बीच में आपसी जंग हो, अगर हम लोग इनोवेट नहीं करेंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे. इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज अ कंट्री, फॉर अस एज एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर अस एज अ सोसाइटी, we have to innovate in order to move forward. And that is what like we are doing day in and day out in BSF as well, that we are innovating. We are coming up with new solutions with minimal resources to make sure that we keep the intruders in line, right? I mean, outside the borders, and we keep our borders secure, we keep our country secure.
Okay, so now like these are some of the myths of innovation. So let us try to introspect on some of these questions. अब आप लोग मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताइए. Let us look at the first question. Innovation is all about the newest thing. When I say innovation is all about the newest thing, innovation हमेशा नई चीजों के बारे में ही बात करता है. तो क्या ये सही है कि गलत है? गलत है. This is wrong. Sorry. Wrong? This is wrong. This is wrong. Wrong? Okay. Yeah. right. नहीं, Absolutely. फिर इनोवेशन किस चीज का हुआ अगर वो नया नहीं है तो? नई थिंग वही बात करता है, कुछ नया होता है उसमें, बेशक नया नहीं है तो पुराना इनोवेशन नया होता है. It is the modification of the existing system to modification for what? Modification to suits the suitability of the situation. So certain specification will be amended. Certain So that is not new, na? That is modification and new. There are two concepts. One is modification, one is new. New means it is totally something new. It is not modified. Modification means existing system को आपने modify किया है. That is improvisation. Modification. Improvisation is not the word. Bring something new. New. I'm with new. Basically, sir, if I am allowed to speak, yeah, innovation is basically the optimal use, the alternative ways of using the existing resources. Exactly. For best possible results. Precisely. So it is not only the newest thing. It is already the thing. I also mean to say that. We are using that. We are making use of those things, existing resources, in different ways. That is the thing. That is modification of the existing system. Yeah. Existing resources. So if you modify, that becomes new thing. Not new. New and modification is different. तुम किसी चीजों को गाड़ी को तुमने जाके तुम एक रिनोवेट कर लिया. नहीं होगा. Khaninder, can you quantify modification? At what extent it will be innovation and what extent it will be modification if you are making any change? Can you quantify? नहीं. It is depend upon the situation. Modification means you say आपका एक गाड़ी है, for example. देखो look, let me complete. If you have a vehicle, say it is not 4x4 vehicle. Now your road become muddy. So you took it to a garage and you asked them कि भाई मेरे को इसमें muddy रास्ते पे चलना है, तो इसको मुझे modify कर दो 4x4 में. Your existing vehicle modified to the new condition so that it suits to your new requirement. So accordingly, you have modified the vehicle. So the additionality in form of something new is an added feature. Why can't be it treated as an innovation? देखो, इसके मैं reply देता हूँ. That is not new, na. That is not new, na. That is modification of your existing system. You have modified the vehicle, but you have innovated the gearbox and the mechanism of wheeling. So in totality, you can say modify, but in part, I can say innovation. Innovation, yes. Not new, innovation है, modification है. This will be the upgradation. This will be the upgradation of the vehicle. Yes. It is not innovation. Innovation already हो रखा है 4x4. जी तो you are right. Modification, जब ऐसे modification की बात कर रहा है, जैसे अगर मोटरसाइकिल This is modification in the existing vehicle जिसको 2 wheels से 4 wheel में हमने convert किया. ऐसे अगर मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हो तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. जैसे अगर मोटरसाइकिल को आपने कई बार वीडियो देखे होंगे, मोटरसाइकिल को लोग चारा मशीन को घुमाने के लिए भी मोटरसाइकिल यूज करते हैं. दैट इज इनोवेशन. लेकिन अगर जागीर दिस इज नॉट इनोवेशन. उसका मल्टी कंबशन स्टार्ट करके उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव करते हो, दैट इज मॉडिफिकेशन और अपग्रेडेशन. तो यहाँ मॉडिफिकेशन और जो इनोवेशन है, this is improvisation. This is improvisation. अगर hand driven चारा मशीन को बना ले, this is improvisation, not innovation. hand driven चारा मशीन को अगर मैकेनाइज कर देते हैं तो इनोवेशन नहीं है भाई. when you are innovating, you are gaining maximum output with the minimum resources. Innovation is that only. Innovative. Innovation is the first time. जब आप कुछ काम पहली बार हो रहा, that is innovation.
अब आप इसको मॉडिफिकेशन कर रहे That हैं, is invention. That must be invention, not innovation. Many innovation may be in form of invention, and many inventions may be form of need. And need is the resultant of discovery, invention, and innovation. इन्वेंशन इज द प्रिंसिपल. आपने बल्ब अगर इन्वेंट कर लिया तो आपने एलईडी को इन्वेंट नहीं किया. एलईडी तो फिर उसी का आगे इनोवेशन है. Light was invention. Light was invention. Different lighting objects, equipments are innovations. फिर तो आप उसकी शेप भी चेंज करो तो बोले इन्वेंशन है. नो. Exactly. Principle. That's why I ask you, what is the measurable, quantifiable measurement you have to call it a innovation or invention? So can you quantify it? If not, then accept my logic also. Only concept and principles. बाकी तो हम उसके शेप साइज चेंज करके बोलते हैं कि there is a new invention. Or you can go with the interpretation that if it is not changing the basic framework of that invented item, then it is not an innovation. आपने डिजायर व्हीकल का लेंथ बदल के छोटी कर दी. इट इज नॉट एन इन्वेंशन. अगेन मतलब शेप साइज में चेंज नहीं है. वंस अ प्रिंसिपल और कांसेप्ट इज इन्वेंटेड, इट्स इन्वेंटेड. That is modification. Changes आएंगे, it will be simple modification. That is modification. SK. I was just going through this. ये आजकल जो है नेट पे देखने पे काफी सारी चीजें मिलती हैं इसमें. To innovate is to introduce something new to the market, to manipulate existing inventions. The keyword जो इसमें मार्क किया हुआ है वो है to manipulate existing inventions and then turn them into product or process that is of use in the real world. Yes, that is the need. That I mean to say that. Yes. मैं वही बोल रहा हूँ. Exactly. तो मतलब बेसिकली हम लोगों की जो हम लोग एक ही बारे में बात कर रहे हैं बट इन डिफरेंट वेज. तो जैसे अगर हम लोग तो हम लोग जैसे ये है कि हम लोग पहले जैसे है कि हम लोग 300 साल पहले हम लोग बैलगाड़ी में चलते थे. तो जब हम लोगों ने बैलगाड़ी हम लोगों ने कार के साथ रिप्लेस कर दी, दैट इज समथिंग दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग समथिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट. Although like it is still a vehicle on 4 wheels, but it is something altogether different. लेकिन अगर हम लोगों ने कार के अंदर एक कलपुर्जा और जोड़ दिया, हम लोगों ने कार के अंदर एक गियर और जोड़ दिया, कार के अंदर हम लोगों ने एसी अच्छा कर दिया, so that becomes a part of the process of improvisation, and the process of improvisation is also innovation, because innovation is not something that is like a. अब इसलिए हम लोग यहाँ पर सेकंड में आ जाते हैं. Is innovation a solo activity? No. एक बार बस इनोवेशन एक बार हो गया तो इनोवेशन हो गया. No. Exactly. So innovation is not a solo activity. Innovation है, innovation process के अंदर जाता है और innovation होता रहता है. Innovation is a continuous process. और जब innovation continuous process नहीं रहता है तो कोई भी मशीनरी है वो ब्रेक हो जाती है, क्योंकि innovation is all about changing with the needs of the time. जैसे सिंह साहब ने कहा था, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, आवश्यकता ही खोज की जननी है, आवश्यकता ही इनोवेशन की जननी है. So need is the mother of invention. So by the changing human needs, by the changing needs of the nation, by the changing needs of the organization, the changing needs of the society, it's very important that we have to keep innovating. So innovation is not always a solo activity. Innovation is always a group activity as well. Okay. Sir, I have a question here. Yeah, absolutely. Is innovation the refined form of improvisation? Okay, so innovation, okay, improvisation and innovation, they are connected terms, and this is something, and this question is something that I get most of the time, that how is innovation different from improvisation? So innovation and improvisation are related. Innovation and improvisation are related. Innovation में बस ये हो जाता है कि innovation में we are bringing in a concept. In fact, like आप अगला सेशन जब आप लोग ये करेंगे लंच के बाद, तो यहाँ पर हम लोग आपको strategic innovation के बारे में बताएंगे. But I'll just tell you the concept just to answer this question. Just to answer this question, I'm going to draw something. Excuse me. हाँ, तो ये इसको डिटेल में हम लोग डॉक्टर कीर्ति Excuse me. Yes sir.
जैसा अभी आपने कहा कि इनोवेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलता रहता है। हाँ जी। तो फिर अपग्रेडेशन क्या है? साल में हम 2022 खत्म हो रहा है, 2023 में सभी गाड़ियों के अपग्रेडेड मॉडल आएंगे। हाँ जी। तो फिर अगर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो फिर व्हाई shouldn't it call be innovation, then why it is upgradation? अपग्रेडेशन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, नॉट। मैं तो वर्ड पे जा रहा हूँ। देखिए सर, ये जो हमारा जो वर्ड है, इनोवेशन है, इम्प्रोवाइजेशन है, अपग्रेडेशन है, इस पे ज्यादा हम लोग फिक्सेटेड नहीं होते हैं। अगर हम लोग इस पे ज्यादा फिक्सेटेड हो जाते हैं तो फिर हम लोगों को सोल्यूशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है कि अपग्रेडेशन क्या है, इनोवेशन क्या है। अगर हम लोग को इनोवेशन देखना है, त्रिपाठी साहब हम लोग को इनोवेशन देखना है तो हमें ऑटोमोबाइल कंपनीज के अंदर जाना पड़ेगा और वहां पर देखिए कैसे इनोवेशन होता है। इनोवेशन वहां पे इन लोगों के ऊपर जो उनका जो प्रोसेस डिपार्टमेंट होता है, R&D डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि आपको इनोवेट करना ही करना है, आपको नए तरीके लेकर आने ही आने हैं। तो वहाँ इनोवेशन कुछ नहीं होता, वो सिर्फ फीचर्स में एक दो में बढ़ा दिया जाता है। क्रोम की ग्रिल बढ़ा दी जाती है, ग्रिल को चेंज कर दिया जाता है, नॉर्मल लाइट की जगह ये लाइट्स लगा दी जाती हैं। तो ये अपग्रेडेशन है, इनोवेशन नहीं है। हाँ नहीं, इनोवेशन तो तब हो जब आप 1500 सीसी के इंजन की जगह केबी इंजन की जगह आप कोई दूसरा इंजन ले आए। नहीं, बात आपकी सही है, बात आपकी सही है। तो अपग्रेडेशन, यस सर। बट ये मॉडिफिकेशन, ये तो फिर ब्यूटिफिकेशन हो जाएगा। हाँ, तो बेसिकली जो हमारा मॉडिफिकेशन है, इम्प्रोवाइजेशन है, अपग्रेडेशन है, दिस इज ऑल एन आउटकम ऑफ इनोवेशन। जब हम लोग क्रिएटिवली सोचते हैं, क्योंकि इनोवेशन का आप लोग बेस समझिए, इनोवेशन का जो फंडा है, इनोवेशन के जो फंडामेंटल्स है, इनोवेशन का जो बेस है, दैट बेस इज क्रिएटिविटी। अगर हम लोग एक क्रिएटिविटी लगाते हैं, जहां पर भी हम लोग क्रिएटिविटी लगा रहे हैं टू इम्प्रूव अ प्रोसेस, टू इम्प्रूव अ प्रोडक्ट, टू इम्प्रूव अ सर्विस, इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू इन द प्रोसेस, तो वहां पर इनोवेशन आ जाता है। एंड दैट इज व्हिच इज एक्चुअली क्रिएटिंग समथिंग यूजफुल टू द सोसाइटी। जैसे मैनिपुलेशन की यहाँ पर बात हुई थी, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को भी हम लोग घुमा सकते हैं। हाँ, दंगल का एक थीम सॉन्ग है, दंगल मूवी है ना, उसका एक थीम सॉन्ग है, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी दंगल दंगल। तूने वो गाना सुना होगा, उससे सीखा नहीं। ये कोई दूसरे चैनल आपके साथ ही साथ सुनता है तो बैकग्राउंड में है, ये बैकग्राउंड में है। कोई ये यूट्यूबर या FB पे है, ये आवाज अवध ओझा की आवाज है, मैं पहचान, एक मोटिवेशनल स्पीकर है और IAS कोचिंग सेंटर चलाता है इलाहाबाद। मैं नहीं बोल रहा, मेरा म्यूट है, सॉरी। No, the person voice is coming is Awadh Oja, not Vijay Oja, not so. तो ये YouTube, हाँ कोई यूट्यूबर है, मोटिवेटेड। हाँ, ये एक IAS एकेडमी चलाता है इलाहाबाद में, आई नो है। कनेक्शन हो गया है, ये इंट्यूशन है। थीम सॉन्ग है, दंगल मूवी है ना, उसका एक थीम सॉन्ग है, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी दंगल दंगल। हमारे तो ओझा ही मोटिवेटर है। Yes, he is Awadh Oja. अगर अपने जीवन में बैकफ्लैश में जाओ तो माँ बाप ने क्या कहा था कि 10th पढ़ लो भैया, कायदे से बस। ये हेमंत के पास से आवाज आ रही है। Arvind, Puneet, can you give me the host rights? I'll try to mute. Okay. So basically ये जो हमारे दो गोले हम लोगों ने यहाँ पर बनाए हैं, दो चक्र हम लोगों ने यहाँ पर बनाए हैं, तो पहला चक्र जो हमारा होता है, that is just to understand like the concept of innovation and to differentiate it with improvisation and upgradation. पहला जो है हमारा, that is बिजनेस एज यूजुअल। तो ये जो पहला हमारा गोला है, दैट इज बिजनेस एज यूजुअल। जो दूसरा हमारा जो गोला है, दूसरा हमारा जो सर्कल है, दैट इज ये थोड़ा सा, माय अपॉलॉजीज, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। Arvind, any issues? No, I'm just trying to illustrate a little bit.
Okay. Uh, You're doing creativity online. I'm trying to do creativity online. You're displaying your creativity skills online, right? Good. Great. So Great. this is innovation. So we are going to be discussing this concept in detail in our next session with Dr. Kirti Bala. लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ so that we understand the difference between upgradation and improvisation and innovation. अब देखिए पहला जो आपका गोला है this is business as usual कि हमारा काम चल रहा है यहाँ पे हम लोग अपने काम में upgradation is a part of it कि हाँ हम लोग अपने systems में upgrade कर रहे हैं थोड़ा सा मतलब है कि incremental changes हम लोग लेकर आ रहे हैं that is business as usual. दूसरा जो हमारा गोला होता है दैट इज रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन कि हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से री इंजीनियर कर रहे हैं. आप लोगों ने अभी ट्विटर के बारे में आप लोग अपडेटेड हैं ट्विटर के बारे में क्या क्या हो रहा है ट्विटर के बारे में एलन मस्क ने जब से ट्विटर को टेक ओवर किया है. हाँ और काम क्या है आजकल तो ट्विटर फेसबुक ही तो ज्यादा. हाँ तो अभी जैसे ट्विटर में भी जैसे एज एन ऑर्गेनाइजेशन ट्विटर में बहुत सारे रेडिकल चेंजेस हो रहे हैं. तो अभी ट्विटर जो था वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी. अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी से प्राइवेट कंपनी बन गई. उसको एलन मस्क है जो who was the world's richest person till a few days back. He purchased Twitter. $44 billion की उसने डील की और उसने ट्विटर खरीद लिया. अब वो ट्विटर में ऐसे ही इज रेडिकली ट्रांसफॉर्मिंग ट्विटर का वो पूरी तरह से अंजर पंजर तोड़ के और रीऑर्गेनाइज कर रहा है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को. पूरा उनका काम करने का तरीका उनके सारे प्रोसेसेस उनके सारे सिस्टम्स सब कुछ ही इज चेंजिंग. दैट इज रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन. सो दैट रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैन नॉट बी कॉल्ड इनोवेशन. जब हम लोग कोई एग्जिस्टिंग चीज को पूरी तरह से तोड़ देते हैं और उसको नई तरीके से बनाते हैं तो वो इनोवेशन कहना उसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. जब हम लोग धीरे धीरे अपग्रेडेशन करते हैं इम्प्रोवाइजेशन करते हैं सिस्टम को थोड़ा ठीक करते हैं तो वो हमारा इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस एज यूजुअल. इन दोनों के बीच में कहीं पर हमारा इनोवेशन होता है. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? मतलब आप बोलते हैं कि रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है इनोवेशन नहीं है. डिसरप्टिव जो भी होगा नेचर में इनोवेशन नहीं है. एक ग्रेजुअली प्रोसेस के साथ होगा वही इनोवेशन. नहीं ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर. जो इनोवेशन है अगर हम लोग कोई डिसरप्टिव इनोवेशन वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट डिसरप्टिव इनोवेशन एज वेल कि मतलब है कोई चीज पॉजिटिव डिसरप्शन वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग दैट एज वेल कि वो भी इनोवेशन का ही एस्पेक्ट है. लेकिन जो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन जब एक ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से होता है तो उसको हम लोग जैसे है कि जो प्रोसेस इनोवेशन की कैटेगरी में नहीं डालते हैं स्ट्रेटेजिक इनोवेशन की कैटेगरी में नहीं डालते हैं. हम लोग जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं डिसरप्टिव की हम लोग डिसरप्टिव इनोवेशन की बात करते हैं तो वो एक नया प्रोसेस अपने आप में शुरू होता है. नहीं आपकी वर्ड में अगर मैं जाता हूँ इन दैट केस दैट इज अमाउंटिंग टू से दैट सर्टेन डिग्री ऑफ मॉडिफिकेशन इज इनोवेशन. इज इट नॉट सो? Certain degree of modification can be called innovation as long as like there is an element of newness to it. अगर आपने जैसे है कि अगर आप एक कार का इंजन बना रहे हैं कार के इंजन की आपने 1000 जो इनका जो क्या होता है हॉर्स पावर से अगर आपने उसको 1200 कर दिया सो दैट एग्जैक्टली कैन नॉट बी कॉल्ड इनोवेशन. लेकिन अगर आप उसमें आप लोगों ने जैसे आप एक नया इंजन लेकर आ गए हैं और उसमें आप लोगों ने उसकी जो हॉर्स पावर है वो और ज्यादा बढ़ा दी है उसकी यूटिलाइजेशन दूसरी तरीके से कर दी है दैट इज कॉल्ड इनोवेशन. तो इम्प्रोवाइजेशन और इनोवेशन के बीच में हम लोगों को अंतर समझना है कि इम्प्रोवाइजेशन इनोवेशन है. इम्प्रोवाइजेशन इज अ नीड. इम्प्रोवाइजेशन इज अ नीड. इनोवेशन इज आल्सो अ नीड बट दीज नीड्स आर डिफरेंट. ये दो नीड्स को हम लोग अलग अलग तरीके से अगर हम लोग समझ लेंगे तो हम लोग इनोवेशन अपना एक इनोवेशन का कल्चर अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आ जाएंगे. चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं. एक बार हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे ना तो हम लोग को ये कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे. उसमें एक मेरा पॉइंट है सर. इसमें एक मेरा पॉइंट है. आपने जो बोले इनोवेशन एंड इम्प्रोवाइजेशन नीड तो दोनों में ही है. इनोवेशन इज आल्सो ए नीड. दैट इज व्हाई इट हैज बीन इनोवेटेड एंड इम्प्रोवाइजेशन इज आल्सो ए नीड. दैट इज अल्टीमेटली गोल हो गया आपका कि देयर इज सर्टेन नीड दैट इज व्हाई आई एम चेंजिंग इट. बट प्रोसेस है दोनों में दो प्रोसेस है. एक इम्प्रोवाइजेशन हो गया एक इनोवेशन हो गया. दी टू प्रोसेस. आई एम जस्ट आस्किंग द पॉइंट कि ये दोनों प्रोसेस में डिफरेंस क्या है. व्हाट इज द डिफरेंस बेसिकली बिटवीन दिस टू? व्हाट इज दैट? गोल इज आई एम क्लियर अबाउट दैट दैट इम्प्रोवाइजेशन इज आल्सो ultimately to do something which as per the requirement of the situation or as per the suitability of the situation. Same thing is also innovation also. Same thing was also innovation. Now the process is different. You mean to say the process is different. Then what is that process which is different from one another? खनिंदर ऐसा है
इनोवेशन और इम्प्रोवाइजेशन में अंतर ये है, इम्प्रोवाइजेशन में जो चीजें यूज होती हैं वो ऑलरेडी इनोवेट हो चुकी हैं, वो मार्केट में अवेलेबल है। उस चीज को आप अपना गाड़ी में लगा रहे हो, किसी और चीज में लगा रहे हो, लेकिन जो इनोवेशन है वो मार्केट में अभी तक आई नहीं है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कोई भी कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन लेके आता है, दैट इज इनोवेशन। क्या ये कहना ज्यादा ठीक होगा कि इनोवेशन या अपग्रेडेशन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के एंड पे होता है, जबकि इम्प्रोवाइजेशन यूजर एंड पर होता है? हाँ, ये बात भी ये भी कह सकते हैं। काफी हद तक सही है। सही बात, बिल्कुल सही है त्रिपाठी। अब वो प्लास्टिक का पाइप जिससे हम गार्डन में पानी देते हैं वो फट जाता है, हम ट्यूब से बांध देते हैं, तो वो तो इम्प्रोवाइजेशन है। लेकिन अगर प्लास्टिक का पाइप बन गया जिसमें छेद ही ना हो, वो इनोवेशन की कैटेगरी में आ सकता है। तो आपकी बात तो गौर करने लायक है। त्रिपाठी सही बात है, मतलब इनोवेशन का क्रूड फॉर्म है इम्प्रोवाइजेशन। यस सर। और इनफैक्ट सर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए, अगर हम लोगों को इनके बीच में डिफरेंस समझना है तो हम लोग एग्जांपल से ही समझ सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पहले जब हम लोग जैसे है मजदूरों को जो हम लोग सैलरी वगैरह, आ जाइए सर, हो गया सर मेडिकल। सॉरी क्लास चल रही होगी, लेकिन वो अरे तुम अपना माइक बंद कर लो। हाँ, तो हम लोग जैसे है कि इसका इन दोनों का टर्म इम्प्रोवाइजेशन, अपग्रेडेशन और इनोवेशन का टर्म हम लोग एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सब कुछ डिजिटल करना शुरू किया था। अब जैसे आपका जो एक गरीब मजदूर की जो सैलरी है वो अब उसके बैंक अकाउंट में जाएगी। अगर अब ये दो प्रोसेसेस हैं। पहला जो है कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में करप्शन है, गरीब मजदूर की सैलरी है उसके पास पहुंच नहीं पा रही है। हम लोगों ने थोड़े से कॉस्मेटिक चेंजेस कर दिए प्रोसेस में, जस्ट टू मेक श्योर कि जो गरीब मजदूर की जो सैलरी है वो उसके पास जा रही है। हम लोगों ने थोड़ा सा सुपरविजन लगा दिया, हम लोगों ने थोड़ा सा मतलब है कि थोड़ा सा फीडबैक ले लिया और हम लोगों ने देख लिया कि उसकी सैलरी उसके पास जा रही है। लेकिन जब हम लोगों ने एक नया डिजिटल टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी कि उसका सैलरी हम लोग डिजिटली उसके बैंक अकाउंट में पहुंचा देंगे, तो वो इनोवेशन हो जाता है यहाँ पे। तो जब हम लोग एक एग्जिस्टिंग प्रोसेस को मॉडिफाई करके उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस लगा के उसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, तो दैट इज इम्प्रोवाइजेशन, दैट इज अपग्रेडेशन। लेकिन हम लोग जब एक उसी प्रोसेस में एक नया एलिमेंट लेकर आते हैं, यहाँ पर हम लोग एक नया एलिमेंट लेकर आ रहे हैं, एक डिजिटल पेमेंट वाला सिस्टम, तो वो इनोवेशन हो जाता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट सर? इसीलिए अगर हम लोगों को इनोवेशन का प्रोसेस समझना पड़ता है, इनोवेशन में जब तक एक न्यूनेस का एलिमेंट नहीं होता है, एक नवीनता के एलिमेंट नहीं होता है, हम लोग इसको इनोवेशन नहीं कह सकते हैं। जब ये डिजिटल टेक्नोलॉजी आई तो डिजिटल टेक्नोलॉजी ने वही प्रोसेस हो रहा है। मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय के पास सैलरी जा रही है, लेकिन एम्प्लॉय के पास सैलरी जो कैश में जाया करती थी, अब वही सैलरी जो है वो डिजिटल पेमेंट के रूप में जा रही है। दैट इज इनोवेशन। अगर आपने कैश ट्रांजैक्शन में थोड़े से चेंजेस कर दिए, आपने थोड़े से चेक्स एंड बैलेंसेस लगा दिए, तो वो इम्प्रोवाइजेशन हो गया। डू यू थिंक दिस एग्जांपल मेक्स सेंस कि टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इनोवेशन एंड इम्प्रोवाइजेशन? मैं एक ऐसी एग्जांपल देता हूँ जो सभी को समझ आएगी, जो हमारे फील्ड की एग्जांपल है। यहाँ पे मैं समझता हूँ इम्प्रोवाइजेशन की एग्जांपल पहले मैं देता हूँ। अगर हमारे पास में इफ वी हैव फ्यू बंडल्स ऑफ कंसर्टिना कॉइल और उसको हम बॉर्डर पे लगा के, हमारे पास वहां पे कोई बॉर्डर का कोई स्ट्रेच है जहाँ पे हमारे पास में तारबंदी मान लो नहीं है, तो हम उस कंसर्टिना कॉइल को अलग अलग तरीके से लगा के उसको प्लग कर देते हैं उस स्ट्रेच को, और हम उसको फेंस कर देते हैं। तो ये तो हो गया, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इम्प्रोवाइजेशन। और एक इसका मेथड है, वो जो अनफेंस्ड स्ट्रेच ऑफ बॉर्डर है, उसमें एक हमारा IT स्पेशलिस्ट लड़का है, वो बोलता है कि सर हम यहाँ पे एक वर्चुअल फेंस लगाएंगे, मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज करूंगा, यहाँ वर्चुअल फेंस है, अगर कोई उस लाइन को क्रॉस करेगा तो ऑटोमेटिकली बीप की आवाज आएगी और हमारे अलार्म बजने शुरू हो जाएंगे। तो दैट इज इनोवेशन। Exactly. And thank you very much, Jagger ji, for mentioning that. So whenever नहीं, वो कंसर्टिना कॉइल तो होती ही इसी पर्पज के लिए, उसको ब्यूटीफुली आपने उसको यूज किया है बस। तो यूसेज है, इम्प्रोवाइजेशन नहीं है। कंसर्टिना इम्प्रोवाइजेशन इसलिए है क्योंकि बॉर्डर फेंसिंग का जो हमारा एक डिजाइन बना हुआ, इट इज देयर, हमारे पास में वो डिजाइन वहां पे एग्जीक्यूटेड नहीं है, वो उस किसी कारणों की वजह से वहां पे नीचे से नाला है या नीचे से कोई और चीज है जिसकी वजह से वो वहां पे वो डिजाइन
इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो हमने उसको इम्प्रोवाइज तरीके से कंसर्टीना कॉइल का अनिंदर इनको थोड़ा समझाओ जगह। that is not improvisation. I disagree. वो improvisation तब होगा अगर वहां से improvisation को क्या बोलोगे, जैसे आपका तार है, तारबंदी है, तारबंदी काट रहा है, उसमें आपने बेम्बू लगा दिया नहीं काटने के लिए, ठीक है, दैट इज इम्प्रोवाइजेशन। तो चीज है ही नहीं हुआ, तुमने लाके कंसर्टीना कॉइल डाल दिया, दैट इज नॉट इम्प्रोवाइजेशन, दैट इज इम्प्रोवाइज फेंसिंग, नॉट इम्प्रोवाइजेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीस टू, इम्प्रोवाइज फेंसिंग एंड इम्प्रोवाइजेशन, that is not improvisation. If you just go to it, I may be wrong, but you please see to that. Kanendra, you can't be taken into MIT. You will have to go to Harvard. No, he is academician basically, a man with uniform, but he is academician. यार मैं BSF में ठीक हूँ यार, मेरे को BSF में रहने दो। हाँ, यहाँ तुमको ज्यादा ऑडियंस मिल जाती है 1 साल। बिना कुछ सामने से बोले। Okay. तो basically like to understand the difference here is कि basically हम लोग ये examples के थ्रू समझते हैं कि जब हम लोगों ने कुछ नया element इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे है कि हम लोगों ने वायर्स को, अब जैसे चौधरी साहब ने शुरू में जो एग्जांपल दिया था कि जो बॉर्डर्स में जैसे हमारी जो वायर्स थी, अगर हम लोग उस वायर्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं तो हम लोगों ने इम्प्रोवाइज कर दिया। लेकिन जब हम लोगों ने वायर्स को बैम्बू के साथ रिप्लेस कर दिया तो दैट बिकम्स एन इनोवेशन बिकॉज वी हैव यूज्ड एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। अब जैसे है कि हम लोग पतली वायर्स की जगह मोटी वायर्स लगा सकते हैं, मतलब है काटने में थोड़ा सा और दिक्कत होगा, लेकिन दैट इज इम्प्रोवाइजेशन। लेकिन उसकी जगह हम लोगों ने बांस लगा दिया, दैट बिकम्स इनोवेशन। तो इनोवेशन में एक नवीनता का एलिमेंट लाना बहुत जरूरी है, लाइक वी हैव टू यूज क्रिएटिविटी। इफ क्रिएटिविटी इज नॉट बीइंग यूज्ड, इम्प्रोवाइजेशन में भी क्रिएटिविटी आती है, लेकिन इम्प्रोवाइजेशन में हम लोग एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस को अच्छी तरह से मॉडिफाई करते हैं नीड के हिसाब से। Innovation में we are introducing another element which is creative in nature. Chaudhary sir, does this help to understand the difference between हाँ, ये तो he is very happy and surprised कि actually इसने innovation कर दिया। उसको improvisation ये समझ रहा था। चौधरी साहब, ये बैम्बू वाला आइडिया आप ही का था क्या? सर चौधरी साहब, ये बैम्बू वाला आइडिया आप ही का था क्या? नहीं सर, ये तो नॉर्थ बंगाल में चला था सर, हमारा दहा हम लोग। नहीं, आइडिया इन्हीं का था, आइडिया अभी थोड़ा शर्मा से गए हैं। हाँ, ये पूरा पहले से एग्जिस्टिंग आइडिया है, वही ये इनोवेशन इन्होंने ही किया है। ऐसा नहीं है सर, ये चंद्रकांत सर ने थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया है, ऐसा नहीं है। आप क्रेडिट देने से ना हिचके। पुराना आइडिया है सर, दैट वी हैव जस्ट पुशिंग इट फॉरवर्ड। एग्जैक्टली। तो हम लोग पुराने आइडिया को भी नए तरीके से हम लोगों ने उसका एक नया यूटिलाइजेशन निकाल दिया और हम लोगों ने वहां पर इनोवेशन कर दिया। चौधरी साहब, वैसे आप पोस्टेड कहाँ पर हैं अभी? सर आप म्यूट पर हैं चौधरी साहब। I am in North Bengal. I am looking after the Angarpata Dahagram enclave. It is part of district Coachbihar. Okay. Kuchbehar. Okay. Kuchbehar is, yeah, it's a very famous place. Yeah. I mean, I am from Assam. Like my place, my hometown is also a border town. It's called Karimganj. तो वहाँ पर भी मतलब है BS है। ये भी असम के ही हैं ओरिजिनली। I am also from Assam. तो इसका मतलब देशमुख लोग पहले से हैं, ये सिंधे लोग बाद में असम अभी। नहीं, चलो सर, आप जैसे इंटरप्रेट कर लेते हो। वैसे मिस्टर देशमुख, आप इनको चौधरी साहब को क्या बोलते हैं, आसाम और सिलीगुड़ी से नहीं बांध सकते, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये है चारों। हाँ, ये तो चारों तरफ है। हाँ, कश्मीर पर्यंत, कश्मीर कन्याकुमारी, सारा देश। पंडित जी पूरा मजा ले लो सर, कोई बात नहीं। चलिए अब इसके ऊपर हम लोग आते हैं। आपके लिए ये तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनोवेशन कांट बी टॉट। इनोवेशन कांट बी टॉट, ये सही है कि गलत है? ये सही है। ट्रू। यहाँ पर मैं डिसएग्री कर जाऊंगा, वरना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। दिस इज रॉन्ग सर, दिस इज रॉन्ग। इट कैन बी टॉट। यहाँ पर जितने भी कोचेस हैं, जितने भी टीचर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, वो सब डिसएग्री कर जाएंगे। लेकिन जैसे देखिए, इनोवेशन, ऑल्दो लाइक इनोवेशन इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड, बट स्टिल लाइक नाउ इनोवेशन हैज बीन, इतनी इनोवेशन के ऊपर रिसर्च हो चुकी है, इतनी इनोवेशन को साइंटिफिक तरीके से स्टडी किया जा सकता है कि they have been like academic institutions have developed teaching pedagogies
अबाउट इनोवेशन. सो बेसिकली कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों को बताई जा सकती हैं, कुछ चीजें समझाई जा सकती हैं जिससे पीपल कैन स्टार्ट थिंकिंग क्रिएटिवली. सो पहले तो ऐसे हम लोगों को लगा करता था क्रिएटिविटी इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड, एंड व्हिच इज वेरी ट्रू. आई मीन आई एग्री विद इट, क्रिएटिविटी इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड. बट अब क्रिएटिविटी के ऊपर एकेडमिक साइड में इतना काम हो चुका है कि क्रिएटिविटी जो एक आर्ट हुआ करता था, इट इज नाउ बीइंग इंटरप्रेटेड एज अ साइंस. So innovation is something that again, like, you know, although it comes from inside, but still, I mean, if we apply like some of the frameworks, some of the formulations out here, then innovation can also be understood and learned. And now the fourth question is, innovation is top down. ऊपर से नीचे innovation आता है. No, ऐसा नहीं है. राइट. तो इनोवेशन ऊपर से नीचे से ऊपर तक, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं से भी आ सकता है. वो एक जवान से भी आ सकता है, वो बीएसएफ के जो टॉप चीफ है उनसे भी आ सकता है, कहीं से भी इनोवेशन आ सकता है. उस आइडिया को बस हमें पकड़ना है. बस एक बार हम लोगों ने इनोवेशन को, उस क्रिएटिव आइडिया को पकड़ लिया, उसकी हम लोगों ने वैल्यू समझ ली, उसको हम लोगों ने ठीक तरह से इंप्लीमेंट कर दिया, उसको हम लोग प्रोसेस में लेकर आ गए हैं, तो वो इनोवेशन हो जाएगा. इनोवेशन कहीं से भी आ सकता है. एज लीडर्स ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम लोग अपने लोगों को एनकरेज कर दे. वी एनकरेज अ मैन टू कम अप विद इनोवेटिव आइडियाज, टू थिंक ऑन देयर फीट. सो इनोवेशन कैन कम फ्रॉम एनीवेयर. तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं. अभी ये स्लाइड करने के बाद हम लोग एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे. You can't force innovation. सही है कि गलत? सही है. फर्स्ट अगर आप बोलते हैं रिसर्च प्रूव कर रहे हैं कि इट कैन बी टॉट, तो फिर तो ये भी इट कैन बी फोर्स्ड. ये भी फोर्स, यू फाइंड द वेज. मुझे नहीं पता. यस बिल्कुल, यू फाइंड द वेज. मुझे नहीं पता, कुछ ना कुछ आपको चेंजेस करने हैं. होगा ये. तो वो चेंज भी वैसा ही होगा, इम्प्रोवाइजेशन. हाँ ठीक है, होगा, बट होगा तो अल्टीमेटली सर. नहीं, वो अजीत जी, वो फोर्स इनोवेशन होगा. वो तो फोर्स तो उसमें यूज ही हो रही है. वो नहीं, अगर आप सही इन्वायरमेंट देंगे एंड थ्रू encouragement and create a proper environment, then what innovation will be there. It will come organically. You can call it arts to that extent, but the moment you force, that will be of not much use, I think. Exactly. So Ajit ji actually mentioned a very good point. Innovation has to come from inside. As leaders, like, we have to create an environment in our organization that people innovate automatically. It comes from inside. तो वो एटमोस्फेयर बनाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है एज लीडर्स. लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर हम लोग देखें तो इनोवेशन फोर्स होता है. वहां पे कंपटीशन इतना ज्यादा होता है कि कंपटीशन ड्राइव्स इनोवेशन. और अमन, दिस इज लाइक अ टॉपिक फॉर लेटर. ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा कि हाउ कंपटीशन इज ड्राइविंग इनोवेशन. लेकिन कंपटीशन डज ड्राइव इनोवेशन, एंड दिस इज लाइक अ फैक्ट इन द कॉर्पोरेट सेक्टर. सो लेकिन इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, वरना बहुत टाइम निकल जाएगा. हम लोग एक छोटा सा ब्रेक भी लेना है. तो चेंज इज ऑलवेज गुड. यस और नो? चेंज इज ऑलवेज गुड. Not necessarily. Debatable line है. और जो कंट्रोल चेंज है, वो इनोवेटेबल चेंज जो है, वो it's not always good. Change cannot be always good. Change cannot be always good. Yes. Change cannot be always good. Yes, certain changes are good. Not all the changes. Time will tell. Otherwise, it is not always is not suiting here. Otherwise, change is good. Right. A small little change. Change is also not good. So that is also not correct. Change sometimes may be good, not good. That is again an absolute statement. Change is good means it is an absolute statement. That cannot At least to break the monotony, you can bring slight changes every now and then. अगर ये फोर्स होने लगा तो चटकी का जो एलिमेंट है वो गायब हो जाएगा. चटक लोगों के लिए भी तो होना चाहिए to do something new. इसलिए देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर देता हूँ कि चेंज इज डेफिनेटली नेसेसरी. चेंज आवश्यक है, लेकिन चेंज हमेशा अच्छा नहीं होता. चेंज कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है, लेकिन जो मुंह का स्वाद बदलना आवश्यक होता है. चेंज इज नेसेसरी. हाँ, अब चेंज अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है. अब ये लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग ब्रेक पे चले जाएंगे. इनोवेशन इजंट फॉर एवरीवन. हाँ, ये तो परफेक्ट. राइट. सही है.
True. Yes. True. Innovation isn't for everyone. सब लोग, हर कोई बंदा इनोवेट नहीं कर सकता है क्या? नहीं, अभी इनोवेटर है वो या उसका यूजर है, ये तो स्टेटमेंट नहीं बता रहा है, लेकिन This is false, I think. कर सकते हैं। बताइए कैसे नहीं हो सकता? Can you elaborate that? Innovation isn't for everyone. हाँ, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखो आप, एक्सेप्टेबिलिटी उसकी, उससे आपको प्रूफ हो जाएगा। नहीं विशाल, इस चीज को ऐसे देखो कि देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज, या हमसे भी ऊपर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप जो है यूनिट में बात करके, या आपको क्या लगता है कि इनोवेटिव आइडियाज या आप चेंजेस करके देते हैं। आई डोंट थिंक कि अगर हम लोग की इतनी 2.5 लाख लोग हैं हम लोग, तो इसमें से 10 या 12 या 15 20 से ज्यादा के सॉल्यूशंस हम लोग ऊपर नहीं भेज पाते हैं। अगर सबका होता तब तो इनोवेटिव आइडियाज वी वुड बी फॉरवर्डिंग इन lakhs only. Flooded. पंजी की लंबाई चौड़ाई ग्राउंड के हिसाब से बढ़ाते रहते हैं, और ये भी इनोवेशन ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इनोवेशन एज अ कोर कॉम्पिटेंसी और इनोवेशन इन द प्रोसेस, कि हम लोगों की कोर कॉम्पिटेंसी इनोवेशन है कि इनोवेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस में कैसे जा रहा है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम लोगों की जैसे काफी सारी फरमाइशें आ रही हैं ब्रेक के लिए, तो हम लोग एक ब्रेक लेते हैं। और तन्वी, हाउ लॉन्ग शुड वी टेक अ ब्रेक? लेट्स टेक लाइक अ 10-15 minute break. 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes? 15 Yeah, 15 minutes. minutes would be ideal. So it's 11 right now. So we'll come back at 11:15 and we'll resume our discussion. Okay, so we'll take a 15-minute break, and at 11:15 we'll come back and we'll resume our discussion. SK, are you there? Sanjay? Very much here. यार देख, एक चीज जो है, इधर तुम जाना मत कहीं, इधर ही रहो अभी। मैं देख रहा था इसमें। खनिंदर, ये बताओ, अगर वो उसको तुमने कंसर्टीना को, खनिंदर डोंट गो एनीवेयर, अगर जगीर की कंसर्टीना को तुमने अगर इम्प्रोवाइजेशन मान लिया होता तो क्या जाता? हम तो तुम्हारे बम्बू को इनोवेशन कैटेगरी में लेके आ गए। सर मान लिया, अभी भी मान लिया हूँ सर, मान लिया। आई टेंडर में अपोलॉजी, लार्ज हार्टेडनेस दिखाओ तुम तो, तुम्हारा यार इनोवेशन में चला गया। देखो सर मैं इसे करता हूँ संदेश सर, मैं मान लेता हूँ और उसको बता भी देता हूँ कि सर ये सिटीजन इनोवेशन। ना अब बताने का नहीं, देन एंड देन करना था। तुम ये सोचो, अपने उत्साह में, जोश में तुम उसके पॉइंट को तुमने काउंटर किया, ये सही बात है। सीके भाई, 1 मिनट रुको, सुनो। I tender unconditional apology to him. अरे खनिंदर, unconditional apology to Zagir. यार अभी तो मनी भाई एक सेकंड मनी भाई, खनीन को बोलो एलोपोजी दे दे, एलोपोजी दे दिया, एलोपोजी दे। I tender unconditional apology. I render my एलोपोजी। दे दिया, एलोपोजी हो गया भाई, एलोपोजी दे दिया। SK, what I was trying to say, मैं बस ये देख रहा था इसमें बीच में एक इसमें मॉडिफिकेशन, अपग्रेडेशन एंड इम्प्रोवाइजेशन पे हम लोग बात कर रहे हैं। इनोवेशन को फिलहाल हमने मतलब छोड़ा हुआ है। चलिए चाय ब्रेक है, इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मॉडिफिकेशन, अ चेंज ऑफ समथिंग यूजुअली टू इम्प्रूव। पहले मेरी बात सुन लेते हैं ना, उसके बाद हम लोग आगे फिर बात करते हैं। Modification is basically a change of something usually to improve. ठीक है, आप गाड़ी का कर लेते हो, चार सीट है, उसका चेंज करके आपने आगे किया, पीछे किया, लाइट चेंज कर दी वगैरह। यार अनुराग, एक मिनट सुन, अरे वाजपेयी, 1 मिनट सुन ले। कुछ रिलैक्स करने की बात कर लो, अभी भी उसी पे लटके हो भाई। नहीं सुनो, अरे भाई क्लास है, कुछ तो आदमी सीख करके जाएगा। अरे क्लास क्या है, ब्रेक है ये। अपग्रेडेशन इज बेसिकली अ बेटर वर्जन। नहीं, तुम हमारी आवाज अपने पे दबा दो वाजपेयी, अब तो बात करेंगे। हम नहीं कंटिन्यू। मॉडिफिकेशन भी तो बेटर वर्जन के लिए ही किया जाता है। अरे सर बात को, आपकी बात सही है सर। अरे एसके सर, बात खत्म होने दो, बोल देना। मनी, आपको देख के हम बहुत खुश हैं, सुनने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस जो दे रहे हो। अरुण भाई, आप गूगल पे जाइए और परिभाषा चेंज करिए। जो मणि बोल रहा है वो नहीं रहेगा, आज से परिभाषा बदल जानी चाहिए। मनी को बोल लेना दो भाई, बोल लेना दो।
अच्छा देखो, एक चीज मैंने और देखी, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू, इम्प्रोवाइजेशन में दिया है, इट इज बेसिकली एन अनप्लान्ड सॉल्यूशन फॉर एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम और चेंज। इसके बारे में क्या व्यू है? कोई व्यू नहीं है। परफेक्टली ऑलराइट, जो आप यही है। हाँ ठीक है, इम्प्रोवाइजेशन इज बेसिकली अनएक्सपेक्टेड, आप कोई एक सॉल्यूशन दे देते हैं और आपके सामने एक अनएक्सपेक्टेड कोई प्रॉब्लम आती है या कोई चेंज होता है, उसका जो आप सॉल्यूशन देते हैं वो इम्प्रोवाइजेशन है। वाजपेयी यार क्यों मेरे पीछे पड़ा यार तू? अच्छी बात है, कोई बात नहीं, जो है ना। वाजपेयी के पास सीमा नहीं है ना, केवल सुरक्षा है। जिसके पास सीमा होगी उसको तकलीफ हो रही है, इसके पास केवल सुरक्षा है। तो तुम लोग जितना बोल रहे हो उसे लग नहीं रहा सुरक्षा कर रहे हो तुम सब। नहीं, हमारे पास तो अभी तीनों नहीं है, हमारे पास तो तीनों नहीं है, बल है केवल मेरे पास। ये बंदूक का एलिमेंट भी लेके आया है। नहीं संजय तुम्हारे पास तो बल भी नहीं है, संजय के पास बल भी नहीं है, बल भी नहीं है उसके पास। और बंधुत्व है, बल नहीं बंधुत्व। अरे बल नहीं, बल्ब नहीं है तो बल्ब कह लो फिर तो, अगर अभी मेरे पास भी। अरे बल में जो है ना वही शामिल होता है सिक्योरिटी एड से, बल में क्या आ जाएंगे 21 अप्रैल को बल में शामिल हो जाएंगे। क्या हो रहा है 21 अप्रैल को? आ जाएंगे वापस बल में। आ रहे हो क्या सही में? हाँ। अरे यार कौन सी जगह खाली करवाएं? अबे कौन सी जगह खाली करवाएं ये बताओ ना। 1 साल एक्सटेंशन हो सकता है तो ले ले। नहीं अब आएंगे। नहीं कौन सी बटालियन खाली करवानी ये तो बता दे, हम लग जाए काम पे। यूनिवर्सली हुआएगा क्या? सही में नहीं, उस बटालियन के 8-10 एनोनिमस लिख देंगे साले को, और क्या ये को आरटी में ले सकते हैं? अरे यार ये बात आरटी में अभी हम शुरू कर रहे हैं, गन के लिए चाहिए भाई एक। तो बस अब देख ले, अब रूममेट को नहीं फेवर कर सकता तो सब तुमको चना बादाम और मुनक्का खिलाया हुआ किसका बात? नहीं एक प्रपोजल गया हुआ है कि एक एआईए जो है गन्स के लिए जो है ना उसको कोर्स करा के लिए रखा जाए उसको। बस मैं भी हूँ भाई। मनी, यू आर लुकिंग आफ्टर बॉर्डर वेरी वेल। मैंने कभी नहीं देखा है अभी कमांड में, तो मेरे ऊपर डाउट है। वाजपेयी जानता है ऐसे लोग इंस्ट्रक्टर होते हैं सब में। नहीं लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सेक्टर आ जाओ, मेरे अंदर पूरे गुण है वाजपेयी, मैं मेरे अंदर पूरे गुण है इंस्ट्रक्टर के, तुम ले लो बस मुझे। वाजपेयी द ओनली ऑफिसर हु हैज अंडरगॉन एआईए कोर्स और कभी एआईए नहीं रहा, वो मैं हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने तेरे को हिंट दे दिया। नहीं तेरे को छोटी बैरल नहीं, तेरे को बड़ी बैरल चाहिए देखने के लिए, तभी हो पाएगा। हो गया भाई, 4 साल हो गए यहाँ पे। ये उस समय की होंडा सिटी कार है जब लोगों के पास मारुति 800 ही आती थी, बहुत जोर लगा के, तो कौन इनका फीचर देखेगा उस समय? भाई हमने लोग पीडब्ल्यू कर रहे हैं भाई, लोग नागरिक पहन करके और घुस जाते थे मेन बेस में। भाई हमने आरटी के नाम पे हमने सब सरेंडर कर दिया, सेक्टर, फ्रंटियर, ट्रेनिंग सेंटर सब सरेंडर है आरटी के नाम पे। बाजू सही में यार, कोर्स के लिए मैं रेडी हूँ। नहीं वो गया प्रपोजल हमने लिखा है कि एक एआईए चाहिए, उसको एक कोर्स करा दो आर्मी में, बस साला 3 महीने का, बस उतना बहुत है। तुमको क्या लगता है कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है? नहीं, इसके वैसे वो समय भी अच्छा था कि पीडब्ल्यू वर्सेस एआईए कोर्स एक साथ हो रहा होता, याद है? अरे नहीं याद क्या है, हमें बहुत जलन होती थी, बहुत दुख होता था, और हम मनोज तो ये सोचते थे कि ये आया मैसेज कब, एक बार देखेंगे, स्टार्ट करना चाह रहा था। अब चुप रहिए आप लोग, त्रिपाठी जी आ गए। अरे भाई एक पूरी फ्लोटिंग बीओपी इसने जो है ना
जेंडर सेंसिटिविटी हाँ क्लास फोटो अरे भाई फोटो आया है सोशल मीडिया पे और काफी न्यूज मीडिया में अच्छा कवरेज आया है। त्रिपाठी जी बहुत बहुत बधाई आपको भाई। ही इज द रिचेस्ट सीईओ इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। 9 की 9 फ्लोटिंग बीओपी है, सबसे लंबा बॉर्डर, और भाई का शानदार काम है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। एडमिरल है ये, एडमिरल। यस, आर के त्रिपाठी, कोई डाउट नहीं है इसमें। आज से त्रिपाठी एडमिरल हो गया, नो मोर कमांडेंट। जरूर से है भाई। लार्जेस्ट मरीन फ्लीट इज मेंटेनिंग एंड यस बिल्कुल, ये इनोवेशन है, ये इनोवेशन है। नहीं, इनोवेशन तो एक ही है, जो खनिंदर का बब्बू और जगीर का कर्जेंटीना, 2 ही इनोवेशन। वो तो नाइंसाफी है जगीर के साथ, टोटली नाइंसाफी। वो इनोवेशन, अपग्रेडेशन और इम्प्रोवाइजेशन से आगे नहीं बढ़ पाए वो। हाँ, वो जगीर का एक वर्ड है ना जो चिदम्बरम के लिए यूज करता था, वो कोई इंटेलेक्चुअल एरोगेंस है वो जगीर का, वो खनिंदर का, जो कि उसकी कंसर्टीना क्वाइल को उसने पेपर है भाई। वो आपकी जेंडर वाली जो बात है जो मनी बता रहे थे, जी come up in paper also. Yes, it has been widely covered. It has been widely covered, और वो त्रिपाठी को ही पता है कि किस तरीके से वो इस चीज को जो है कर पा रहा है। फोटो ऑप में क्या है और अंदर की रियलिटी क्या है, वो सिर्फ त्रिपाठी जानता है। चेहरे पे तो चमक है बॉस, जो भी कर रहा है दिल से कर रहा है और खुद से इस बात। नहीं, इसके बाद उसकी नहीं है। द काइंड ऑफ इश्यूज व्हिच ही इज फेसिंग ऑन डे टू डे बेसिस, वो यही जानता है कि कितनी परेशानी हो रही है इसको उस चीज में। बाकी तो लोगों को यहाँ पे है कि ठीक है फोटो ऑफ है, दिखा दिया कि ठीक है, वो पूरी की पूरी फ्लोटिंग जो है वो त्रिपाठी बेटर एक्सप्लेन जाएगा करने भाई। नहीं, त्रिपाठी वैसे भी एक्सप्लेन करे यार इस पे। गंगा किनारे का आदमी है, इसको पानी के पास रहने की वैसे भी ठीक है। अरे उरई में कहाँ गंगा गई? अरे पहले गंगा के पास रहने वाला आदमी है ये। अरे हाँ, उरई जालौन में कौन सी, उरई जालौन झांसी में उधर कौन सी गंगा? वो कानपुर की बात कर रहा है, इसके समझा कर। अच्छा तो ये आपने सब वहाँ कानपुर में सीखा? कानपुर के लोगों का मैं रूममेट भी रहा हूँ, कोई ऐसे वाले देखे नहीं मैंने उनके अंदर। नहीं, जिनके आप रूममेट रहे हैं वो कानपुर में कभी रहे ही नहीं। अरे भाई चलो बस आखिरी दिन, 1-2 दिन और बचे हैं। आजकल लड़ाई और काम सिर्फ ट्विटर और मीडिया पर ही रह गया भाई। अरे अंगूठा दर्द कर जाता है भाई। यस, तुम्हारा तो नहीं करता होगा क्योंकि दिन भर मोबाइल तुम्हारे नहीं, मैं तो, अरे भाई बहुत रिलीफ है। अगर आप बहुत रिलीफ सुबह 9 बजे छोड़ के 5:30 बजे उठाते हैं तो इससे बढ़िया डिटॉक्सिफिकेशन का कोई काम नहीं है लाइफ। नहीं, आपका जो ज्ञान का स्तर है वो भी ये बता रहा है कि आप मोबाइल पे समय नहीं दे पा रहे हैं, तो बाकी चीजों में समय दे पा रहे हैं। नहीं, वो तो मैं बचपन से हूँ त्रिपाठी जी, आप अभी पहचान हो। लेकिन संजय, जब वापस आने से पहले ये सब डिटॉक्सिफाई होके आना, जितना ज्ञान ला रहे हो ना उसको थोड़ा जो है बिखेर के आना। नहीं भाई, डरा देते हैं लोग कि आओ तब देखना, तो मैं डर जाता हूँ कि कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज हुआ है क्या। मैं बोला मैं तो टालता हूँ, बीएसएफ वालों के साथ सुबह वॉक करता हूँ, लोग बताते हैं के अंदर की बात, लेकिन हो सके सच्चाई चेंज नहीं, इनोवेशन। ऐसा कोई चेंज नहीं है। बाहर मत निकलो। अरे इनोवेशन तो पंडित जी आपको पता है, वो तो मेरे रग रग में बसा हुआ है। अरे पंडित जी थोड़ा टाई दिखाना रे, बड़ा चमक रहा है तेरा टाई। बस पंखा साफ करते हैं ना वो ऊपर का। संजय, पंडित जी, संजय तुम्हारा इनोवेशन तो पता है, तुम साले तुम मूंगफली जो है ना भिगो के बादाम के नाम पे खिला देते हो तुम। दैट इज चाइना बादाम। चाइना बादाम तुम्हारा इनोवेशन में देख रखा है साला, जो है ना मूंगफली भिगो के बादाम के नाम पे चेप देते हो। अरे वो चाइना बादाम है वाजपेयी जी। अरे यार वो बादाम, अरे वो हमारे यहाँ जो है ना वाजपेयी, बिहार और बंगाल में, बिहार बादाम बोला जाता है। चाइना बादाम बोलते हैं भाई। हाँ, ट्रेन में जो है ना लोकल बादाम बोलते हैं। ये ऐसे इलाहाबाद का, ये कब से बिहार में आ गया? ये एक बार सीके मेरे साथ जम्मू से सिलचर गए,
एसके बिहार जो है ना, बिहार एक स्टेट नहीं है, बिहार इज अ थॉट प्रोसेस, सोच है। तुम लोग जो है ना अपनी सोच चेंज करो। अरे बहुत इंटेलेक्चुअल वाली बात कर दी, Yes. बात नहीं उसको समझ पाना भी। तुम मैम आ गई, अब आप लोग जरा शांत हो जाइए। नहीं सर, मैं सुन रही थी, चिंता मत करिए। बिहार एक सोच है सही में। थैंक यू। मैं पैदा बिहार में हुई हूँ, सो इट्स ओके। Arvind, just a sec. Arvind, can you stop sharing your PPT? We would like to take a group photograph. You can come on camera. देखो आज सब कितने तैयार शहर होके आए हैं, आपने देखा नहीं? You didn't notice it. सबने टाई पहनी है, कोट, जैकेट्स, देखो। Cohort, we would like to take the picture. Please come on camera. Arun ji, Dinesh ji, Sanjeev ji, Raghavendra ji. Nitin ji, Israel ji, Anand ji. Divya, Tanvi, if you can also come, that would be good. I know you guys are clicking photographs. Yeah. Raghavendra ji, if you can, yes, good to see you. Dinesh ji, Khanendra ji, if you can come on camera. Heman ji, Surendra ji. ऐसे लग रहा है हाउस पूरा कोरम पूरा है आज हाउस का। आज मैं सबकी शक्ल देख पा रही हूँ। चलिए मैम, आज बहुत पुण्य का काम किया होगा आपने की। पुण्य का काम किया है कि मैं आप लोग से मिल रही हूँ, यही बहुत बड़ा पुण्य है। Israel ji, if we can come on camera. Hi Tanvi, Surendra ji, Nitin ji. Okay. सबसे बड़ी मुश्किल होगी टंडन साहब को लाने में कैमरे में। क्यों सर? है टंडन इज हियर राइट। बैकग्राउंड में क्रिसमस थीम है टंडन के। अच्छा हाँ, फिर क्रिसमस थीम है, अगर ध्यान से देखेंगे आप तो। क्या बात है, क्या बात है। Okay. Good morning, sir. And those who are not able to come on camera, we'll see that we click photographs during the course. Yeah, good, Sanjay ji. Good to see you. Sitlu ji, good. Surendra ji, if you can come. Israel ji, if you can come on camera. Anand ji. So अच्छा रहेगा एक पूरा group का photograph. Okay. Tanvi, Divya, all yours? Yes. You guys take the lead. She is on camera. So Divya, shall we start smiling? Ready. Yeah, okay. Yeah. Count of three. 1, 2, 3. Divya? Done, Mani, done. Okay, Done. Great. अब हमें देखना है सुरेंद्र जी, इजराइल जी और नितिन जी की फोटो, ठीक है? इनकी आवाज ले लो मैडम। गुड वन। नहीं सर, फोटो तो सबकी आएगी। तन्वी, दिव्या, इफ यू कैन हेल्प अस get their photographs, we'll आवाज सितलो जी को भी ले लो। या वाली आवाज ले लो मिस्टर सितलो। हाँ बिल्कुल, थैंक्स। सितलो का वॉइस भी ले लो मैम। हाँ बिल्कुल। सितलो जी सिर्फ जब डॉक्टर पूजा बोलती हैं वो ही उनसे आवाज निकाल सकती हूँ। मैं रहने देती हूँ, जिनको बहुत करना है कर सकते हैं, कंफर्टेबल, बट शी इज द वन हु टेक्स आउट एवरीबॉडी। गुड। सो अरविंद, थैंक्स and apologies for asking you to stop sharing. Now you can do so. Over to you. Okay, thank you, Vani. So I'm going to be sharing my screen one more time. अच्छा, तो हम लोगों की बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी और अब हम लोगों ने ब्रेक ले लिया है। ब्रेक में भी मैं सुन रहा था कि आप लोगों की चर्चा जारी थी इम्प्रोवाइजेशन और अपग्रेडेशन और इनोवेशन के बारे में। तो अब इसका कोई सोल्यूशन मिला कि नहीं मिला इनोवेशन इम्प्रोवाइजेशन की चर्चा का, कि हम लोग अभी भी इसको जारी रखें? नहीं, इम्प्रोवाइजेशन तो क्लियर कर दिया अनुराग मणि ने। हाँ, इम्प्रोवाइजेशन क्लियर हो गया। और
जागीर साहब का इनोवेशन कंसीडर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, वो कमेटी के पास रेफर कर दिया हम लोगों ने। चौधरी साहब ने तो स्वीकार कर लिया ना। वो हम अलग से करेंगे सर। नहीं, मैंने कंसर्टिना कॉयल को पंजी से रिप्लेस कर दिया। ओके, चलिए, अब हम लोग इनोवेटिव माइंडसेट की बात करते हैं कि हम लोग अपना माइंडसेट, हम लोग अपनी सोच इनोवेटिव कैसे बनाएं। तो जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इनोवेटिव कैन बी टॉट, इनोवेशन कैन बी टॉट। तो इनोवेशन कैन बी टॉट का दिस इज लाइक अ पार्ट ऑफ द रिसर्च दैट वी वांटेड टू शेयर विद यू, जो इनोवेशन के बारे में हुई है कि हाउ बेसिकली वी कैन डेवलप दिस इनोवेटिव माइंडसेट। हम लोग कहते हैं सम पर्सन हैज एन इनोवेटिव माइंडसेट, दिस पर्सन इज वेरी क्रिएटिव, ही इज always coming up with new ideas. This guy does not have an innovative mindset, so he's not coming up with innovative ideas. So basically, how we see this scientifically and how we can develop that innovative mindset, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि, and we are going to look this from different scientific aspects, that how like we can build this kind of a mindset which is always driving innovation, which is always driving creativity. Okay, तो अभी ये इनोवेटिव माइंडसेट जब हम लोग कहते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? इनोवेटिव माइंडसेट, व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन वी से इनोवेटिव माइंडसेट? Something to create, who is having a set of mind to create something. Understanding a problem statement. Exactly. So basically, can we say कि हम लोगों ने जो पहले वीडियो देखा था in the beginning of the presentation, जो उद्धव जी जो थे हमारे जुगाड़ मैन ऑफ इंडिया, do you think that he has an innovative mindset? Yes. Better feeling of problem, understanding the problem, making it a innovative effort to solve that problem. Exactly. उसने एक चीज बोला था, उद्धव जी में एक चीज आया था कि when you feel then you start thinking कि how to say you have a problem. Then problem को आप जो फील करते हो कि इस प्रॉब्लम से क्या दिक्कतें आ रहे हैं लोगों को, और उसको जब मैं फील करता हूँ देन उसके लिए मैं इनोवेशन में जाता हूँ कि yes I will create something to sort out this problem. So इसमें एक एलिमेंट था उसमें, that is feeling. Exactly. मैं देखा हूँ जो उसमें मुझे जो लगा, जो मैंने देखा, तो उसमें वो एक एलिमेंट डाला था, that is feeling. मैं उनका प्रॉब्लम एग्जांपल जो दिया था बच्चों को, जो इम्प्रोवाइज चैंडल बना के दिया था, that is shoes that he has made for the boys, because boy had a problem to go to school because he did not have a chandel for using that type of situation, and in that type of situation so he created something, he innovated something which was used by the boy, and because we could feel the pain of the boy. So that is what he wanted to say actually, जो मैंने देखा actually उसमें जो मुझे लगा। Exactly. क्या पॉइंट पकड़ा है चौधरी साहब। इसे जैसे बॉलीवुड की भाषा में कहते हैं जेब बात। तो क्या पॉइंट पकड़ा आपने कि उसने प्रॉब्लम को फील किया, फिर उसके बाद दैट प्रॉब्लम स्टार्टेड बॉदरिंग हिम, और उसके बाद लाइक he started putting his creative shoes on and he started coming up with solutions. तो ये जो हमारा इनोवेशन का जो प्रोसेस होता है, इसके हमारे 3 स्टेजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू रिसर्च, व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। मैं फिर लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, ये 3 स्टेजेस हैं हमारे इनोवेशन के। पहली जो स्टेट है हमारी इनोवेशन की, दैट इज इंस्पिरेशन। तो जैसे हमारे उद्धव जी ने कहा था वीडियो में कि मतलब है उन्होंने प्रॉब्लम को फील किया, जब वो फील किया उन्होंने प्रॉब्लम, तो वो उनको तकलीफ देना शुरू कर दिया उसने। तो पहला हमारा स्टेज है इनोवेशन का, दैट वी हैव टू गेट इंस्पायर्ड, कि हम लोगों को इंस्पिरेशन कुछ ना कुछ होना चाहिए, हम लोगों को प्रॉब्लम को फील करना चाहिए। वी नीड सम काइंड ऑफ एन इंस्पिरेशन, सम काइंड ऑफ अ मोटिवेशन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, और टू कम अप विद अ न्यू आइडिया, और टू कम अप with a new solution. So basically what we're doing here is we are identifying a need, we are getting inspired to solve that need. तो पहला हमारा हो गया इंस्पिरेशन। दूसरा हमारा हो गया आइडिएशन। अब आइडिएशन में हम लोग आइडिया लेकर आ रहे हैं, ला रहे हैं, दिमाग हमारे धमाधम हमारे दिमाग से आइडिया निकल रहे हैं। तो हमारे आइडिएशन स्टेज आ गया।
लेकिन आइडिया को हम लोग दिमाग में तो रख नहीं सकते, आइडिया को हमें दिमाग से बाहर लाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो थर्ड स्टेज हमारा आ गया इम्प्लीमेंटेशन। सो इंस्पिरेशन, आइडिएशन, इम्प्लीमेंटेशन, ये तीन चीजें जब आ जाती हैं तो हमारा एक इनोवेटिव माइंडसेट बनना शुरू हो जाता है। हम लोग एक इनोवेटर की तरह सोच सकते हैं। जो उद्धव जी जो थे हमारे, जो टिपिकल जुगाड़ मैन ऑफ इंडिया, ही इज अ टिपिकल इनोवेटर, ही हैज एन इनोवेटिव माइंडसेट। तो वो क्या होते हैं, वो किसी प्रॉब्लम को देखकर उस प्रॉब्लम को फील करते हैं, उस प्रॉब्लम से इंस्पायर होते हैं। एक बार वो उस प्रॉब्लम से इंस्पायर हो गए, उनके अंदर मोटिवेशन आ गया उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, उसके बाद वो प्रॉब्लम में आइडिया लगाएंगे, आइडिया लेकर आएंगे, आइडिया लगाएंगे। जब उन्होंने आइडिया लगा दिया, उसके बाद वो लोग उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे, और जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे। तो इंस्पिरेशन, आइडिएशन, इम्प्लीमेंटेशन, तो ये तीन चीजें जब आती हैं तो हमारा बनता है एक इनोवेटिव माइंडसेट। तो अब हम लोग इस इनोवेटिव माइंडसेट के अलग अलग कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं। Okay, and before that, I'll take a look at the chat window as well. So Rao साहब कह रहे हैं to venture into a less trodden path. Of course. So basically, like, this is another aspect of an innovative mindset, that we take challenges. Like, basically, like, we think differently. Yeah, we try to go into those areas where other people don't try to go. So yeah, so that is also one aspect of an innovative mindset. Like, we think differently, we think creatively, and we take risks, we accept challenges. Foremost is the requirement, need. Of course, Padi sahab, completely agreed. Need, necessity is the mother of invention. So necessity से आई हमें inspiration, inspiration से लगाया हमने idea, आइडिया को हम लोगों ने किया इम्प्लीमेंट, और हमारा हो गया इनोवेशन, अगर उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आए, वी गो बैक टू द स्क्वायर टेबल एंड वी सी हमारा इंस्पिरेशन ठीक था कि नहीं था। अगर हमारा इंस्पिरेशन ठीक था तो हमने आइडिया ठीक लगाया कि नहीं लगाया। अगर हम लोगों ने आइडिया ठीक नहीं लगाया तो हम लोग दोबारा से आइडिया को सोचेंगे, उसको दोबारा से इंप्लीमेंट करेंगे। सो दिस इज एन इटरेटिव प्रोसेस, हम लोग ऊपर नीचे करते रहेंगे। तो इनोवेटिव माइंडसेट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम ऑफ द proven research techniques, how to develop basically an innovative mindset. And this is going to be again a very interesting session. Clear my drawings. तो ये मैंने सारा clear कर दिया। तो innovative mindset के लिए हमारे पास 5 factors होते हैं जो हम लोगों को अपने अंदर डेवलप करने पड़ते हैं, because this session about innovative mindset is all about ourselves. अभी हम लोग एक कमांडेंट की तरह नहीं सोच रहे हैं, हम लोग अभी एक लीडर की तरह सोच रहे हैं। अभी हम लोग एज एन इंडिविजुअल सोच रहे हैं कि हम लोग अपना एक इनोवेटिव माइंडसेट कैसे बनाएंगे। अगले सेशन में जब हम लोग इनोवेशन इन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर करेंगे, वहां पे लाइक विल सी कि हम लोग एज ए लीडर इनोवेशन अपने लोगों के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करें, अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे लेकर आएंगे। तो अभी हम लोग इनोवेटिव माइंडसेट के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग अपना इनोवेटिव माइंडसेट कैसे बनाएंगे। तो पहला फैक्टर होता है ओपननेस, agility, analytical grit and positively disruptive. तो ये सारी जो चीजें हैं हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो पहला फैक्टर होता है, अगर हम लोगों को अपना माइंडसेट इनोवेटिव बनाना है तो पहला फैक्टर जो होता है वो होता है ओपननेस, कि लाइक वी हैव टू बी ओपन। तो ओपननेस के लिए ये दो सिनेरियोस पढ़िए और आप बताइए कि कौन सा सिनेरियो ज्यादा सही है। Second one. ओके, सेकंड को मिला 1 वोट, फर्स्ट है अभी 0 पे। और सोचिए थोड़ा सा, बताइए। सेकंड का 1 पॉइंट है, पहला का पॉइंट 0 है। चौधरी साहब, इफ यू आर सेइंग समथिंग देन यू आर म्यूटेड। I'll go by first one. You will go by first one. Okay, तो फर्स्ट को भी 1 मिला 1 पॉइंट, सेकंड को भी मिला 1 पॉइंट। फर्स्ट ओके, फर्स्ट को मिला 2 पॉइंट्स, सेकंड को मिला 1। फर्स्ट को मिले 3 पॉइंट्स। ओके, सेकंड को मिले सेकंड के भी हो गए 3 पॉइंट्स। हाँ, चैट पे भी पॉइंट्स आ रहे हैं। तो अभी दोनों बराबर चल रहे हैं, ध्यान से देखिए। चैट पे भी कुछ आ रहे हैं। सेकंड, ओके, सेकंड के हो गए 4 पॉइंट,
तो मेरे ख्याल में यहाँ पे दोनों को डिवाइड नहीं करके ये तो दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है। ये तो दोनों किसी गोल को अचीव करने के लिए दोनों की रिक्वायरमेंट है। ओके, राइट या तो किसी गोल को अचीव करने के लिए दोनों की रिक्वायरमेंट है। आपने अंडरस्टैंडिंग अदर्स का आपका सेशन हो गया है क्या? अंडरस्टैंडिंग अदर्स का नहीं आप लोगों ने वो असेसमेंट किया था जिसमें जैसे है कि ड्राइवर्स, रिफ्लेक्टर्स। हो गया। हाँ, तो जैकेट साहब आप रिफ्लेक्टर थे ना? आई वाज मैक्सिमम जितने भी वन की तरफ गए हैं, कई का मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि सभी ड्राइवर या रिफ्लेक्टर ही हैं वन वाले। राइट। तो बेसिकली ये जो है कि none of these scenarios are good or bad. ये it depends upon the situation, it depends upon the strategy. लेकिन इन दोनों के पीछे एक अंडरलाइंग थॉट प्रोसेस हम लोगों की चल रही है कि हम लोगों के दो टाइप के माइंडसेट होते हैं। एक होता है हमारा थोड़ा सा एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है, एक हमारा जो होता है अजाइल माइंडसेट। तो हमारा जो फिक्स माइंडसेट होता है वो हमारा टैलेंट बेस्ड होता है कि हमारे अंदर जो टैलेंट है उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अगर हमारे अंदर टैलेंट है तो हम ये काम कर देंगे, अगर हमारे अंदर टैलेंट नहीं है तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज वन वे ऑफ सीइंग द थिंग। द सेकंड वे ऑफ द सीइंग द थिंग्स इज लाइक मोर ऑफ अ प्रोग्रेसिव माइंडसेट, मोर ऑफ एन अजाइल माइंडसेट, कि हम लोग सिचुएशन के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगे। अगर हम लोगों को दुश्मन के साथ मतलब है सामना करना है तो कभी कभी हमें दुश्मन बनकर पड़ता है। सर इस साल से ये पीआर इस पैरामीटर एसआई और एएसए पे होगा। बढ़िया है। अच्छा, तो हम लोगों को कभी कभी मतलब है पाकिस्तान से आपका काम कम हो गया ज्यादा, मतलब है पाकिस्तानी जो पूछना पड़ता है, बांग्लादेशी का कौन कर रहा है बड़ा सा इंस्पेक्टर का सारे तो मैंने किया। ये कुछ नई एपीआर चले, पहले सिर्फ टीपी अभी है एपीआर में टाइप म्यूट करो, म्यूट करो यार। अच्छा नहीं ऑनलाइन। अच्छा, ये रेलवे के अनाउंसिंग सिस्टम के साथ नहीं जुड़ा हुआ है डीपी। डीपी रिएक्शन बड़ा अच्छा देता है बाद में। तो नहीं ऑनलाइन सेशंस में तो ये होता रहता है। कभी कभी तो जैसे है कि ये जो जूम ट्रेनिंग्स होती हैं ये क्रैश हो जाती हैं, कभी कभी बाहर से लोग आ जाते हैं और गंदी कर देते हैं। अभी 1-2-4 महीने पहले हमारे साथ हुआ था, हम लोगों ने एक मीटिंग ओपन छोड़ दी थी, उसमें पासवर्ड नहीं डाला था, लोग बाहर से आ गए, उन्होंने गंदी बातें लिखनी शुरू कर दी। वो तो ठीक है, बट इसमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कि आप रेगुलर पाएंगे कि माइक ऑन है। ओके, लेकिन यहाँ तो सब घर की बात है तो कोई समस्या नहीं है। ओके, तो ये बेसिकली हमारे ये दो माइंडसेट होते हैं कि हमारा अंडरलाइंग थॉट प्रोसेस किस तरह से जा रहा है। तो एक हमारा होता है फिक्स्ड माइंडसेट, एक होता है हमारा ग्रोथ माइंडसेट। Hey, sir, going back to the previous slide, sir. I am having a doubt in my mind. Absolutely. In second situation, you have not mentioned about the individual trait. मैं अगर स्ट्रेटेजी भी बनाऊं, मुझे तो कुछ ना कुछ तो मेरा आइडेंटिफिकेशन होगा ना कि भाई आई एम हैविंग सर्टेन डिग्री ऑफ टैलेंट विथ मी, और उसको मैं आइडेंटिफाई करके ही मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगा ना। अदरवाइज हाउ कैन आई बी सक्सेस इफ आई नहीं, वो तो डेलिबरेटली वो टैलेंट को उसमें रखा गया है, स्ट्रेटेजी को इसमें रखा गया, आई थिंक। फिर थर्ड कैटेगरी की जरूरत है तो थर्ड बना लो ना कि who stopped you from making third one up? फोर्थ भी बना दीजिए सर आप। नहीं सर, ये डेलिबरेटली सही, सिंह साहब ने एकदम सही कहा, सही पॉइंट पकड़ा है, एकदम सही पकड़े हैं आप सिंह साहब की। ये डेलिबरेटली रखा गया है ताकि मतलब है कि एक तो ये है कि मतलब है कि हम लोग टैलेंट के हिसाब से सोचें, एक हम लोग सिचुएशन के हिसाब से सोचें। तो हाँ, सिचुएशन के हिसाब से चौधरी साहब लाइक टू सम एक्सटेंट लाइक व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि मतलब है हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो स्ट्रैटेजी के लिए हम लोग अपना टैलेंट देखते हैं कि मतलब है कि कहाँ कौन सा टैलेंट हमें कहाँ पर डिवर्ट करना है। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन ये है कि बेसिकली हमारे माइंड में एजिलिटी कितनी है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, ये होती है। अभी हम लोग एजिलिटी पर भी आने वाले हैं चौधरी साहब, लाइक विल कम एंड डिस्कस विल एजिलिटी आल्सो, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द माइंड। और फिर यहाँ पर हम लोग ये इस बारे में हम लोग जैसे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल कि बेसिकली हाउ वी कैन टेक अ टैलेंट एंड हाउ वी कैन यूज द टैलेंट फ्लेक्सिबली। अगर हमारे पास वो टैलेंट की कमी है, then how we can take help from the others and use that in a particular situation. So we're going to be discussing all of that. लेकिन अभी हम लोग एजिलिटी पर आएंगे, then we're going to be discussing that, और इस बात का हम लोगों के पास एक पुख्ता हम लोगों के पास सोल्यूशन मिलेगा।
ओके तो यहाँ पर जैसे ये बट दिस इज लाइक एन अंडरलाइंग थॉट प्रोसेस दैट गोज इन। तो एक हमारा फिक्स्ड माइंडसेट होता है कि हमको मतलब है कि हम लोगों को इसी तरह से काम करना है, अगर हम इसमें अच्छे हैं तो हम लोग अच्छे में काम करेंगे, अगर हम लोग इसमें अच्छे नहीं हैं देन प्रोबेबली वी आर गोइंग टू वर्क इन अ डिफरेंट वे। सेकंड इज अ ग्रोथ माइंडसेट। तो ग्रोथ माइंडसेट मतलब होता है कि दिस इज लाइक अ वेरी लर्निंग माइंडसेट कि ठीक है, अगर हमारे पास कोई चीज नहीं है, मतलब इफ देयर इज समथिंग दैट वी आर लैकिंग, वी आर गोइंग टू लर्न दैट। Yeah, we are going to learn that. I am going to continuously challenge myself. अगर मैं फेल होता हूं तो भी मैं उठ जाऊंगा। अब ये दोनों माइंडसेट जो हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, अब ये दोनों माइंडसेट अपनी अपनी जगह पर ठीक है। कभी मतलब है कि हम लोगों को फिक्स्ड माइंडसेट की जरूरत पड़ती है बिकॉज वी हैव टू गो बाय द प्रोटोकॉल्स, राइट? हम लोगों को जैसे बीएसएफ में लाइक वी हैव टू गो बाय द प्रोटोकॉल्स, so like we have to sometimes have a fixed mindset कि हम लोगों को जो करना है वो तो करना ही है, हम लोग यहाँ पे हम लोग प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ सकते हैं। कभी कभी हम लोगों को ग्रोथ माइंडसेट की जरूरत होती है। तो ग्रोथ माइंडसेट में जैसे वी हैव टू थिंक क्रिएटिवली एंड वी हैव टू कम अप विद लाइक अ न्यू स्ट्रेटजी, न्यू सॉल्यूशन। सो नन ऑफ दीज माइंडसेट्स आर गुड और बैड। Yeah, so basically, but what we try to do is that we try to kind of like basically like in this session what we are trying to do is that we are trying to open up our minds and we are trying to see things from a multiple perspectives. That is the only objective of this session. Innovation कब होता है? जब हम लोग चीजों को multiple perspectives से देख पाते हैं, and that is our only objective कि हम लोग एक ऐसा mindset develop करें जिससे हम लोग चीजों को multiple perspectives से अलग-अलग दृष्टिकोणों से देख सकें। ये हो गया हमारा फिक्स्ड माइंडसेट, ये हमारा हो गया ग्रोथ माइंडसेट। तो हमारा क्या होता है कि हम लोगों को कभी-कभी हम लोगों को फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ट्रांजिशन करना पड़ता है, क्योंकि सिचुएशन कभी-कभी ऐसी हो जाती है कि हम लोगों को स्ट्रेटेजी लगानी पड़ती है और हम लोगों को आई मीन वी कैन नॉट वर्क इन अ सर्टेन वे दैट वी हैव बीन वर्किंग, एंड दिस हैपेंस ऑल द टाइम। क्योंकि दुश्मन ने अगर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की तो हम लोग उस स्ट्रेटेजी को कैसे कम्बैट करेंगे अगर हम लोगों के पास एक ही तरीका है काम करने का। इसलिए हम लोगों के पास मल्टीपल तरीके होने चाहिए और वहां पर इनोवेशन काम आता है टू क्रिएट दोज ऑप्शंस, टू क्रिएट दोज ऑल्टरनेटिव्स। अगर हम लोग गन से नहीं लड़ सकते हैं तो हम लोग अपना भाला तीर तलवार से कैसे लड़ेंगे उसकी भी हमारे पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सो बेसिकली situation demands strategies, situation demands us to think on the feet, and that is something that we mean by openness कि हमारे पास like we, our mind should be open to possibilities, our mind should be open to options। केवल हम लोगों को अपने आप को केवल एक छोटे से दायरे में सीमित नहीं करना है, हम लोगों को बड़ा सोचना है, और बड़ा सोचने के लिए हमारे पास मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए। तो हम लोग ये कैसे डेवलप करेंगे, इसके लिए हमारे कुछ सजेशंस हैं। So basically what we do is that we become open-ended, we accept new perspectives, we expect divergent perspectives, we accept sometimes ideas which are not very conventional, and we go ahead and apply them. हम लोग कैसे करते हैं? तो जैसे ये लास्ट वाला जो पॉइंट है, this is an important point out here, कि how can it be developed? So basically how can we be more open? तो इसमें हमारी ये कुछ pointers है, so I would like you to take a look at this. One is active listening. So active listening is a very important skill that we develop in order to understand what the other person is trying to say. So if we want to get multiple perspectives, it is very important that we have to develop this active thing, active listening. Curiosity becomes very important क्योंकि अगर हम लोगों को अपना दिमाग खोलना है तो उसके लिए हमारे अंदर एक inquisitiveness होनी चाहिए, एक curiosity होनी चाहिए, एक उत्सुकता होनी चाहिए नई चीजों को जानने के लिए। तो एक क्यूरियोसिटी दिमाग में हमेशा बना के रखनी पड़ती है। फैसिलिटेटिंग ओपन डिस्कशन, अगर हमारे अंदर जैसे लेट्स से लाइक हम लोगों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर जैसे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, कुछ लोगों के अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी कम होती है, दैट इज एन इनबिल्ट ट्रेट। ये हम सबके अंदर होता है। आप लोगों ने देखा होगा आपके जवानों में, कुछ जवान जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक होते हैं, उनको हर चीज पता करनी है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। कुछ लोग मान जाते हैं, जैसे आपने उनको डायरेक्शंस दे दी है। आप लोगों की लाइन में ऐसा होता है कि कुछ जवान होते हैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होते हैं, बहुत ही ज्यादा उत्सुक होते हैं, जवान ऑफिसर्स, आपके टीम मेंबर्स? है definitely there are some people who are very interested to learn, very eager to listen. There are people, yes, right, exactly Chaudhary Saab. So there are always people in the organization like who are very curious to learn new things and they are very eager to reason out, कि वो लोग हर चीज को मतलब रीजन करते हैं, हर चीज को चैलेंज करते हैं। तो बेसिकली
Sometimes this curiosity is good. Sometimes this curiosity kind of leads to a backlash because when we have to follow the protocol, तो थोड़ा सा curiosity और हर चीज reasoning करने में problem हो जाती है. लेकिन overall, like this is a good thing. Curiosity is a good thing. Yes, we have to be curious in order to understand that what is going on out here. Facilitating open discussion. तो basically हम लोगों ने open discussion कर दिया and we are talking to jawans. When we are talking to jawans, हम लोग पूछते हैं ना कोई शक कोई सवाल. आप लोग पूछते हैं कोई शक कोई सवाल? हाँ, नाम के बाद सबसे कॉमन तो यही सवाल है. हाँ, कोई शक कोई सवाल. यार ये बात जब भी मैं ये सेशन लेता हूँ तो मैं तो आप लोगों से ही सीखा है. कोई शक कोई सवाल हमेशा ये होता है. तो फैसिलिटेटिंग ओपन डिस्कशन कि अगर आप मन में कोई सवाल है, आपके मन में कोई शक है तो उसको आप कहिए, सबके सामने कहिए, हम लोग उसका समाधान करेंगे. अपने मन में मत रखिए कोई सवाल. इसका जवाब भी ज्यादातर नहीं मिलता है. कोई शक या किसी सवाल का ज्यादातर जो जवाब सामने से आता है वो आता है नो सर. नो सर. और जो शक या सवाल पूछ लिया जाए तो वो अच्छा जवाब नहीं माना जाता है. नहीं, ऐसा भी नहीं है. इट वाज ऑन द राइटर साइड. ऐसा भी नहीं है. सवाल ज्यादातर उन्हीं को होता है जो पूरे प्रोसेस में फोकस नहीं है, जो पूरा शुरू से उन्होंने सुना नहीं है. लास्ट फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेशन देयर इज सम क्वेश्चंस. आप किसी भी ग्रुप में ऐसा पाएंगे. अब ऐसा मत बोलो एसकेडीपी. क्वेश्चन के आपके क्वेश्चन से आपकी तैयारी का पता चल जाता है, इन्वॉल्वमेंट का. फिर वो जनरली उसको फिर समझाया जाता है कि ये तो उस स्टेज में बताया जा चुका है. आपको ब्रीफिंग के लिए जब आना है तो उस माइंडसेट से आना है कि जो चीजें मैं बता फिर दोबारा से आपको रेफरेंस नहीं चाहिए. वहां मनी को बता दे. Yeah, and that is again, Singh, that is again a very interesting take on this. तो basically यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग जैसे हैं डर के मारे नहीं बोल पाते हैं. अब जैसे जवान होते हैं कभी कभी, जैसे मैं पिछला जब BSF सेशन ले रहा था तो एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जांपल आया था वहां पे. तो वहां पे एक कमांडेंट साहब थे, तो वो कह रहे थे कि तो उनका जो इमीडिएटली उनका जो बंदा था जो उनको रिपोर्ट करता था, उसने आके बताया कि सर एक जवान है वो आपसे बहुत ही डरा हुआ है और वो बार बार घूम रहा है, बहुत ही चिंता में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा. तो उन्होंने पूछा भाई ऐसा क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया? कल सर आपने उसको आप कह के बात कर ली आपसे, उसके साथ आपने उसको आप कह दिया, इसलिए वो घबराया हुआ है कि आपने उसको आप क्यों कहा. तो इस बात को लेकर वो चिंता में है कि भाई आप इतना फॉर्मल उसके साथ कैसे हो गए. तो so as leaders it is very important that we have to create that level of comfort, yeah, with our jawans, so that like we understand with our, not just the jawans, like with our officers, with the team members, with the colleagues, कि everyone opens out. जैसे आप लोग सब colleagues हैं, आप लोग सब counterparts हैं, आप लोग सब एक रैंक पे हैं, तो आप लोग कितनी अच्छी तरह से आपस में बात कर पा रहे हैं. ऑब्वियसली मतलब है कि आपके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर्स हैं मतलब इस लहजे में तो आपसे बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा लेवल ऑफ ओपननेस हो जाता है, वो लोग अपनी बात अच्छी तरह से कह लेते हैं, तो वो एक इनोवेटिव माइंडसेट को हेल्प करता है. तो अपनी बात रखने का सबको, जब हम कोई शक कोई सवाल कहते हैं, अगर हम लोगों ने उनको एक फोरम दे दिया जहां पर वो अपनी बात कह सके, तो एक अच्छी बात होती है. Okay, so that is the first aspect of developing an innovative mindset कि हम लोगों को अपना दिमाग खोल के रखना है. That is openness. The second is being analytical. अच्छा, अब आप लोग इस पिक्चर को देखिए और बताइए कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो है X है, इसमें ये ये 4 टुकड़े हैं. इन 4 टुकड़ों को बनाकर कौन सा फिगर बनेगा? 1, 2, 3 या 4? 4 नंबर लास्ट. 4. Okay. I'll go by 4. 4 number. Okay, 4 को 2 पॉइंट्स, 3 को 1 पॉइंट. 3 भी है. 3, okay, 3 को 2 पॉइंट्स, 4 को भी 2 पॉइंट. Yes, 3 भी है. 3 और 4 दोनों हैं. 2, 3, 4. 2, 3, 4. ओके, 2 को भी 1 पॉइंट मिल गया. नहीं, 2 नहीं है. अच्छा, 2 नहीं है. ओके. नहीं, वैसे यहाँ पर चैट में मिला हुआ है पॉइंट. 3, 4. 3 है. ओके, 1 को भी पॉइंट्स मिल रहे हैं. 1 को मिल गए हैं 1,
ओके 3 और 4, एक को भी, हाँ एक को भी 3 पॉइंट्स मिल गए हैं। अच्छा ओके चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। जय हिंद सर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 3। तो ये जो 3 है ये इनसे परफेक्टली बनता है। लेकिन इससे, इस एक्टिविटी से हम लोग आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे ये सोचिए। जो आपके मेंटल अलाइनमेंट में चीजें हैं वही आउटकम में हम देखना चाहते हैं। थैंक यू सिंह फॉर मेंशनिंग दैट, कि हमारे मेंटल अलाइनमेंट में जो चीजें हैं वही हम लोग बाहर भी देखना चाहते हैं। और कोई संदेश जो हम लोग आपको यहाँ से देना चाह रहे हैं इस एक्टिविटी से? एक सिचुएशन को आपने किस पर्सपेक्टिव में देखते हो, हाउ यू लुक ए पर्टिकुलर सिचुएशन एंड फ्रॉम व्हाट पर्सपेक्टिव यू वांट टू लुक। Exactly. Like a situation, how do you like see the situation from which perspective? Acha, when I say the word analyze, what comes to your mind? Analyze. हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस से हम आपके दिमाग में क्या आता है? What do we mean by analysis? What is the situation? What is the factor involved in that? Positive, negative, what is the factor? What is likely consequences? That also sometimes. Okay, what are the factors involved in the situation? And why this is happening? That is also another factor that we see in the analysis. Why is it happening? What else could be the definition of analysis? हम लोग analysis कर रहे हैं. Analysis means simple application of mind to assess the situation in all the parameters related with that. Exactly. Basically, we are assessing the situation and all the parameters related with that. किसी चीज को एक्सप्लेन करना और उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करना। Exactly. किसी चीज को एक्सप्लेन करना, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करना। आप सब लोग सही है। तो बेसिकली एनालिसिस का एक बहुत सिंपल मीनिंग होता है एंड दैट इज ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम। हम लोग बेसिकली एक बड़ी समस्या को तोड़कर उस गुत्थी को सुलझा रहे हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट्स करके उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसके अलग अलग फैक्टर्स को देख रहे हैं, उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को देख रहे हैं। सो एनालिसिस इज डाइवर्जेंट, कि हम लोग बेसिकली अपने दिमाग को डाइवर्ज कर रहे हैं। तो हमें जब इनोवेटिव माइंडसेट बनाना पड़ता है, जब हमें इनोवेटिव माइंड बनाना है, देन वी नीड टू हैव दिस एनालिटिकल आउटलुक आल्सो। हमारे पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि हम एक प्रॉब्लम को तोड़ के उसको अंदर से देख सके, उसके सारे कलपुर्जों को देख सके। We determine that what are the different factors which are causing that problem or causing that situation. So if we are able to break down a problem, break down a situation and understand a circumstance from its root, we are analyzing it. And that is very important to be an innovator. To have that innovative mindset, क्योंकि अगर हम लोग किसी प्रॉब्लम की रूट कॉज को समझेंगे नहीं, हम लोग उसका एक इफेक्टिव सोल्यूशन लेकर नहीं आ पाएंगे। तो हमारा जो दूसरा पैरामीटर यहाँ पर है, दैट इज बीइंग एनालिटिकल, कि हम लोगों को, हमारे अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि हम लोग उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह ना देखें, उसको एक होलिस्टिकली ना देखें, उसको हम लोग तोड़ के उसके अंदर अंदर क्या पार्ट्स है, क्या फैक्टर्स है, उनको भी देख सके। एक सिचुएशन को केवल हम एक सिचुएशन की तरह ना देखें, उस सिचुएशन की डेप्थ मर भी जाए। तो अगर हम लोगों को एक इनोवेटिव माइंडसेट क्रिएट करना है, पहला हम लोगों ने अपना दिमाग खोला, वी वर ओपन। सेकंड, हम लोगों ने वो एनालिटिकली उसको देखना शुरू कर दिया। So like basically like like we have started breaking down the problem and we have started seeing this from an analytical perspective. Okay, so that was the purpose of this activity. लेकिन यहाँ पर बेसिकली एनालिसिस नहीं हो रहा था, यहाँ पर हम लोग सिंथेसिस कर रहे थे। देखिए आप लोगों ने टूटे हुए टुकड़ों को आप लोगों ने जोड़ दिया। So this is synthesis. So basically in analysis, like we are diverging, in synthesis we are converging. तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो इसे हम लोग, जैसे लिटरेचर के टर्म्स में हम लोग इसको डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, कि अगर हम लोगों को एक एनालिटिकल माइंड सोचना है तो पहले हम लोगों को चीजों को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के समझना पड़ेगा और फिर समझ के फिर जोड़ना पड़ेगा। तोड़ा, समझा, जोड़ा, तोड़ा, समझा, जोड़ा। सो दैट इज
Divergent thinking, convergent thinking, divergent thinking, convergent thinking, diverge, converge, diverge, converge. And once like we have this mindset in us कि हम लोग diverge भी कर सकते हैं, converge भी कर सकते हैं, तब जाके हम लोगों को innovation समझ में आना शुरू हो जाता है कौन सी नई चीज की जरूरत है यहाँ पर और कौन सी नई चीज यहाँ पर फिट हो पाएगी। बॉर्डर पे बम्बू फिट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अगर एक बार आपने प्रॉब्लम समझ ली, आपने बैम्बू के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लिए, तो आपने बैम्बू वहां पर बांस वहां पे फिट कर दिया। तो that is being analytical. Okay, so basically how we can develop an analytical mindset? तो यहाँ पर हमारे पास कुछ suggestions हैं कि how we can do that. So basically like we have to rationalize the decisions कि हम लोग कोई भी decision लेते हैं तो उसको थोड़ा सा rational बन के, थोड़ा सा critic बन के उसको देखें और उस चीजों को देखें। Connecting the dots. So basically कोई सिचुएशन है तो सिचुएशन के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, अलग अलग फैक्टर्स हैं, तो सारे हम लोग डॉट्स को देखें एंड यूज एक्सपीरियंस टू फाइंड द कनेक्टिंग द डॉट्स। सो बेसिकली हम लोग अपने अनुभव को भी बीच में लेकर आए कि प्रॉब्लम को सिचुएशन सॉल्व करने के लिए हमारा पुराना अनुभव क्या कहता है। सो दिस इज बीइंग एनालिटिकल। तो इज दिस ऑल राइट? कोई शक, कोई सवाल? मनी साहब कोई शक, कोई सवाल? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, कोई ना कोई सवाल तो होना चाहिए ना, नहीं तो हमेशा नो आएगा तो कैसे चलेगा? नहीं अभी नहीं है, अभी नहीं है, आगे आएगा। अच्छा। क्योंकि ये चर्चा जब होती है तो चर्चा में जब तक हमारे ऑब्जेक्शंस नहीं होते हैं, चर्चा में जब तक डिस्कशंस नहीं होते हैं, तब तक आनंद नहीं आता है। नहीं बट चर्चा तो काफी ठीक ठाक हो रही है और इसमें कहीं कोई इशू नहीं, अच्छी हो रही है। वी आर हैविंग अ ग्रेट डिस्कशन, नो डाउट अबाउट इट। Right. Okay. Thank you, Manisa, for that. And now, like, we are going to move into this third factor. The third factor is agility. So when I say agility, what comes to your mind? And this is a very important aspect of developing an innovative mindset. Agile mindset. Agility. What comes to your mind when I say agility? Adapting yourself into a particular situation, with change situation, I mean to say. Adapting mind, adaptation means adaptation to a change situation. That is, you can say, kind of agility in this context, if I see. Exactly, Chaudhary साहब. Adaptability. अगर कोई सिचुएशन, कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है, we should be able to adapt to that situation. उस परिस्थिति का हम लोग सामना कर सकें। कोई अगर नई समस्या आती है तो उस समस्या को हम लोग अडेप्ट कर सकें। अगर हमारे अंदर एजिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा? हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एजिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा? थोड़ा सा हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग भी करते हैं। No progress, there will not be progress, and we will fighting with the problems only. We will not find a solution. Exactly. So we will be always in the problem solving mode. हम लोग प्रॉब्लम ही सॉल्व करते रह जाएंगे, हम लोग स्ट्रैटेजिकली सोच ही नहीं पाएंगे, हम लोग फ्यूचरिस्टिकली सोच ही नहीं पाएंगे अगर ऑर्गेनाइजेशन में एजिलिटी नहीं होगी। अगर हमारे अंदर एजिलिटी नहीं होगी तो हम लोग बैठ जाएंगे, हम लोग चल फिर नहीं पाएंगे। एंड द सेम थिंग हैपेंस विद द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो, सेम थिंग हैपेंस विद द माइंड आल्सो। अगर दिमाग में एजिलिटी नहीं है, दिमाग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो हमारा दिमाग है वो बैठ जाएगा, ठंडा हो जाएगा। So if we have to develop that innovative mindset, it is very important that we have to develop that spirit of agility, flexibility, adaptiveness. Once like we have that adaptiveness, तो innovation करना बहुत आसान हो जाता है। So we are going to discuss agility और उसके लिए हम लोग एक साइकोमेट्रिक करेंगे। तो अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं और ये 3 क्वेश्चंस हैं, इसके अगले स्लाइड में 3 क्वेश्चंस और हैं, उसके अगले स्लाइड में 2 क्वेश्चंस और हैं। तो ये 8 क्वेश्चंस हम लोगों ने आपको दिए हैं। इसमें आपको पढ़ के अपने आप को 1 2 3 4 मार्क्स देने हैं हर क्वेश्चन पे, और आप केवल एक ही चूज कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ यू थिंक अबाउट लीडरशिप। तो इसमें आपको एक ही चूज करना है, either 1 2 3 or 4. You cannot select like 1 and 2 both, or 3 or 4 both, or like 1 or 2 3. That you have to select only one option from the 4 given choices. और ये लिख लीजिए कि पहले क्वेश्चन में आपने अपने आप को कौन सा ऑप्शन आपने चूज किया, 1 2 3 or 4. Is that all right? I mean, is this do we have any questions around it?
So let us take like a couple of minutes and let us give ourselves points. He has done. Done? Okay. Everybody done? Just a minute. Okay. So let's take 1 more minute और फिर उसके बाद हम लोग अगले स्लाइड पे चलेंगे. Yes. Done. Done? Okay. So we'll move to the next slide. So again, there are 3 questions here. और इसके बाद एक और स्लाइड है with 2 questions, the total 8 questions in all. तो यहाँ पर आप फिर अपने आप को 1, 2, 3, 4 करके करिए on these 3 questions. Can it be taken back to question number 2? I want to see the question number 2. Question number 2? Okay. Yeah. This one? Okay, done. Done? Done. Okay. तो ये जब ये आप लोगों का हो जाए ये पेज तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, then we'll move on to the third slide. जब भी हो जाए तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा. I'll move on to the next slide. हो गया ये? हाँ. हो गया? ठीक है. So I'll move on to the next page. These are last 2 questions. हो गया ये? 2 questions. Please let me know when we are done. So we'll move on to the next part of the assessment. Done. Done? Okay. Done. Okay. So let's take another 30 seconds. और फिर उसके बाद I'll tell you how to calculate this assessment. So I'm assuming everyone has done this. तो अब हम लोग क्या करेंगे? In order to calculate our total score, what we'll do is कि we had 8 questions. हर क्वेश्चन को हम लोगों ने 1, 2, 3, 4 रैंकिंग दी है. तो जो हम लोगों ने रैंकिंग दी है 8 क्वेश्चन के लिए उसको हम लोग एड अप कर देंगे. फॉर इंस्टेंस जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने अपने आप को 2 दिया, सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने अपने आप को 3 दिया, तो उसका सम हो गया 2 + 3 5. तो इसी तरह से जो 8 क्वेश्चन में हम लोगों ने अपने आप को जो रैंकिंग दी है we'll add that up. और फिर टोटल स्कोर जब आपके पास आ जाएगा तो आप मुझे बता दीजिएगा कि टोटल स्कोर आपके पास आ गया है. जब ये एडिशन प्रोसेस हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा कि टोटल स्कोर आपके पास आ गया है. जब टोटल स्कोर आपके पास आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा. Yes. Okay. Okay. So the highest score here is 32. And the lowest score is going to be 8. Okay. Okay. So let us take a look. So let us take a look at the debrief. So this is how the scoring is done. So basically, like if you have a 32 score of 32, that means like you have a super flexible mindset. If you have like a score that is like in the range of like, you know, more than 16, which is means it is quite good. Between 16 to 32, मतलब है कि आपके अंदर काफी flexibility है. 32 है तो आपकी super flexibility है. 16 तक आपकी ठीक ठाक फ्लेक्सिबिलिटी है. अगर आपका 16 से थोड़ा सा कम है तो हमारा जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा रिजिड माइंडसेट है. तो हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा. लेकिन व्हाट आई एम सीइंग इज दैट आप सबके 20, 25, 26, 27 इस रेंज में आप सबके स्कोर्स हैं. So that means like all of you have like a relatively good and agile mindset, which is good. तो बेसिकली आपने क्वेश्चंस भी पढ़े, क्वेश्चंस के हम लोगों ने ऑप्शंस भी पढ़े, कैसी सिचुएशन पे हम लोग कैसा टेक लेते हैं, अलग अलग टेक होता है.
एक टेक होता है जो हमारा थोड़ा सा फिक्स टेक होता है, रिजिड टेक होता है, एक टेक जो होता है हमारा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल सिचुएशन के हिसाब से टेक होता है। तो इससे हम लोगों को पता चल जाता है कि हम लोगों का माइंडसेट कितना अजाइल है, क्योंकि because agility has got another important factor, and that is managing change. So we are going to be discussing this. So we are going to discuss that how we can build agility. Lekin, and I'm taking a look at the chat window as well. Yeah. So I can see that, you know, like aap sabka kafi acha score hai. Like, you know, most of you have like, you know, scores in the range of like 23 to 28, 29, which is really good, Usually लोगों के वही है कि 16, 17 के हिसाब से आते हैं, लेकिन आप लोगों का काफी अच्छा स्कोर है, मतलब आप लोगों का सब मतलब है 25, 26, 27, 28, तो 32 तो मतलब है सब लोगों के आते ही नहीं है, और नीचे वाला स्कोर भी किसी का आता नहीं है, तो यूजुअली मतलब है सबका 16, 17 के हिसाब से होता है, आप लोगों का काफी अच्छा स्कोर है, दैट मीन्स यू हैव अ वेरी अजाइल माइंडसेट. So agility is very important when it comes to managing change. So like we were discussing change in the beginning of the presentation, is change always good? So let us return to that discussion one more time, and let us start discussing that how change is good and how change is bad, and how we can adapt to change. तो आप लोग मुझे बताइए कि जैसे है कि अगर चेंज बैड है, if we realize that जो change हुआ है, although change is necessary, but the change did not happen for good, in that situation what shall we do? हम लोगों को क्या करना चाहिए? इसमें एक पॉइंट है, I would like to highlight one point. Right. Good or bad, again it is perspective. आप किस कैसे आप कौन सी परसेप्शन से आप देखते हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो हमेशा एक चीज आते हैं कि हमारा इंडियन कल्चर में अभी काफी चेंज आया है, वेस्टर्नाइज्ड हो गया है, मेनी थिंग हैव बीन चेंज, तो कुछ लोगों को बोलेगा ये तो बहुत खराब हो गया, इट्स वेरी बैड, कुछ लोगों को लगता है नहीं, इट्स अ डायनामिक चेंज, इट इज रिक्वायर्ड. सो आप एग्जैक्टली एब्सोल्यूट टाइम पे बोलना कि कोई चीज अच्छा है कोई चीज बुरा है, चेंज जो है, चेंज इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड फॉर द बेटरमेंट. चेंज तो हमेशा उम्मीद करते कि इसीलिए चेंज हुआ क्योंकि मैं पहले जिस स्थिति में थे उससे बेटर स्थिति में आया हूँ, इसीलिए मैंने चेंज किया, नहीं तो मैं क्यों चेंज करूंगा? कोई ना कोई मेरा कंफर्ट ज्यादा होगा ना. चेंज आई मीन टू से बेटर मींस कंफर्टेबल, आई विल बी कंफर्टेबल विद दैट. हमेशा बेटरमेंट के लिए चेंज हो जरूरी नहीं है, कभी टाइम की नीड भी होती है चेंज की, वो भी वही मेरा क्वेश्चन था. बेसिकली मेरा वही क्वेश्चन है कि मैं जिसको देखता हूँ कि इट्स फॉर बेटरमेंट फॉर मी, मेरे को लगता है बहुत अच्छा हुआ है, जैसे एसके बोल रहा है कि इट इज, हो सकता है उसको बहुत खराब लगे, बोले ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये क्यों हो रहा है इसे. सो इट इज अगेन ए परसेप्चुअल थिंग. राइट. ओके, लेकिन अगर हम लोग चेंज को रिजल्ट्स के दृष्टिकोण से देखें, लाइक इफ वी सी चेंज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिजल्ट्स, कि रिजल्ट्स हम लोगों ने एक प्रोसेस में एक चेंज इंप्लीमेंट किया, हम लोग एक इनोवेशन लेकर आए, लेकिन उसका रिजल्ट जो आना था वो नहीं आया, हमारी उम्मीद के हिसाब से रिजल्ट नहीं आया, और जो पहला प्रोसेस था वो ही पहला अच्छे रिजल्ट दिया करता था. तो अगर हम लोग इसको रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इट डिड नॉट प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट्स एज वी हैड एक्सपेक्टेड, then what do we do with that change? Revision. Please. Back to original position. We come back to the original position. Yes. There's no harm in it. Yeah. So there is no harm in coming back to the original position. Yes. और हो सकता है उसमें मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, अगर न्यू जो सिचुएशन मैंने जो किया था, जिसमें सेंस करने की कोशिश किया था, उसमें कुछ इनोवेट करूँ, उसमें कुछ एडिशनल कुछ डालूं ताकि बेटर रिजल्ट आ जाए. Both things are possible. Exactly. So that is also possible. So it is possible for us to move back, take a step back, and come back to the old process and work accordingly. It is also possible for us to take a step forward and make again an incremental change in that innovation, in that change that we brought in, and try to work it out again. और इसी को हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, जहां पर हम लोग बैक एंड फोर्थ मूव कर सकते हैं. अगर हम लोगों ने चेंज किया और उस चेंज पे हम लोग अटक गए हैं और हम लोग नुकसान पे नुकसान ले रहे हैं, रिजल्ट्स खराब पे खराब आ रहे हैं और हम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमारी सिचुएशन खराब हो जाएगी. Air India. Then situation become Air India. Yeah, the situation becomes Air India. Exactly, situation becomes Air India because they try to implement change, लेकिन they are stuck. Yeah, they are stuck. अभी तो क्या, Air India has become Tata now and they are kind of implementing a lot of transformational changes in Air India. Jagir sir.
मेरा इसमें एक अपना पर्सनल व्यू है। जैसे आपने एक पहले बीच में स्लाइड दिखाई थी जिसमें इंस्पायरेशन, आइडिएशन एंड इनोवेशन, इम्प्लीमेंटेशन, और त्रिपाठी ने उसमें ऐड किया था कि नीड आल्सो, ही आल्सो एडेड नीड। तो इट इज बेसिकली ए साइकिल। ये एक साइकिल है, इट शुड बी इन ए साइकिल कि अगर नीड है देन इंस्पिरेशन है, उसके बाद आइडिएशन है, इनोवेशन है। इफ इट इज नॉट सक्सेसफुल then again we will fall back to need, then again it is basically a cycle. So as SK is also saying, if the change is not successful, so then we will fall back to the original one and again go to the ideation stage. Exactly. We should have some new ideas. Exactly. और आपने एकदम सही कहा था कि this is a cycle. Yeah. So these are not stages, these are 3 states. हम लोग इनको 3 states कहते हैं। तो जैसे हमारा इंस्पिरेशन हो गया, हमारा आइडिएशन हो गया, और हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो गया। तो इससे हमारा इनोवेशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन। तो ये हमारे 3 स्टेट्स हैं। And why do we call them states? Why we are not calling them stages? Because we can move back and forth between them. अगर if we are not able to move back and forth between them, that means there is something wrong. कि हम लोगों का जब implementation सही नहीं हुआ, we go back to the square table and we start ideating. अगर हमारा ideation ठीक नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को एक बार देखना पड़ेगा कि हमारी inspiration जो थी वो ठीक है कि नहीं है। हम लोगों ने जो अपनी नीड आइडेंटिफाई की थी सही मायनों में वो नीड है कि वो नीड नहीं है, right? So I think we should also add the problem statement or the need. Right. Problem statement between inspiration and implementation. Right. Usually sir, like, these 3 stages come from the literature. तो ये जो नीड होता है that is a part of inspiration. कि inspiration हमें तभी होगा जब हमारी नीड होगी। लेकिन ऐड कर देते हैं इसको। I mean, but this is actually this comes from the literature. जो हमारी research है, जो conduct हुई थी, this was a research that was conducted in Stanford University. तो उससे ये हमारा framework आया था। लेकिन I'll add need here because need is again like the source of so need is again like the source of inspiration here. Yeah, so that's why like it is very important for us to keep moving back and forth. अगर हम लोग back and forth नहीं जा पाएंगे तो हमारा जो है काम जो है वो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। इसीलिए this becomes an iterative process rather than a linear process. So we are iterating, we are going back and forth. अगर हम लोग iterate नहीं करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी। However, like there is a catch to this. हम लोग कितने भी agile हो जाएं, कितने भी हम लोग इटरेटिव हो जाए, हम लोग कितना भी बैक एंड फोर्थ करें, एट द एंड ऑफ द डे वी रिक्वायर एन आउटपुट। अगर हमारा एट द एंड ऑफ द डे हमारा आउटपुट नहीं आएगा तो हमारा सारा इटरेशन, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, सारा आइडिएशन, सारा इम्प्लीमेंटेशन बेकार हो जाएगा। इसलिए एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को अगर एजिलिटी बनानी है, वी रिक्वायर एन आउटपुट। सो वी गो थ्रू दिस साइकिल ऑफ इंस्पिरेशन, आइडिएशन, इम्प्लीमेंटेशन, नीड, and at the end of the day we require an output that is going to create a positive impact for our organization, a positive impact for our people, positive impact for our society. So that is how agility is built, and that is why agile mindset is so important to drive innovation. तो पहला हो गया हमारा openness, दूसरा हमारा क्या पॉइंट था आप लोगों को याद है? दूसरा हमारा पॉइंट आप लोगों को याद है? एनालिटिकल, कि पहला हमारी ओपननेस, दूसरा हमारा एनालिटिकल, थर्ड हमारा एजिलिटी। कि ये 3 चीजें हमारे पास आ गई हैं, हम लोग ओपन भी हो गए हैं, हम लोग एनालिटिकल भी हो गए, हम लोग अजाइल हो गए हैं। नाउ वी आर इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग दैट अजाइल माइंडसेट, दैट इनोवेटिव माइंडसेट। तो इसके साथ लाइक वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक। I think it's time for a break now. It's 12:19 already. So we'll take a short break. We'll come back and let's say like, in 15 minutes we'll come back. और उसके बाद I was about to say that. Okay. Yeah. So in 15 minutes we are going to come back and we will continue with our discussion. तो हमारे पास agility है, agility के साथ हमारे साथ 2 points और हैं।
हाँ, तो we are going to be discussing. Arvind, you're quite generous. 15 minutes, good. अच्छा, नहीं, we can do a 10-minute break also if you want. No, it's okay. You said 15, then it's okay. Okay. I don't want to look like a villain now. Okay, 15 minutes break. Yeah. Okay, cool. Okay, so I hope we had a good break. Breaks are always welcome. Okay, I can see Mani Saab, Chaudhary Saab, I can also see Singh Saab, I cannot see it. Tripathi Saab, I can see. Ojha Saab, I can see. Sanjeev Ji, I can see. और बस इतने ही कैमरे हैं. Okay, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, आ रही है. Okay, loud and clear. Perfect. Okay, so we were discussing agility. So agility में जैसे है कि now the question is that the more agile mindset we have, the more innovation prone we are going to be. So how do we build that agile mindset? That is a big question that comes to our mind. So here is a framework that we suggest. This is like a research-based framework that we suggest that how we can go about building that agile mindset. So the first is like, like whenever we are in a situation जब हमें लग रहा है कि हमारा दिमाग फ्रीज हो गया है, कभी-कभी ऐसा होता है ना सिचुएशन की, जैसे हमारा एक माइंड ब्लॉक आ जाता है. जैसे आई एम आल्सो अ राइटर, तो राइटर्स का एक राइटर ब्लॉक आ जाता है, रीडर्स का एक रीडर ब्लॉक आ जाता है, 3 साल तक कोई किताब नहीं पढ़ी. आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है? राइटिंग ब्लॉक, रीडिंग ब्लॉक, माइंड ब्लॉक वगैरह कभी आप लोगों के साथ कभी ऐसी सिचुएशन हुई है कि हम लोग अटक गए और एक काम को जो हम लोग करना चाहते थे, हम लोग उसको आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं? We're not procrastinating, but still we are not able to move forward. ऐसे सिचुएशंस कम ही आते हैं हमारे यहाँ कि हम लोग को कोई अगर टास्क या कोई रोल दिया जाता है करने के लिए, डिफिकल्टीज होती हैं उनमें, बट समहाउ और द अदर पेस उसका स्लो हो सकता है, बट वी कम टू अ डिसीजन एंड अ लॉजिकल कंक्लूजन आल्सो. Right. Absolutely, Mani Saab. In fact, like at the organizational level, like the things become a little easier for us because like there is an organization system in place. और BSF का जो organizational system है ये बहुत strong है कि ऊपर से नीचे तक सबको मालूम है कि किसी को क्या क्या काम करना है. तो यहाँ पे systems में discrepancies बहुत ही कम है. अब ये zero तो discrepancies नहीं होती हैं, हर organization में थोड़ी बहुत discrepancies तो होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपके organization में discrepancies तो बहुत ज्यादा कम है. लेकिन एट अ पर्सनल लेवल, क्योंकि आज हम लोग जैसे हमारा जो इनोवेटिव माइंडसेट है, दिस इज अबाउट पर्सनली डेवलपिंग और इनोवेटिव माइंडसेट एज अ पर्सन. हमारे जो पर्सनल टास्क होते हैं, हमारे जो इंडिविजुअल टास्क होते हैं, वहां पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में ब्लॉक आ जाता है. कोई काम हम लोग करने का सोचें लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं. यस, पर्सनल फ्रंट पे तो होता है. पर्सनल साइड पे ये होता है. कभी कभी जो हमारी प्रोफेशनल प्रायोरिटीज है वो हमारी पर्सनल प्रायोरिटीज के ऊपर हावी हो जाती हैं, क्योंकि प्रोफेशनल प्रायोरिटीज में तो हमारे ऊपर थोड़ा सा पुश होता है. लेकिन यहाँ पर जब हमारे पास पुश नहीं होता है तो हमारे पास एक सेल्फ मोटिवेशन की कमी हो जाती है. तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को जैसे है कि व्हाट वी सजेस्ट इज दैट वी स्टॉप, कि हम लोगों को रुक जाना चाहिए एंड वी रीफ्रेम द क्वेश्चन. हम लोग मल्टीपल पर्सपेक्टिव से उस सिचुएशन को समझें. अगर हमें कोई चीज नहीं मालूम है देन वी एक्सेप्ट दैट, कि ठीक है चलिए अगर हमें कोई चीज नहीं मालूम है हम लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं. हाँ, और उसके बाद है कि हम लोग चीजों को हम लोगों ने नए दृष्टिकोण से देखा, नए पर्सपेक्टिव से देखा, और हम लोगों ने अपने लिए नए गोल्स बनाए, नया डायरेक्शन सेट किया. और उन गोल्स को हम लोगों ने अपने आप को हमने टेस्ट किया और अपने सोल्यूशन को भी हम लोगों ने टेस्ट किया. अगर हम लोगों का टेस्ट में अगर हमारा सोल्यूशन जो है वो फिट बैठता है तो हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया. अगर हमारा फिट नहीं बैठा देन वी गो बैक टू द स्क्वायर पाथ एंड वी स्टार्ट आइडिएटिंग अगेन. तो जो तीन चीजों का हम लोगों ने फ्रेमवर्क देखा था, इंस्पिरेशन, आइडिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, एंड ऑफ कोर्स नीड आल्सो. सो नीड, इंस्पिरेशन, आइडिएशन, इम्प्लीमेंटेशन. अगर जहां भी हमारा काम नहीं हो रहा है वी कीप मूविंग बैक एंड फोर्थ. अगर हम लोगों ने ये इटरेटिव प्रोसेस अपने दिमाग में हम लोग लेकर आ गए तो हम लोग इस ब्लॉक से बहुत अच्छी तरह से बाहर निकल जाएंगे. अगर हम लोग इटरेटिव प्रोसेस अगर नहीं लेकर आ पाए, हम लोग एक लीनियर प्रोसेस में स्टक हो गए, तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम थोड़ी सी हो जाती है. सो दैट वाज अबाउट एजिलिटी.
So we have these we have these three factors yet with us, like we have to develop openness, we have to develop an analytical mind, and we have to develop agility in order to develop that innovative mindset. अगर हम लोगों को innovative सोच अपनी बनानी है तो पहले हम लोगों को अपनी सोच खोलनी पड़ेगी, दूसरी हम लोगों को थोड़ा सा चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा, रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उसका कारण क्या है, हर दृष्टिकोण से चीजों को देखना पड़ेगा, और फिर हमें अपने अंदर एजिलिटी लानी पड़ेगी. जैसे we have to bring that factor of adaptability in us so that we start thinking more and we start iterating more also. We create that flexibility. Now what next after flexibility? So there is this thing called grit. So when I say grit, what comes to your mind? Grit. Forces में एक term बहुत use होता है, I'm sure BSF में भी होता होगा, उसे कहते हैं जज्बा. जज्बा. Courage. Courage, of course, courage. Will to succeed. Need to succeed. Will. Okay, will to succeed, of course. Of course. Yeah. So basically, forces में this term is used very often, जज्बा. आप लोगों के यहाँ यूज होता है ये टर्म जज्बा? जज्बा होना चाहिए. बिल्कुल. अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो नियरेस्ट ट्रांसलेशन विल बी जज्बा. जज्बा. तो ये जो ग्रिट है, so that is that जज्बा in us कि अगर आपको इनोवेटिव माइंडसेट है तो जज्बा हिंदी वर्ड नहीं है पंडित जी. हाँ नहीं, जज्बा हिंदी वर्ड नहीं है, ये तो थोड़ा सा पर्शियन की तरफ चला जाता है. हाँ, तो हमारे अंदर जैसे है कि एक बहुत ही हिंदी वर्ड इसका क्या हो सकता है जो संस्कृत प्रधान वर्ड जो है, चलिए सोच लेंगे उसके बारे में तब तक. जोश में भी नियर टू दिस. उमंग, जोश अगेन इज उर्दू. हाँ, जोश इज आल्सो उर्दू. साहस. उमंग. साहस, उमंग. उमंग, उत्साह. धैर्य होता है, धैर्य. इट इज धैर्य. धैर्य, पेशेंस है भाई हिंदी. ये फिक्स माइंड ही तो अभी पढ़ा रहे हैं, माइंड ओपन होना चाहिए, जज्बे को एक्सेप्ट किया जाए. बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ परसिवरेंस एंड यू परसिस्टेंस, परसिवरेंस, something like that. Yes, sir, absolutely. So basically, we are persevering also, we are persisting also. So basically, we have this grit, we have this strength, we have this resilience in us that कि हम लोगों को तो ये कर ही देना है. एक हमारे मन में उद्देश्य है कि हमको ये कर ही देना है. We have to do it, no matter what. तो अब हम लोग एक छोटा सा साइकोमेट्रिक फिर से करेंगे. यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं. सो अब यहाँ पर आपको अग्री और डिसएग्री करना है. यहाँ आपको अग्री और डिसएग्री करना है. 8 क्वेश्चन है आपके पास. आप या तो अग्री कर जाइए या डिसएग्री कर जाइए. तब तक मैं जज्बा का हिंदी शब्द जोड़ता हूँ थोड़ा सा. दूसरे वाले में तो डिसएग्री होगा. होम फ्रंट पे. तो लिमिट मत करो भाई. Agree, disagree. Whatever you agree. Straight message, even though I have to agree. And that doesn't agree. I can even some agree, even though everything never agree. But not is something. ये तो सारा agree है भाई. इसमें कैच है बस वही कि एग्री डिसएग्री सब हो सकते हैं. डिसएग्री करने का मन कर रहा है बट वो अंदर से जो जज्बा है वो करने नहीं दे रहा. मणि होम फ्रंट पे तो सारे डिसएग्री हैं. नहीं वो तो खैर ठीक है, लेकिन कई सारी चीजें हैं जिसमें कि आप डिसएग्री करना चाहोगे भी तो आप कर नहीं पाओगे. All eight agreed from my side. बिल्कुल. All are agreed. All agree. 1 to 8 agree. All agreed. Okay. कुछ चॉइस है, कुछ मजबूरी है. या कुछ चॉइस है, कुछ मजबूरी है. हाँ बिल्कुल कुछ चॉइस है, कुछ मजबूरी है और करना तो है ही. करना तो है ही.
फाइनल ज्यादातर चॉइस ही है, एक हो सकता है कोई कैसे तैसे, बट ओके अब इंडिविजुअल। इसका जो स्कोरिंग पैटर्न है कि जितने अग्री हैं उस पे आप अपने आप को 3 पॉइंट दे दीजिए, जितने डिसअग्री हैं उस पे आप अपने आप को 1 पॉइंट दे दीजिए। 8 तरीके 24 24 24 ओके ओके 2 मार्क्स हो गए। चलिए सर, आप लोग बहुत हाई ऑन ग्रिड है तो ये हमारा ग्रिड का स्केल है। तो 0 जो है वो हमारा 0 तो वैसे स्कोर नहीं है, 8 होता है मिनिमम। तो मतलब 8 इज लो ऑन ग्रिड. There are some situations where you shine and radiate confidence. However, you may be unwilling to challenge these comfort zones into something new. तो ये आपका ग्रिड है. हाई ऑन ग्रिड होता है कि you embrace whatever challenge life throws at you with enthusiasm and as an opportunity to grow. You have a goal of mastery in whatever you want to do. Be careful about how you use your grit. Overuse in the wrong area could change your score. So I'll give you a minute to read both these definitions, low on grit and high on grit, and then we can start a discussion around this. यहाँ पे जैसे लो ऑन ग्रिड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है विच इज द कंफर्ट जोन. देखिए कंफर्ट जोन्स ये इसमें हाईलाइट भी किया हुआ है. तो व्हेन आई से कंफर्ट जोन्स, इसके बारे में आप लोगों को क्या विचार है कंफर्ट जोन के बारे में? So low on grid में like there is a very interesting term comfort zone. In our parlance, basically just to go by the precedence as it is. Status quo, maintenance of the status quo, you can say. We will go as it is. We just like to go as it is. Okay, fine, done by हो रहा है, होने दो इसे. चलता है, चल रहा है, चलने दो, चल रहा है, चलने दो. काम चल रहा है, चलने दो, जैसे चलता है चलने दो. हम लोग ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो ही जाएगा. ये वो है कि हम इसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं. बेसिकली वी डोंट वांट कि उसमें कोई चीज भी चेंजेस आए. बेसिकली ये कंफर्ट जोन वही हुआ कि जैसी चीजें चल रही हैं उसको चलने दिया जाए. क्योंकि अगर आप उसमें सोचेंगे इफ यू वांट टू डू समथिंग, अगर कुछ उसमें ऐड करना चाहेंगे तो आपको कुछ करना पड़ेगा. यू हैव टू थिंक और थोड़ा सा उसमें आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो कि आदमी नहीं करना चाहता है. वहाँ इनको और भी ज्यादा नरिशमेंट मिल जाता है. यस, तो बिल्कुल बने रहो पगला, काम करेगा अगला. ताली हो जाए सिंह साहब के लिए. तो यही कंफर्ट जोन है. तो कंफर्ट जोन में हम लोग अटक जाते हैं, तब होता है हमारा रेजिस्टेंस टू चेंज. जैसे you must have heard of this term before, resistance to change, resistance to innovation, resistance to grow, resistance. तो ये जो रेजिस्टेंस आता है, ये तब रेजिस्टेंस आता है जब हम लोग अपने कंफर्ट जोन में सेटल हो जाते हैं. हम लोग अपने विश्राम की मुद्रा से बाहर आना नहीं चाहते हैं. हम अपनी विश्राम की मुद्रा में आराम कर रहे हैं. तो दैट इज वेयर हमारा इनोवेशन थोड़ा सा कम हो जाता है. लेकिन अगर आपके पास आपका जज्बा स्ट्रांग है, आपका जो पैशन है, आपका जो जुनून से कहते हैं जुनून, जैसे अगर आप लोगों का ग्रिड हाई है, इफ यू हाई ऑन ग्रिड, दैट मींस लाइक यू विल बी एबल टू चैलेंज योरसेल्फ इन एवरी काइंड ऑफ अ सिचुएशन. एंड दिस फैक्टर ग्रिड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनोवेशन टू हैपन. अगर आप किसी चीज से इंस्पायर्ड हैं, लेकिन आपको आइडिया लेकर आना है, आखिर आप इंस्पायर हो गए, आपने आइडिया भी ला दिया, लेकिन उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके अंदर जज्बा, मतलब जुनून होना बहुत जरूरी होता है. क्योंकि बहुत सारे आइडियाज आप लोगों ने देखा होगा, फोर्सेस में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे आइडियाज ऐसे होते हैं जो लोगों के दिमाग में होते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं आ पाते. आप लोगों ने देखा कभी? मतलब बहुत सारे आइडियाज हैं हम लोगों के पास आए, लेकिन हम लोगों के इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए. And this happens in the corporate sector very often. I mean, people come up with ideas, मतलब जोश में सब लोग आइडियाज लेकर आ जाएंगे और अच्छे आइडियाज लेकर आएंगे. ऐसा आइडिया नहीं है कि अच्छे आइडियाज लेकर आते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रहे. त्रिपाठी साहब, आप कह रहे थे अभी जुनून की बात. तो जुनून तो तब आता है जब काम आप अपने इंटरेस्ट का कर रहे हैं. तो अभी कुछ देर पहले पार्टिसिपेंट्स भी बोल रहे थे, वो 8 जो आपने साइकोमेट्रिक क्वेश्चंस दिए थे कि अब मजबूरी है, करना तो है ही.
तो अब आप समझ सकते हैं कि जुनून कितना है। हाँ सर, नहीं वो तो होता है कभी कभी, जैसे व्यवस्था हो जाती इसमें अगेन वन एक माइंडसेट है, एक बार जुनून का वो भी एक है, क्या बोलते हैं आपको कि करना तो है ही है, वो एक इश्यू है। जब हमको ये एक माइंडसेट हो जाता है कि भाई करना तो है, तब तो चलो विथ ऑल पैशन एंड ऑल डेडिकेशन लेट अस डू इट, क्योंकि करना है ही है, देयर इज नो ऑप्शन। तब भी आपको अल्टीमेटली कोई ना कोई थोड़ा बहुत जुनून तो पैदा हो ही जाता कहीं है। ना कहीं से तो जुनून पैदा हो ही जाता है सर। अब तो यही कहना पड़ेगा, आपके जज्बे को सलाम है। तो जज्बा। सर थैंक यू। चौधरी साहब क्या बात है, क्या बात है। कहीं ना कहीं से हम लोग जुनून पैदा करके ही छोड़ेंगे, मजबूरी में भी हम लोग, विवशता में भी हम लोग जुनून लेकर आ ही जाएंगे, जज्बा लेकर आ ही जाएंगे। और ये बीएसएफ की खासियत है, बीएसएफ की यही विशेषता है कि आप लोग जज्बा हर जगह लेकर आ सकते हैं। और यही जज्बा जो है ये बॉर्डर्स को सिक्योर रखता है, जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनको सिक्योर रखता है। फोर्सेस में भी हमारी आर्मी जो है जुनून को हम लोग कमिटमेंट से कंपनसेट कर देते हैं। किससे कॉम्पनसेट कर लेते हैं सर? कमिटमेंट से। अच्छा, क्विकमेट से। ओके। फिर ये लगता है कि अपना कुछ है ही नहीं, अपनी चाहत अपनी ख्वाहिशें दफन, और फिर जो आगे टास्क है उसको करना है। नहीं सर, नहीं सर, हम लोगों को अलाइनमेंट बिल्कुल सही, मेरे मन की बात को वो बिल्कुल शब्दों में बयान कर दिया है। नहीं वही है कि ना, जिव्या पे आज मन की बात आ गई। तो नहीं वो तो ऐसा मन की बात वो तो होता है कभी कभी। जैसे हमारा जो हम लोग जो करना चाहते हैं, अपनी मन की इच्छा होती है, वो ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस की वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। इसलिए हम लोग, जैसे हमारे जब लाइव वर्कशॉप्स होते हैं, तो हम लोग ये बताते हैं कि हाउ यू कैन क्रिएट एन अलाइनमेंट, कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं और आपके जो पर्सनल गोल्स हैं, ये जितने ज्यादा अलाइन होंगे एक दूसरे के साथ, जितने ज्यादा नियंत्रण तो इज नॉट द राइट वर्ड, मतलब है जितना ज्यादा इनके बीच में अलाइनमेंट होगा, जितना मतलब है इनके अंदर मतलब है कम्युनिकेट वेल होंगे, उतना अच्छा आपका ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगा। इसलिए हमारे पर्सनल गोल्स को, हमारी पर्सनल इच्छाओं को, हमारी पर्सनल चाहतों को हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करना, ये एक लीडर की तरह आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। आप जैसे मतलब है, अगर एक लीडर मतलब है कि अगर अलाइन नहीं कर पाता है अपने गोल्स को, तो उसके जो नीचे वाले लोग हैं वो तो अलाइन कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है एज ए लीडर कि आप लोग अपने लोगों के, अपने जवानों के जो गोल्स हैं, अपने ऑफिसर्स के जो गोल्स हैं, उनको आप अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ अलाइन करके रखें। सो व्हेनेवर दिस अलाइनमेंट हैपेंस, मैजिक हैपेंस। सो yeah, so coming back to the innovative mindset, so grit is a very important factor. Jasba, yeah, is a very important factor in creating that that need for inspiration, that motivation to come up and implement new ideas. So that is another thing. Okay, so and the last point here is being positively destructive. अब जैसे अब हम लोग यहाँ पे, दिस इज स्लाइटली कंट्रोवर्शियल, क्योंकि यहाँ पे मतलब हमारे पास काफी ओपिनियंस आते हैं when I use the word destructive. So what comes to your mind when I say the word destructive? Do you think destruction is important? For creation, destruction is important. For creation, destruction is also important. जैसे जैसे हमारे पुराणों में भी ब्रह्मा विष्णु महेश, तो मतलब है कि डिस्ट्रक्शन मतलब है संहार करना भी आवश्यक है। अगर संहार नहीं होगा तो नई सृष्टि का सृजन नहीं होगा। अगर this page number 293, is it positive disruption? Is it destruction or disruption? It is destruction here. Okay, so maybe like there is a misprint out there. So like we'll get it clarified. We'll get it clarified. Okay. We'll get it clarified. But I mean, basically here, like, you know, disruption and destruction, like there is like a thin line that divides destruction and disruption. So basically like what we're talking here is that we actually get rid of the old things. Yeah, and we come up with new ideas in case like something is not working. Yeah, so disruption is something like when, you know, when we bring in a completely new technology, when we completely bring in like a new idea, which kind of puts in aside the old practices. For instance, Uber जैसे हमारा ओला उबर, ये सारी ये जो टेक्नोलॉजी आई थी, इसने हमारा जो एक बहुत ही बड़ा डिसरप्शन पैदा किया था
जो हमारा कैब सर्विसेज मार्केट में, हमारे टैक्सी मार्केट में इन्होंने बहुत बड़ा डिसरप्शन पैदा किया। पहले जो लोग टैक्सी के लिए, ऑटो के लिए हम लोग ऑटो 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 टैक्सी 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 किया करते थे, अब हम लोग नाउ ऑटो एंड टैक्सीज आर एट अ फिंगर टिप्स व्हेन वी यूज उबर। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कि बेसिकली लाइक जो ओल्ड प्रोसेसेस हैं जो हमारे चल नहीं रहे हैं, उन ओल्ड प्रोसेस के साथ शुड वी हैंग ऑन टू द ओल्ड प्रोसेसेस व्हिच आर नॉट वर्किंग, और शुड वी ट्राई टू कम अप विद समथिंग न्यू? वी शुड किल द प्रोजेक्ट्स। जैसे एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक टर्म होता है, किल द प्रोजेक्ट। Have you heard of this term before? Like, kill the project, kill the product. Yes, about the project, I mean to say that project to be closed and new project to be started. Shelve it. When there is a failure, a particular project has been failed, or reasons has been identified, and if those reasons are not addressable, in that case, that project to be killed, that project to be aborted, and new project in that place will be initiated. To be started. So that is the concept that I have heard. I have gone through the case study. So Right. Yeah, and absolutely, Chaudhary Saab, that is exactly what we're talking about here. This कि कभी-कभी जो projects होते हैं या projects होते हैं या products होते हैं, they become a liability instead of an asset. Liability in the sense कि मतलब they start eating into our own resources rather than producing results for us. अब जैसे how do we grow our wealth? अब ग्रोइंग वेल्थ का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, इंक्रीज योर एसेट्स रिड्यूस योर लायबिलिटीज। आपका मार्जिन बढ़ता चला जाएगा। अकाउंटिंग का ये फॉर्मूला होता है कि आप अपने एसेट्स बढ़ाइए, अपनी लायबिलिटीज कम करिए। उसी तरह से मतलब है प्रोजेक्ट्स में भी, प्रोडक्ट्स में भी ये फॉर्मूला होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट, कोई आपका प्रोडक्ट है या आपका प्रोसेस है या आपका प्रोजेक्ट है विच इज नॉट रीपिंग द राइट रिजल्ट्स, देन इट इज टाइम दैट वी गेट रिड ऑफ दैट प्रोजेक्ट and we replace it with something different. We replace it with something different which is more efficient. Yeah, so we are creating, so although like we are destructing something, but we are creating a positive destruction around it. This is positive destruction. So basically we're not dropping a bomb somewhere, we are just destroying a process or a project which is not being useful, and we are replacing it with something which is more worthwhile. And that is very important for an innovative mindset कि हम लोग जैसे what we do is, एक innovator जो होता है ना, so he or she gets fixated with an idea. ये प्राइवेट सेक्टर में बहुत होता है, खासकर लाइक व्हेन आई टेक एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस, तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, तो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग अपना जो आइडिया है मतलब इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि उसको पकड़े रहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। लॉस पे लॉस होता रहता है, लॉस पे लॉस होता रहता है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो इतने इमोशनल हो जाते हैं कि दिस इज माई आइडिया, दिस इज माई बेबी, मेरा बच्चा है भाई, मैं इसे नहीं मार सकता। तो वो वाली बात आ जाती है। लेकिन एन आइडिया इज नॉट अ बेबी, that is something that we have to understand. An idea is not a baby, an idea is an idea. An idea may work, an idea may not work. इसलिए जो idea does, if an idea doesn't work, or project doesn't work, a product doesn't work, it is always advisable to replace it. And when we have that kind of a mindset that we can get away with the things which are not productive, we will be able to innovate. So, हाँ जी sir. बैठो यार, please sit down. ओके, तो अभी एक थोड़ा सा हमारा एक यहाँ पर हमारी एक्टिविटी है, छोटी सी एक्टिविटी, फन एक्टिविटी है। तो कैन यू करेक्ट दिस इक्वेशन विदाउट मूविंग दीज स्टिक्स? आपको जैसे ये देखिए, ये लकड़ी है। हाँ, ऑनलाइन क्या लोगे, चाय कॉफी? चाय लेंगे, चाय कॉफी मंगा दो भाई। सॉरी लेंगे चाय। नहीं, चाय की बहुत जरूरत है भैया, इस सेशन खत्म हो जाएगा फिर चाय लेंगे जाके। तो अच्छा सर, ये थोड़ा सा आई एम सॉरी। अरे नहीं, ये सब मजाक हो रहा है सर। चलो सॉरी होगा तो सूप पिला दो। तो सर अब इसको हम लोग करते हैं कि ये हमारा, अब हमें लकड़ी नहीं उठानी है, लेकिन हमको ये पूरा इक्वेशन को ठीक करना है। इसको देखिए, ये लकड़ियां हैं, हम लोगों को कुछ चेंज नहीं करना है, हम लोगों को बस इसको ठीक करना है। इसको देखिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा हम लोग इसको रीअरेंज करना है या? हाँ नहीं, इसको ये
मतलब है कि ये हमारी एक इक्वेशन है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, आपको कुछ नजर आने लग जाएगा, इसमें कुछ नंबर्स आपको दिखने लग जाएंगे। 11 + 1 = 10 है। हाँ, 12 हो जाएगा। तो ये आपको ठीक करना है सर, लेकिन आप इसमें से कुछ लकड़ी उठा नहीं सकते हैं, ये लकड़ियों से बना हुआ इक्वेशन है, आप इसमें से कोई एडिशन डिलीशन रीअरेंजिंग नहीं। हाँ, कोई रीअरेंजिंग नहीं है, आपको बस इसको ठीक करना है। तो कहने का मतलब कि सोच ठीक करनी है। हाँ नहीं, फिर तो अगर इस तरह ठीक करना है बिना रीअरेंज किए, बिना अल्टर किए, तो आप जो भी नंबर एक्स को बताएंगे मैं मान लूंगा वही नंबर है। नहीं सर, तो सोचिए ना सर, इसको थोड़ा सा इन्वर्ट कर दें, 9 हो जाएगा 11। नहीं, x की जगह Without यहाँ adding- माइनस लगा दें, यहाँ माइनस लगा दें, Without adding anything. इक्वल टू x। इसमें जैसे हम लोग जैसे देखिए ये लकड़ियां बनी, माइनस चाहिए, माइनस। दो लकड़ियां, ये लकड़ियां ऐड भी नहीं करना है और हटाना भी नहीं है, तो फिर उसके हिसाब से सोचो ना, मतलब हाँ, इसमें जैसे ये लकड़ियां हैं, लकड़ियों से हम लोगों ने इक्वेशन बनाया, हम कोई लकड़ी हटा नहीं सकते हैं। लैपटॉप से ऊपर से देखो, लकड़ी को लेफ्ट साइड कर दो, लैपटॉप के ऊपर से देखो, जो अपसाइड डाउन पूरी इक्वेशन। एग्जैक्टली। जागीर साहब बोल रहे थे ना, जागीर साहब? यस यस, एग्जैक्टली। तो इसका ये है कि हम लोग इसको उल्टा कर देंगे। तो हम लोगों ने लकड़ी हटाई नहीं, हम लोगों ने इक्वेशन को उल्टा कर दिया। तो नहीं, बट चेंज तो हो गया, रीअरेंज तो किया फिर इसको। नहीं, हम लोगों ने नहीं की ना सर, हम लोगों ने स्टिक्स नहीं हटाई ना, हम लोगों ने बस इसका वो है कि हम लोगों ने पूरा इसको है कि हम लोगों ने इसको घुमा दिया, 360 डिग्री घुमा दिया, हम लोगों ने स्टिक्स नहीं बदली। ये शीर्षासन करना पड़ा इसके लिए। ये देखिए ना सर, ये कि विदाउट हम लोग स्टिक्स हम लोगों ने मूव नहीं किया, हम लोगों ने बस इसको घुमा दिया, हम लोगों ने दूसरे पर्सपेक्टिव से इसको देखा। तो देखने का एंगल है। हाँ, बस इसका देखने का एंगल है कि हमारा जैसे 11 + 1 = 10 हो रहा था, अब हमने उसको उल्टा घुमा दिया, तो 10 = 1 + 9। ठीक है, मैं आपका ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखने के एंगल में जो इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं ना, ये बायस कर देते हैं आपको। अगर पिक्चर आप दिखाते तो शायद हम इसको इधर उधर से कर देते। जो आपने कंडीशंस लगाई ना, वो आपका थॉट प्रोसेस जो है ब्लॉक कर दी। एग्जैक्टली, इसकी लिमिटेशन में ही सोच रहा हूँ कि इसको कैसे रीअरेंज कर, मतलब कोई अल्टर करना है, कोई डिलीशन नहीं, कोई एडिशन नहीं, कोई रीअरेंज नहीं, तो मैं फिर इन्वर्जन भी नहीं थॉट ऑफ कर पा रहा था। नहीं, हमारे हिसाब से तो इसमें तो चेंजेस हो गए ना फिर। हमारे हिसाब से चेंज, क्योंकि इन्होंने कंडीशंस जो दी थी वो नहीं, कंडीशन आप नहीं होती है, ये बोला नहीं, आप जो पहले वाली इक्वेशन को अपने कागज पे लिखो, अपने टेबल पे रखो, अपनी चेयर को उस टेबल के पल्ली साइड से आगे देखो। अभी अरे नहीं, जगीर आपकी बात बिल्कुल सही है। कहने का इस क्वेश्चन से कहने का उसका उनका मतलब ये है कि किसी भी समस्या को, किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए यू हैव टू सी दैट प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। अरे वो अदर साइड ऑफ द टेबल इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस। नहीं जगीर, वो बात तो मैंने शुरू में ही बोल दी थी कि यहाँ पे सोच की का ही इश्यू है। लेकिन अगर हम इस दोनों इक्वेशन को पहले देखें, 11 + 1 = 10 था, उसके बाद में 10 = 1 + 11 है। तो अगर ऐसे देखने की बात है तो इसमें तो चेंजेस तो हुए हैं, बट जो कंडीशन रखी गई थी उस कंडीशन में ये चीज फिट नहीं बैठ रही है। देखने वाली बात तो हमने पहले ही बोल दी थी कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, इसको किसी दूसरे तरीके से देखना है। बट जो कंडीशन था कि वो शिफ्ट नहीं होना है, तो अगर हम दोनों इक्वेशन को अभी देखते हैं, मैंने लिखा है इसको अभी पेपर पे, दोनों में डिफरेंसेस है। आप इसी के नीचे दूसरे इक्वेशन को पहले वाले को अगर आप रख करके देखते हैं तो दोनों इक्वेशन में फर्क है। गणित के बजाय आप कला संकाय विद्यार्थी की तरह सोचते तो ये शायद इसका समाधान निकल जाए। सिंपल उसमें कंडीशन उन्होंने बताई थी कि जो मास्टर की तीली है वो रखी हुई है, उसको आपने हटाना नहीं है, बस इसका इक्वेशन को ठीक कर लो, बस। दिस वाज सिंपल स्टेटमेंट। नहीं एक्चुअली क्या होता है ना कि ये नहीं, वो साथ में इक्वेशन भी तो बोला था ना भाई। अब इक्वेशन तो आदमी उसी हिसाब से चलेगा। 10 = 1 + 11, तो 11 + 1 = 10, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल? नहीं वही नहीं, आपकी बात एकदम सही है। तो ये जो कंडीशन जो होते हैं ना, तो ये हमारे मेंटल ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं, तो हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाते हैं। यस।
हाँ, तो ये सारी चीजें होती है कि हम लोग जैसे है कंडीशंस में ही सोचते हैं, हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाते। चलिए सर, एक चीज नहीं, आपने ये गवर्नमेंट सिस्टम की प्रॉब्लम दे दी। गवर्नमेंट सिस्टम में टारगेट कुछ और होता है, इंस्ट्रक्शन कुछ और होता है, एक्शन कुछ और होता है। ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया तो समझ में आ गया कि वो उसकी वजह से ही हमने फिर क्वेश्चंस रेज किए, और अदरवाइज केवल सिंपल पिक्चर होती तो कोई बात नहीं। चेंज की तो जो मणि बोल रहा है, मैं एग्री करता हूँ कि चेंज तो है इसमें। अगर समझाने के हिसाब से आपने दिया हुआ है तो फिर ठीक है। What you say right has been achieved. right so anyways like the purpose has been achieved। तो फिर हम लोग समझ गए कि मतलब है कि अगर हम लोग जैसे है कि सिचुएशन को घुमाकर देखें तो वो जैसे वही है कि अगर हम लोग नंबर 6 देखेंगे तो एक तरफ से देखेंगे तो हमें 6 दिखेगा, और दूसरी तरफ से देखेंगे तो हमें 9 दिखेगा। हाँ, तो वही अगर हम लोग सिचुएशन को थोड़ा सा घुमाकर देखें तो हम लोगों को लगेगा कि अगर जैसे ये है कि अगर पुराना प्रोजेक्ट है, अगर इसको हम लोग मतलब है कि इसको अगर हम लोग दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो हम लोग एक प्रोजेक्ट को खत्म भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या होते हैं, जैसे वी गेट सो फिक्सेटेड अबाउट आवर आइडियाज। ये मतलब फोर्सेस में इतना नहीं होता है, बीएसएफ में जैसे मेरी तो चर्चा होती रहती है आप लोगों के साथ, तो ये बीएसएफ में उतना नहीं होता है, ये प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा होता है कि पीपल गेट फिक्सेटेड अबाउट देयर आइडियाज एंड दे आर नॉट रेडी टू मूव अहेड। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मूव फॉरवर्ड, we move forward and we make that positive change by kind of letting go the loss making projects and by embracing the more profitable projects। और यहाँ पे loss of profit जो है आपके मतलब है कि in the terms of BSF it is not money, it is in terms of like improving the processes, making the things better, making the borders more secure। तो आप लोगों के जो KPIs हैं, key performance indicators हैं, वो अलग है। आप लोगों के जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, दे आर स्लाइटली डिफरेंट, लेकिन फंडा वही रहता है कि जो काम मतलब है अगर कोई प्रोजेक्ट है इट इज नॉट रिपिंग द राइट रिजल्ट्स, वी गेट रिड ऑफ दैट। सो इनोवेशन के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। द थिंग्स व्हिच आर नॉट वर्किंग वी डोंट गेट इमोशनल अबाउट दैट, या सो वी एम्ब्रेस पॉजिटिव डिस्ट्रक्शन। So these are the 5 things in order to build an innovative mindset। Like the first is openness, second is agility, third is like being analytical कि हम लोग एक root cause analysis कर रहे हैं, चौथा है हमारा जज्बा कि हमारे अंदर कितना जज्बा है, कितना रोष है, कितना जुनून है, and finally like we are being positively disruptive। I mean यहाँ पे destructive होना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, we'll get this corrected। Okay, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, now we are going to take a look at a video। तो ये थोड़ी सी लंबी वीडियो है और लंच पे जाने से पहले हम लोग ये वीडियो देखेंगे और फिर उसके बाद 5 मिनट इसके ऊपर चर्चा करेंगे, फिर हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, एक हम लोग वीडियो देखेंगे और उसके बाद हम लोग 5 मिनट इसके ऊपर चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग विल क्लोज फॉर लंच। ओके, तो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन डिफरेंटली। आप लोग ये वीडियो देखिएगा, ये मजेदार वीडियो है। On this planet are human. These causes. But there's a big global health problem. Oh, about the biggest global. So how much do you know about the biggest global health problems affecting our world? Arvind, you need to reshare with checking the sound box. Some of you might be running towards these causes. Arvind? That's really recognized term. Nothing. Caused by I'll just stop it. Yeah, you need to reshare it with checking the sound. I mean, because it's just getting the laptop sound. Okay. Audio is not clear. Audio is not clear. Okay, yeah, so how do I do that? When you share, click on share. अभी तुम share. Click उससे बात कर ले, हाँ. Click on share and there at the bottom there would be a checkbox for sound. Just click that. Just check that. Share so why? Sound. Yeah. नहीं हो गया। Okay. So how much do you know about the biggest global? अब ठीक है? अब ठीक आ रही है आवाज? Yes. Health problems affecting our world.
Most of us are familiar with the plight of HIV, TB, malaria. Some of you might have even given money towards these causes. But there's a big global health problem that doesn't really receive the recognition that it deserves, and that's anemia, caused by a lack of iron in the diet. And more than 2 billion people on this planet are anemic, largely women of reproductive age and their children. Anemia has serious consequences for human health and socioeconomic development. If a woman is anemic during pregnancy, she's at increased risk of hemorrhage during childbirth. Her children have increased susceptibility to infection. They have deficits in mental and physical development, and it leads to decreased energy capacity in adults. In fact, hundreds of billions of dollars are lost every single year as a direct result of anemia in the workplace. The standard treatment for anemia is iron supplements, either in the form of pills or powders that usually need to be taken every single day. And they're not without their consequences. There's many side effects, and people tend not to like taking iron supplements, and as a result, compliance is typically quite low. In addition, they're often quite expensive and far out of reach for hundreds of millions of people that need them the most. And so I've devoted my adult life to trying to change that, to trying to make treatment as accessible as possible around the world. After finishing my undergraduate degree in health science in Canada, I took a bold step and I moved to Cambodia. I packed my dorm room up into a suitcase and I traveled 14,000 kilometers to the hot, dusty, and crowded streets of Phnom Penh, the capital of Cambodia. I quickly moved to a remote rural village. There were about 800 people that lived in my village, and almost all of them subsisted on rice farming or fishing in the lakes and rivers that dotted the landscape. I moved into a typical Cambodian hut, much like the one shown here. It was raised off the ground about 10 feet with a simple slatted bamboo floor and walls and a tin roof that roared when the rain fell. I was the only foreigner to live in my village. I was the only English speaker, the only one with an education past grade 9, and I was the only health professional that had ever stepped foot in the area. My job at the time was to screen for anemia and treat parasitic infections as I came across them. Every day after working in the villages, I used to come home and I'd quickly bathe in the river, eat a simple Cambodian meal of fish and rice, and then escape as quickly as possible to the confines of my bug net. The mosquitoes in Cambodia were truly atrocious, and I come from Canada. I mean, I know bugs, but there was no way to describe it. So I typically spent 7 p.m. until 7 a.m. beneath that bug net. I brought an iPod with me to Cambodia, and this is back in the day. They didn't last very long, and I only had about 30 minutes each and every night, no more and no less, to listen to some music and get a little bit of an escape from reality. And I even lined up the song so that I could avoid skipping the track and using that extra little bit of battery life. So I usually made it until Sunday, and then at that point, I would travel to a neighboring town where I could charge my batteries, eat a more substantial meal, and shower for the first time that week. All that time spent underneath the bug net did, however, have some positive aspects to it. Namely, I was able to think, and I thought a lot. And despite my best efforts, my thoughts always traveled back to the reality that I was living in, to the different health problems that existed in the village that I was working in, and to what could possibly be done about them. So as I mentioned, my goal at the time was to look at how common, how prevalent anemia is in those communities. And so I purchased a centrifuge, 1980s era, from a hospital auction, and I hooked it up to a car battery. I then took blood samples from the neighboring villagers, and I was able to quantify the problem. The best national estimate suggested that a little over 50% of women and children in Cambodia would be anemic, but I was actually finding rates closer to 90%. So as the summer wound down, I knew that I couldn't just uncover the enormity of this problem and then walk away. I had scheduled to be in Cambodia for about 3 months, and then I was supposed to go back to Canada to start a master's in neuroscience. And I took a bold move about a week before I was supposed to leave. I called up my supervisor back home, and I said I wasn't quite ready to leave just yet. As I say, I couldn't uncover this enormous problem, write a report that no one was going to read, and then walk away. I had to keep working. And to my surprise, my advisor was actually very supportive of the project and actually encouraged me to ditch those rat-based experiments in the lab that I had no interest in doing anyways. I mean, we both knew it, and to stay in Cambodia and to try to find a solution.
When I moved to Cambodia, I had no idea how dire the situation would actually be. Everywhere I went, people were laying in every inch of shade that they could find. No one had any energy. No energy to work, no energy to play, no energy to learn. And iron is essential in the development of the human brain and body. And what I found was that the children who were raised anemic had no ability to sit in school and concentrate. The other hidden consequences of anemia were a little bit harder to appreciate at first, but I did uncover them over time. In the village that I was living in, scores of women had suffered significant hemorrhage during childbirth directly as a result of anemia. A handful of people in the neighboring area had even died. In science, we often learn that the simplest answer is the best, but that concept tends to get forgotten in real life. And so I charged myself and those around me with finding a solution to the problem, a simple solution, one that would be cost-effective, one that would be environmentally sustainable, and one that would be accessible to even the most remote rural villagers. And so I began poring over medical journals, and eventually I had a breakthrough one day. I discovered a series of experiments that looked at the use of iron cooking pots as a way to treat anemia. The concept is really quite simple. If you cook food in an iron cooking pot, some of the iron leaches from the food and fortifies each and every meal. So in theory, we had a really great treatment option here, but in practice, it didn't quite work out. Iron pots are expensive. They're heavy. People don't really like to use them. And on top of that, in the developing world where people don't have access to drawers of Tupperware, people who cook food typically leave it in the cooking pot overnight until it's eaten. If you leave food in an iron cooking pot, it spoils. And so I thought there must be a way to add iron to the cooking pot, and then the iron could then be removed. The iron needed to be added to any type of cooking pot, whether it be the aluminum ones like they use in Cambodia, whether it be clay or steel. It had to be cheap, it had to be effective at releasing iron, and it had to be environmentally sustainable. And so, the lucky ironfish was born. And here it is. We started off with a few different prototypes in the early months. It didn't always end up as this iron fish. First, we started off with an iron bar, a plain iron bar, and it did tick all the boxes. It was cheap and it was effective. It did release lots of iron, except there were huge problems with it. Everywhere I went, different families had found some use for it, just not in the cooking pots. People were using it as a doorstop, as a paperweight, even to prop up a table with a broken leg. I mean, I saw everything. So then I moved on to a disc, something that was a little bit more attractive, maybe ease some concerns that the iron bar might harm people's cooking pots, but it still didn't really make sense. So, next idea, how about a lotus flower? Lotus flowers are something that are commonly seen all over Cambodia. They're associated with different Buddhist scriptures and with spirituality, and so it sort of made more sense in the cultural context. Of course, it didn't make any sense at all when it comes to cooking. You wouldn't put a flower in a cooking pot. So next idea. Finally, fish sprang to mind. Cambodia is a country that relies entirely on fish. The mighty Mekong River that dominates the countryside provides a livelihood and food source for millions of people. Fish is typically eaten at almost every meal, certainly every day, and the underlying flavor to almost all Cambodian dishes is a type of fish paste called prahok. So it's essentially made by taking sardines and grinding them up, heavily salting it, and then laying it in the sun for days to weeks on end in order to ferment and acquire this distinctive flavor. I'm sure you can imagine it's an acquired taste. And so I knew that fish made more sense. And interestingly, fish in Cambodia also are associated with luck. And I finally had something. So I tried a few different iterations of the fish design. The first was too big, the second was too bulky. The third, well, it was a little bit ugly. And so we had to keep reeling and changing the design over and over. And eventually we landed on this particular species of fish that's called tricantrop in local dialect. We slapped a cartoon-like smile on the fish, and we had an instant success. Understanding the human link here was key to solving this problem. Scientists often work in silos, and we tend to forget why we're doing what we're doing and how it impacts people's lives. And we needed to have a detailed understanding of nutrition, of anthropology, of public health, and of medicine, all within the Cambodian context,
to solve this problem. We had to embrace the complexity of the problem. So the iron fish are made using locally available scrap iron, essentially old car parts. By using these scrap materials, we're confident that we're able to produce a product that's environmentally sustainable. We produce these locally in Cambodia, and by doing so, we also contribute to a fledgling economic development of the country. We could have farmed this out to different companies throughout Asia that maybe had a little bit more experience, but it didn't make sense. It didn't contribute anything to Cambodia if we did that. Now, ascorbic acid, or vitamin C as it's more commonly known, is a well-known enhancer of iron absorption. You see, our bodies are actually miraculous in their ability to regulate how much iron is taken in and how much is expelled. This is how you're able to eat a huge steak meal and not go into iron toxicity. And we know that ascorbic acid, or vitamin C, enhances the absorption of iron. It helps to process it and makes it more readily available in the gut. And so what we do is recommend that people take the lucky iron fish and they use it when they're preparing their boiled drinking water, to which we suggest they add a small amount of citrus juice, just as if you're having a slice of lemon in your water. Alternatively, you could use the iron fish when you're preparing soup. And now soup is something that's typically eaten in Cambodia on a daily basis, and to our advantage is also commonly soured with some type of vitamin C, whether it be citrus juice, tamarind, or even tomatoes. We suggest that people use the iron fish for at least 10 minutes every single day. So to make sure that the iron fish actually worked, we had to subject them to a battery of tests. First, we needed to make sure that they didn't contain any heavy metal contaminants. After we were confident that we weren't going to do more harm than good, we needed to see how much iron was actually going to be released from the iron fish. And so I took a batch of them back to my research lab in Canada, and I prepared several different varieties of soup and water, and then I subjected that to metal analysis to see how much iron was actually being released. And the results were absolutely astounding. We calculated that by consuming just 1 liter of boiled drinking water or soup every day, a person could meet just 75% of their iron requirements. And that's not taking into account any of the iron that might be in the food to begin with. So theoretically, we had an effective solution, but we still had to test to see whether people would accept it. Discoveries are made all the time that promise to save the developing world. In practice, they usually fail. They're usually too technically complex, too expensive, or for one reason or another, people just don't accept it. And so we tested that out. We distributed iron fish, about 400 of them, to 5 different test communities. And we asked women to use them every single day when they were preparing their boiled water or their soup. We took blood samples on day 1 and then every 3 months thereafter, in order to see how the body was responding to the iron that it was being presented. Now, I'll tell you, taking this blood was actually an exercise in patience and dedication. Cambodia is a relatively hot country. I'm sure you're all familiar with what that feels like. And we had to keep the blood as cool as possible. So we had to travel around with big coolers of ice. We also had to make sure that we could get it to the lab for processing as soon as humanly possible. And so every day after traveling by boat or by road across these different villages taking blood samples, I had to then get on the back of a dirt bike with the blood strapped to my back and drive into the capital city and drop it off the lab for processing. And I did the same thing every single day. But the hard work did actually pay off. And in the end, I'm pleased to say that we ended up with a 2-fold reduction in the prevalence of anemia. And better still, we had an over 90% compliance. Yeah, so sorry to cut that short. So how do you think was the case study? I'm sorry to cut that short because we were running out of time. But how do you think was the case study? आप लोगों की क्या विचार है इसके बारे में? यहाँ इनोवेशन हुआ? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही excellent. हाँ, इनोवेशन. It was too good. इंग्रेडिएंट है जो इनोवेशन के And बताए, ओपननेस और एजिलिटी, एनालिटिकल, all component it has. Exactly. और इससे हमारे जैसे इस केस स्टडी से हमारे कितने सारे क्वेश्चंस भी आंसर हो जाते हैं. जैसे हमारा प्रोसेस इम्प्रोवाइजेशन प्लस हमारा इनोवेशन. जैसे हम लोग अनीमिया के लिए क्या करते हैं? अनीमिया के लिए हम लोग टैबलेट्स दे देते हैं, हम लोग एनीमिया के लिए कैप्सूल्स दे देते हैं. तो प्रोसेस इम्प्रोवाइजेशन अगर होगा तो हम लोग कैप्सूल्स में थोड़ा सा और आयरन कंटेंट डाल देंगे. यहाँ पर हम लोग भी केम अप विद अ डिफरेंट आइडिया
कि मतलब है कि खाने में हम लोगों ने एक मछली डाल दी लोहे की, उससे आपका आयरन की कमी भी ठीक हो गई और आपके कॉस्ट, आपके जेब पर भी उतना इफेक्ट नहीं हुआ। तो अभी हमारे पास सिर्फ 4 मिनट है हमारा 1:30 बजे हमारा लंच है। तो उसमें जैसे है कि आई जस्ट वांटेड लाइक, अगर आप लोग एक छोटी सी इंसाइट बता दें, अगर इस केस स्टडी को या फिर इस केस स्टडी से सिमिलर आइडियाज अगर आप लोग बीएसएफ में अप्लाई कर सकते हैं, डू यू थिंक लाइक द लर्निंग्स फ्रॉम दिस केस स्टडी कैन बी अप्लाइड इन द बीएसएफ एज वेल? ये जो छोटा सा उसने इनोवेशन किया और उसने इस इनोवेशन को प्रोसेस में डाला, इस तरह के इनोवेशन हम लोग बीएसएफ में भी कर सकते हैं और कर रहे हैं। हाँ, काफी इस तरह के जो बहुत ज्यादा होते हैं। बिहेवियरल पैटर्न के लिए, पर्सनल फाइनेंस के लिए और करियर बिल्डिंग के लिए हैं, एफर्ट्स हो रहे हैं। So many things, even in the operational field also, so many Yes. innovations has been done in it is like that. Like as Zagir has stated last time, there is an open border. Say there is an open border where there is no fencing, and there is every possibility of infiltration or exfiltration. To protect that, just using the resources, you do not have to have much of fund or much of something very specific resources like that. Only available resources that concertina coil has been put, and that has been restricted to a great extent. So like that, you will find so many examples on day-to-day basis. We knowingly or unknowingly, we used to do that. Exactly. So knowingly or unknowingly, like we are innovating. We are innovating every day. Now it is only the question of developing that strong innovative mindset that like whenever we think about making a process change, like innovation is always there in back of our minds. अब हम लोग innovate करें या ना करें वो हमारे अपने ऊपर बात है, लेकिन हम लोग innovator की तरह सोच रहे हैं, that is the more important thing. And with that being said, I would like to thank you all for a very, very patient hearing. I mean, you were an amazing audience. I just enjoyed the interactions. I just enjoyed the conversations out here. Abhi hum log lunch ke baad, like there is going to be another session with Dr. Kirti Bala. So she's going to be discussing innovation again, but from an organizational culture perspective. Ki basically, abhi to hum log apne bare mein discuss kar rahe the, ki how we can build our own innovative mindset. Iske baad hum log discuss karenge ki how we can actually create this culture of innovation in the organization. तो सबसे तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आई मीन यू वर एन अमेजिंग ऑडियंस। आप लोगों के अंदर बहुत ही जोश, जुनून, जज्बा है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आई रियली एंजॉयड इट। आई होप दैट यू आल्सो एंजॉयड द सेशन। विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद। बिल्कुल मजा आ गया आपसे बात करके। ये सर मजा हमको आया सर। Thank you, Arvind. Thank you so much. So everyone will be going for the lunch break now, and we will return back for the next session at 3 p.m. Thank you for your. All right. So let's begin while some more participants join. Good afternoon, everyone. Welcome back from the lunch break. Some of us are still joining in. We'll wait while Dr. Kirti can build, just the concept of the session. And I'll just talk a little bit about how the day has gone. So today, as I said in the morning, is all about innovation. We started our morning by understanding what it takes to build an innovation mindset. And now we will be moving to the second step and work on how we can actually build, the innovation culture in an organization. To help us more to learn about this topic, we have Dr. Kirti, who we have met before for a session on coaching for solutions. Good afternoon, Dr. Kirti. Good afternoon. I'm really looking forward to this session since in my first session, we couldn't get much time to interact. But I guess now, today I have plenty of time. Yes. Looking forward to it, yeah. Yeah. So I see people have just come up on screen, Dr. Kirti. I think we can begin with the topic. Over to you. All right, thank you. So good afternoon, everyone. I'm hardly able to see anybody. I guess everybody is on off camera.
No, Dr. Kirti, Mr. Kamal, SK Singh sir, Jagir sir, RK Tripathi sir, all have their cameras on now. Oh, okay. Let me recheck these setups. More of them are just coming in. Oh, wonderful. Yes. So good afternoon, everyone. We are meeting, of course, for the second time, and I am really excited for this session because now I have plenty of time. And of course, I'll be talking about building innovation culture. And since morning, we have talked about it, we've been talking about it. So quickly, let's just go through what we have, in the pipeline. So we would be talking about, of course, what stands in the way. That's the major idea about this particular workshop, wherein we will be talking about the enablers of innovation, like how can we get the priorities right, use strength, and of course, action, the preference for action, and getting the entire team right, because those are the key factors when it comes to innovation. And then factors like self-belief, because that basically motivates a person to work. Of course, what are the future actions that we can discuss with the course of this particular workshop. So from here, moving on. So of course, since morning we have talked about innovation, so I would not be asking this question again, but I was really curious to talk about what sort of innovation culture does exist in forces, because of course every organization, every unit has specific ways wherein they can innovate and implement those innovations. But when it comes to forces, we have structured protocols functioning, and the way of moving ahead. So how then in that situation we deal with the innovations? What sort of culture when it comes to innovation exists? So yeah, over to you, the cohort. You can type your answers in the chat box, or else you can unmute and share. The culture is not largely innovative friendly, but it's not restrictive also. So yes, it's not restricted. That means some or the other kind of innovation is there. Yes. But what is that? More of a individual effort and encouragement, yes, from organizational side, but initiative in most of the cases is from the ground realities and the ground commanders. So yes, we do motivate people who actually comes up with new ideas. That's wonderful. And so in general, Singh sir, if I really want to know about what sort of ideas we actually cultivate or motivate for that, we actually appreciate the forces or the people that we actually are commanding. What sort of ideas, what sort of innovative ideas that they come up, and we really appreciate and motivate them to move on? Most of the ideas generally with the routine job which we are doing, from lower formation, generally the policy related or major disruptive ideas, they never come. So what efforts make their life easier, or what efforts they are putting into just get that desired task in the permissible limit of tolerance, that is that failure and success. Right. Yes, that's of course very true. We have to judge the different aspects, and that's how we actually deal with innovation. So when multiple people come with multiple ideas, of course innovation is newness, adaptive, and what value addition we have. So that's something which is key to build that culture of innovation. I would not be talking about it all much, but yeah, I have this very quick this survey here, and I would really like this cohort to answer me. Tanvi, can we please share this on the chat box? Yes, sorry, Dr. Kirti. Thank you. Definitely. So that's very quick quiz that we can all answer, and then we would be talking about, because when it comes to build up a culture, that culture can only be established when the entire team is involved. So when the individuals from the team are really entrepreneurial, they have that innovative mindset,
then only we can, step forward, building up that culture of innovation. So here's that quiz, and you have another 2 minutes. It's a very brief quiz, I guess, 5-6 questions. So I would like you all to please click on the link, and respond for the quiz. You would get your score as soon as you would submit. And then I would definitely want you to, drop your scores in the chat box. So over to you. Jaggees are 66%. That's good. All right, so let's talk about what it means. So, well, of course, this is what our scores tell about our team. So if our score is less than 12, our team somewhere is not very entrepreneurial. If it's around 12, it's medium, and above 10, of course, that's high. So with SK sir's response and Jaggees sir's response, I can definitely see that yes, we are high on entrepreneurial skills. Our team is high on that. So of course we with that score. चश्मा, चार्जर, डायरी, पेन के साथ उस रूम से उठा लें. Okay, so with that score, yes, with that score, we must say that yes, our team are good, having that innovative mindset. So with that team, definitely we can, proceed to build up that entrepreneurial culture. So moving on. So when we have, people who actually have that wonderful innovative mindset and they are functioning as a team, what stands in our way? And to talk about that, I have this question. So wherein I definitely would want to have your thoughts on. So any idea that you or maybe your team proposed, or maybe your team proposed to you that did not succeed? Has that ever happened? Any time when there was any idea that was proposed and that didn't succeed, that was a major failure? Has that ever happened? Would you like to share any such experience? So BSF has a trail of all success stories. Should I have it like that? I am really looking forward for your responses. Any time when it has happened that we had an idea on which we really want to work on, and that didn't work well. I mean, we thought that yes, it would be a wonderful, plan to follow, but because of some or the other reason, we couldn't get the desired result. Has that happened? Any time in your career? Many times, ma'am. And so can you narrate any one such incident, sir? Most of the experiences of operational nature, and failure is part of success actually in operation parlance, you can say. Definitely. So you can't say not 100% successful, but we can't say it's failure also. But that would have been executed in a different way. So the result would be different. So there are instances where we have faced this situation of failure or not successful, you can say. Okay, I'll definitely. And what stood in the way is the time and the resources, basically two factors. So what sort of, resources and time are we really here referring to? Because of course, I do understand resources. Resources, if you count them from vehicle to manpower to equipments to arms to ammunition, there are all sorts of resources which are as per the authorization and scale, but at the time of execution, they were not available due to certain regions which were beyond control, maybe the natural causes or extreme difficult terrain or situations. So they resulted into not getting that success rate. So is it just the time and resource, or? Yes, time is of paramount importance, because if you are not acting within the given time period in off scenario, then you are losing the initiative and it will not be a purposeful event later on if you are executing it. Definitely, sir. We have to actually pay attention to how it has to be. Yes, Sanjay, sir, you raise your hand. Yes.
Sanjay Yes, Tandon, madam. sir. I would like to quote a live example. It happened, approximately 2 years back. I used to be in a formation. I used to be in the HR. So that that was a judgment of the Honorable Court, which was to be implemented, pertaining to career prospects of the officers. It pertained to granting non-functional upgradations to the officers. Say when stagnation creeps in and officers are not getting timely promotions, so they are to be compensated by way of non-functional upgradation, monetary upgradations. So the judgment of the Honorable Court was to be implemented, and we gave, I being in a position, we proposed certain ideas which involved giving us, say, a number of exemptions, which could have brought parity to the officers with respect to other cadres. We have a complex cadre system, this force. So we gave ideas, because you are working in a team, but with multifaceted personalities, then different loyalties. Whatever ideas we propose, it could be on file only. Had those ideas been implemented, it would have gone a long way in granting parity, the long due parity to the officers, which they would have really, the judgment of the Honorable Court would have been implemented in the true spirit. But what happened was, it was irony of the system, or whatever you say. Those things, whatever we had proposed, they were never even considered. The reasons, my colleagues may be knowing better. This was a long drawn. This was a long drawn battle. I may be, it may appear to you that I am digressing from the issue, but it was an idea only. I'm coming back to the topic, that our team proposed an idea which certainly would have granted parity to the officers in terms of career prospects, but those things were never materialized owing to so many interests. So what stood in the way? Tandon sir, are we there? Hello, Tandon sir. Okay, I guess we've. He has a erratic network system there in the northeast, so he used to be off and on there. Okay, anyways, we'll just wait for him. Till then, yes, is it just the irony of the system, or there are other areas as well, wherein, of course, which act as hindrance or the barriers, the obstacles? Because when we propose an idea, that's, we look at that idea from one perspective. Are there other perspectives that we have to actually check for, or, what are the different factors which stood in way? So what's your opinion about these, the failures of the ideas that we proposed, or what Tandon sir was just talking about? Failure may be due to various reasons. It is due to so many reasons. Commitment to the cause. For example, Tandon has proposed an idea. That's who is at the helm of affair, who's supposed to implement that idea. If he's interested to implement that, whether he is really interested or otherwise, if he's really, that is the commitment. One part that I would like to add in a simple term, if I say, it is, if he's committed to implement that idea, then the possibility of success goes higher in that case. If, despite of resource crunch and other shortcoming, still that idea can be implemented, at least to a great extent. And secondly, as already has stated, that is, Sanjay has stated, there is a shortage of resources. It is always here. That factor always account. Time, that is, you may not have sufficient time to implement that particular project, that particular idea, which you have emanated due to shortage of time, because you may require long time for implementing certain idea. And in that case, it may fail in that case. But here in this case, what my friend Sanjay has stated, that is definitely, I feel it is because of lack of commitment and lack of will to implement that project, that particular proposal.
I was referring, ma'am, that certain people have mental block to accept your idea. So they never accept those ideas in totality if it is coming from. So they always think that if you are enjoying a position, having a designation or rank, all the bright ideas of this world should come in their mind. So it inhibits their proactiveness in the idea, which is found to be rational, logical, but they don't try to implement it wholeheartedly because the credit will go to the person. They may be apprehensive of giving credit. So there are various reasons on individual basis. In nutshell, if I say what he want to say, if I just in agreement, if I would like to say, this is an inferiority complex of the individual, because he feel inferior. Somebody has proposed and he is going to implement it. That is why he feels that he is superior. He is having better idea, better talent, better brain, better everything. So that is why he definitely has some kind of resistance in his mind to implement those ideas. Yes, so with that, I just had this question that when we actually are leading commands, we are the leaders of quite good number of people. But then when the ideas come from the bottom, from our own team, what contribution we have as a team leader? Because of course, owing the positions that we are in, you must be facing, that of course, what we were just talking about, the mental blockage. So how in that situation we deal with that? Again, the audience is commandant basically, and they are like floor managers of your workshop. So they know in out of that there is no inhibition at this level, accepting any idea coming from downward. Right. In the hierarchical level, this is the smallest unit which is run by any person of or commandant or SSP rank. It's some sort of district type of composition as you see in the civil or a setup. So they are the floor managers. They know the in out. They are also aware that nobody is going to take credit because people under command are knowing his abilities and his limitations also. So beyond that level, the problem starts. Yes. Yes. Chaudhary sir, yes. Ma'am, it is individual trait. How you perceive the idea that you have received from somebody or how you have received from your under command. That is again, it is individual trait. If somebody feels no, I am being a leader, I am having better idea, how somebody can have a better idea than me, then definitely I would not love to implement that. But if I feel no, this idea will enrich overall my performance, and it will definitely enhance the efficacy of my team or say unit in our case, so definitely he will love to implement that, and he will definitely implement. That is why I more relate this aspect to an individual trait rather than say other issues. Okay, yes, it's individual trait. Let's hear to Ojha sir. Yes, sir. Ojha, you have to unmute yourself, please. Unmute yourself, sir. Vijay Ojha, sir. Yes, ma'am. Yeah, thank you, sir. Yes, ma'am. I was listening to what Tandon had to say and Sanjay and Khaninder had to say. An idea which is floated has to be accepted by all. And as I had told earlier also, that everybody asks in that idea, what is in there for me? Yes. And we have to accommodate everybody else and move along. If we are particularly thinking that this idea is only for me and I'll be the only one to gain and everybody else will lose, then the idea will be rejected, whether of the lower ranks or higher ranks. They will try to obstruct the idea. Now, what has happened then? There was an idea like that. If the idea is moving in a positive way, then the idea will be accepted in one form or the other. If the idea is moving in a negative way with a lot of chaos and a lot of disgruntlement, then there will be a resentment and there will be a stoppage, and people will flex their muscles. So that is what has happened in the idea, which I think Tandon has said. I am not very much aware of it. But no, you are not aware. Yes. Your statement shows that you are not aware. It was in the larger interest of the audience and in the not in the vested interest of Secondly, yes. You can always differ with it, but that is why it was one of the reasons of the failure of the idea, and that was so much of resentment. Because the moment the idea was floated, it was not failure.
not failure. It is basically, it was not implemented. Yes. It is not If it is not implemented a because failure, it was affecting the prospect of the individual who is likely to implement, not in the larger distinct perspective. Rather, it is, you can say, it is a narrow perspective. The person who is likely to implement, he did not see the whole picture in a larger totality. So that is why he did not like to implement that. So I cannot go in nitty-gritty, but this is not said. You also know it. No, that is your interpretation, and I agree to it. And let me project my interpretation also. Even I had also proposed an idea that let us follow a chit system. It is for the beneficial of the Jawans. Jawans will be able to, they are my under command for their benefit. And there was a resentment for all the higher ups, basically commandant level, that no, this is a bypassing of the channel and it will deprivilege our privileges basically. And now when this system, you should withdraw this word privilege. There is no privilege as such. Okay, I withdraw this word. I withdraw this word with an apology. Yes. Okay, but when I said something which was in favor of Jawans, which they can come up and easily, freely say, and that feedback system which I told and was resented by everybody. So then why are you resenting on when this thing No, we have not opposed to. All of you had opposed. Freely. All of you have opposed. Your personal idea. Your process was wrong. Your process was wrong. Your proposal was wrong. Because let me complete it. Khanendra, let me complete it. When I was talking about the interaction with the Jawans directly, that was, no, you should not be interacting. This should be the rate. This should be the SOP. And when your interests are concerned, then you said that you go to the court. It's not done. Oja, you are sadly you are mistaken. अरे यार कहाँ की बात कहाँ लेकर के जोड़ रहा है? You are talking without sense, यार. नहीं, you are requested. नहीं, मैं बता रहा हूँ why an idea gets नहीं. I am coming to the idea why an idea gets a failure is because you are not taking the largest interest of everybody. You are not taking everybody. You are just projecting your own idea. You are talking about the promotions. So many court cases has gone. So many things has gone. What have you done for the Jawans basically? How many letters have you written for the Jawans that inko promotion time se nahi mil raha? That has not done. Do you have any statistics, Mr. Oja? Can you show me the figures? Sanjay, Oja's purpose is solved. Let us move ahead. All right. No. His purpose has been solved. What he wanted, at a wrong forum. Don't try to pose. Yes. He wanted this. He wanted this. Troops. Everybody is commanding same number of troops, which you have commanded or you are commanding. So Ajit, you are not able to give data that we have never bothered it about Jawan. You are the only one who is looking after welfare of Jawan. You are sadly mistaken, Mr. Oja. Yes, how Oja can say that we have not protected the problem of Jawan? इनसे ये पूछिए कि वो 50 आदमी बचा के ये क्या करना चाह रहे थे? Excuse me. Ma'am, no, just I will tell you one thing. Okay. This is how people stop in an idea that is proposed by you. So many people have started speaking. No. You. Okay. If the idea is rubbish, one should reject it at that time only. Okay, with the permission of the entire cohort, I'm really sorry to interrupt, but with the permission of the entire cohort, let's not, take it personal. And let's talk about ideas in general, proposals in general. So that would be more learnings because, of course, this is an everlasting debate. When we have, certain procedures, when we have gone through certain ideas, certain situations, and everything has its pros and cons and ups and downs. So let's not digress from the main theme of the topic. I guess we all are in sync on that. Yes. So of course, when the different ideas are proposed, let's not talk about how that idea was dealt with by some the other authority. But when we actually propose an idea, when we have this innovative idea, how do we look at that idea? How do we dissect that idea? How do we, when we are actually, promoting something, or when we are accepting a proposal by the people working under us,
do we really look at that idea in its entirety, or do we really, see the different aspects of that idea? I'm only talking about the idea, this idea, how we, when somebody, an individual, a small team, group of small people, when they come up with an idea, and we being the sole authority of that idea, we accept that idea, or we refute that idea. How do we look at that idea? Outrightly nobody is going to refuse it. It will be examined in totality. Yes. Certainly, there is no any plan to reject it in the first instance. And definitely, when there are no plans to reject it, Singh sir, we do look at different aspects that how it can be a successful idea. So Yes. on what parameters do we test that ideas? Just, I mean, before, proposing it further, on what parameters we test that ideas? With the limitations and delays, we generally, first we find out that is it implementable or not. It can be very bright, but the time involved, the resources available and implementability factor is there. Right. So what is applicable in space A may not be suitable for space B. So inclusiveness of that idea fitting into organizational setup is to be examined in first instance. Definitely, yes. If it fits into that that setup, definitely yes. That's one of the major reasons. So anything else that anybody would like to add to what Singh sir has just said? Individual driven ideas generally they fail, but they take considerable time of the organization and the resources. Right. And that is known as ad hocism in our force. People came from any idea, they come with any idea and they try to implement, realizing that this is the fairest practice available with them. And this tool of his invention or idea can change the whole perspective of BSF or working culture of BSF. I differ here because there are existing practices which can be innovated, which can be upgraded to the extent that matching the best standards available rather than discarding them and adopting a new pattern altogether. Whenever there is an idea comes, it never be outrightly rejected. It is not the practice in BSF. Right. Because it is always considered in larger context. If some idea has been proposed, say, in operational domain, if somebody proposed to change certain pattern of operation, say, certain operational aspect, then it is always, it is considered from different angle, like manpower required, your resource required, your total output, your outcome, and consequences, everything has been analyzed in totally, and that is after then only it is rejected or accepted. So basically forces adopt the practices which are generally time tested and which are generally agreeable to everybody. It is not that whims and fancies, because that's because of whims and fancies some practices have been adopted. It is not that. All these practices whatsoever is going on with respect to our operational issue, it is for a period of time. So idea in force, as far as innovation is concerned, innovation is always welcome. In the morning session, so many examples has been given by the people. We have innovated so many things because considering the resources, availability of resources. Definitely. Resource is always crunch. It is never available. It is never adequate. I mean to say, not available. It is never adequate. So within the available resources, we try to manage the whole things. So idea with available resources that can be implemented is always welcome, and that if that is for the betterment of the organization, nobody opposes to that, and everybody accept that that is the this thing, idea of this thing. So what you say in this case, the idea that your team has proposed that did not succeed, if that happens, that is largely analyzed what may be the factor. So classified examples are there, we cannot quote here, but yes, sometimes that happen, and that appropriately addressed also the issues. हमें लगता है हमको इसमें ये लगता है कि आइडिया प्रपोज करने वाला जो भी अधिकारी है, आइडिया एक्सेप्ट करने वाला जो अधिकारी है, उनकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी में भी, क्योंकि हर आदमी की पर्सनैलिटी अलग होती है, उसमें भी थोड़ा फर्क होता है, तो वो भी एक फैक्टर होता है. आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. जी सर.
लास्ट ईयर हम लोगों ने पूरे भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर, क्योंकि 50 साल पूरे हुए थे बांग्लादेश की आज़ादी के, तो उसके उपलक्ष्य में बीएसएफ ने एक मैत्री साइकिल रैली का आयोजन किया था, जो कि ऑलमोस्ट ऑल अराउंड द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर वो रन की थी। इट हैड पास थ्रू मैनी बटालियंस एंड जिस बटालियन में जा रही थी, सभी में नहीं गई थी, लेकिन जिसमें भी जा रही थी उसको आई थिंक सभी में गई थी, तो उसके कमांडेंट को जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको इस बटालियन इसके रिसीव करने का, इसके ठहरने का, इनके एंटरटेनमेंट का या जो भी साधन है, सो दैट दे कैन बी रिलैक्स, बिकॉज इट वाज ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर यात्रा, उसका इंतजाम करना है। नाउ हियर कम्स द पॉइंट मैम, आई बीइंग वन ऑफ द कमांडेंट्स, जहाँ पे वो यात्रा रात में ठहरी थी, उनके लिए हमने बड़े खाने का आयोजन किया था, और चूंकि वो बहुत थके हुए लोग होते हैं, आप समझ सकते हैं 4000 किलोमीटर चलना है, तो सिंस माई ओन, मेरी अपनी जो पर्सनल इंडिविजुअलिटी है वो बड़ी लो प्रोफाइल है, आई डू नॉट बिलीव इन मच पंप एंड शो, तो दिस आई डिस्कस्ड दिस थिंग विद माय सीनियर कमांडर, माय डीआईजी। हमने कहा सर कि इसमें मैंने उनको अपने आइडियाज दिए, सर इसको हम बहुत बड़े मैग्नीट्यूड पर, बहुत ग्रांड शो में नहीं करेंगे, आई जस्ट डू इट इन दिस वे। So with all due respect to my that senior, my DIG, he was almost 9 years senior to me. He gave his idea, and he told DP इसको ऐसे नहीं, इसमें थोड़े से, this is one time affair and being monitored by MHA and Director General himself, something like that, and कुछ और point उन्होंने बोला it will be better if you do it in that way, and उसमें हालांकि कुछ चीज ऐसी थी जो कि मेरी अपनी इंडिविजुअलिटी के खिलाफ नहीं थी, जैसा मैंने आपको बताया, मैं बड़ा शांति से रहता हूँ, उन्होंने बोला नहीं इसको ऐसे कर लेते हैं, तो देन अल्टीमेटली वी डिड एज पर हिज चॉइस एंड इट वाज डन। अच्छी कवरेज मिली उसको, मीडिया कवरेज मिली, एंड उस तरह से हो गई, उस तरह से भी ये भी एक फैक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो जैसे आप सभी की एग्जाम्पल से, बातों से निकल कर आते हैं कि हम लोग कई बार हमारी प्रायोरिटीज सेट नहीं करते हैं, या फिर प्रूफ्स को ज्यादा देखते रहते हैं, डिजायर टू एक्ट, टीम फंक्शनिंग कई बार हो जाता है, कई बार हम हमारा प्रॉपर स्ट्रेंथ एरिया, जैसे कि सिंह सर शायद बात कर रहे थे कि जो अलाइन नहीं करते हैं बीएसएफ के मोटोज से, तो हम हमारी स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर रहे हैं, या फिर हम आइडिया के एक ही एस्पेक्ट पे, जैसे ना मेंटल ब्लॉक की हम बात कर रहे थे, वहीं फिक्स हो जाते हैं। कई बार टीम फंक्शनिंग जैसे भी फैक्टर्स होते हैं। ऑफ कोर्स लो सेल्फ बिलीफ की बात मैं बहुत ज्यादा नहीं करूंगी, बिकॉज बीएसएफ के साथ वो बात करना बहुत अच्छा बात नहीं होगी। सो yes, these are the factors which definitely stand in the way. So we with the course of this be talking about all these things. So now I'm sorry, yes, yeah, so getting the priorities right, let's now talk about it. Of course BSF या किसी भी तरह के फोर्सेस ऐसे सेक्टर हैं जहां सबको अपनी प्रायोरिटीज पता होती है। ऐसा नहीं होता है कि people don't know what their priorities are, what goals they need to achieve. But still, does it happen that when they come up with an idea that doesn't align with the priorities, does it ever happen? Our organization is well structured. Even a single enrollment or recruitment is for certain reasons. Say all given beat, follower beat, Jawan, they are part of organizational structure and they know what to do. And say once they are enrolled, they are trained, and their duties and their responsibilities are fixed. So you can say that way each and every member, they are aware about strategic priorities. As far as setting those priorities or when to implement it and where to implement it for the larger goal of the organization, it depends upon hierarchy. Say at the level of Jawans, you can say minimum it starts from company commander level and goes beyond. Even because they are operating on the ground, some ideas may be coming from the lower formations, but certainly it has to be implemented. Government policies has to be modified to bring in those ideas or say strategic priorities. No doubt today observations by say lower formation, it goes up to hierarchy
up to the highest level. If certain priorities need to be modified, it is done. So that way you can say each and every member of the organization, they know strategic priorities, they know their place, up to what extent they can influence the things. Yes, yes, Khanindra, I guess. As far as priority is concerned, the role and task of our organization is very clear, and it is known to right from our top brushes to the bottom of the force. I mean, every member is aware about their role and task, what I am supposed to do and what I am not supposed to do. So in that case, based on role and task, the strategy has been formulated. Say, for example, one role is that we have to protect the sanctity of the border. We have to maintain the sanctity of the border. That is our one major role. Second role, to stop the trans-border crime. Third is to inculcate the confidence among the border population. Based on these three major tasks, our strategy has been formulated, and that has been formulated at the highest level. And after then, based on those strategies, the local level implementation, every commander devised their means and ways to implement that priorities, to achieve that priority, to achieve that goal. And accordingly, we prioritized our things. What is our priority? In this case, say in certain area, say it is more trans-border crime prone, so he will have to adopt a different strategy. In other area, it is more insurgency prone, so he will have adopt a different strategy. So every locality, based on the rightly says by my colleague Chandrakant Upadhyay, that it is basically locally devised the means and ways how to accomplish the task, and priority has been fixed accordingly. So right from the top to the bottom, everybody is aware. If I am as a commander, I have prioritized the thing that is definitely aligned to the overall strategy of the organization, and my priority will definitely be go down to the troops. Yes, this is the priority of the unit, and this will proceed. So that is the way basically we used to do. Yes, Khanindra sir, and of course, like Upadhyay sir have also said, yes, everybody knows, but how do we in that situation deal with the out-of-box thinking? Of course, everybody knows what their strategic priorities are, but when it comes to innovation, newness, they do, I mean, and of course, if you have any such experience, people must have all those out-of-the-box ideas when, they don't follow the set paths. Yes. There are examples, ma'am. For example, say, I am giving an area to dominate. I am giving the troops to dominate an area, say, which is beyond his control. Say, for example, 1 kilometer. So 1 kilometer physically dominate during the dark night is not possible. Yes. So because of that, just to make him comfortable, just to ensure that he will maintain the domination, he will be given certain equipment, certain gadgets, which will definitely enhance his observation capability. Right. Which will enhance his mobility at certain point. The vehicle will be provided, bicycle will be provided. Yeah, bicycle he himself will procure. So he will ensure the mobility. He will provide he will definitely provided with gadgets that will help him to cover the area visually. Thirdly, he may improvise certain means, like as you have stated, out of box thinking. Say dummy may be created. Certain point of time he will make the dummy stand over there at certain places. So that will definitely give some kind of feeling to the intruder, to the criminal, to the ANEs, that somebody is standing. He will not be able to know that whether it is a dummy or whether an individual is standing. So that way, many innovations have been this thing done at many point of time as per the requirement of the situation. Yes, definitely. That's very true, sir. So if the team actually knows the strategic priorities and we set them right, there is no way stopping us. So yes, मैम हमको लगता है कि जी ये सवाल में आपको थोड़ा सा 2-3 भागों में बांटना पड़ेगा, बिकॉज हमारे जो मेंबर्स हैं उनका रिक्रूटमेंट का लेवल 2-3 तरीके से होता है. There are directly recruited constables, there are directly recruited sub inspectors, and there are directly recruited officers. सभी का मेंटल एजुकेशनल बैकग्राउंड जनरली अलग होता है. मैं ये नहीं कहता, कई बार कांस्टेबल बहुत अच्छे आते हैं, बट
प्लस होता क्या है कि ग्रूमिंग के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। कांस्टेबल की ग्रूमिंग या उसकी ट्रेनिंग अलग होगी, सब इंस्पेक्टर की अलग होगी, ऑफिसर की अलग होगी। तो मेंटल एप्टीट्यूड उसी हिसाब से उनका डेवलप होता चला जाता है। सो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी हिसाब से अलग अलग होती है। सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, से आफ्टर 2 years, 3 years, 4 years ऑफ सर्विस, यू में से कि हमारे सिपाही को जनरल आइडिया होगा कि भाई मुझे अपने सीमा की रक्षा करनी है, कोई बॉर्डर से आर पार आए ना जाए। लेकिन अपने ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है वो सब इंस्पेक्टर, पोस्ट कमांडर हम उसको बोलते हैं, प्लाटून कमांडर, या उनका थोड़ा उनसे बेटर होगा। एंड बटालियन कमांडेंट या उनके जो स्टाफ ऑफिसर्स हैं उनका डेफिनेटली दे मस्ट बी इन द बिगर पिक्चर, इन द नोइंग ऑफ द बिगर पिक्चर ऑफ द थिंग्स। इस तरह से डेफिनेटली डेफिनेटली पाल सर, बहुत सही चीज है ये कि हर एक इंडिविजुअल अपने सेट पाथ्स पे काम करता है, अपने उनकी सेट प्रायोरिटीज होती हैं, और इसी से जब हम आगे यहाँ मूव करते हैं तो whenever an individual actually discover their priorities, whatsoever rank, whatsoever authority they hold, whatsoever mental capabilities they hold, they have to actually look for certain things wherein they know what is the long-term intent, the long-term purpose, aligning it with the near-term goals, and then looking at the priorities. And when we look at all these things, there is this scope of innovation, wherein हमें long term, short term दोनों पता है, और फिर हम अपनी strategic priorities के साथ काम करते हैं. So there only, of course, that innovation happens, and when the team knows, so that is, of course, something which is inevitable, that is unsurpassable. So with that, there's this very basic question, of course, the support Chaudhary sir was just talking about. But other than those providing, the gadgets or maybe motivation, what other sort of supports? Because we, I mean, of course, BSF being a government organization, we also have to deal with the support system from government. So how do we deal with that? Because of course, somebody, your team member has taken up the priorities, right? And they are looking at the company's big picture. And when they propose that, which is very, very rational. So what support on your part, being in the commanded position, what do you offer? Because of course, we even, you have to look for, I mean, initially what we were talking about, the resources, the permissions, the protocols, of course. So what sort of support that we can actually offer them? सारा सपोर्ट तो बटालियन कमांडेंट ही देता है मैडम जी सर। द वन पर्सन जो कहते हैं कि दो इन लाइटर साइड, बट कहा जाता है बीएसएफ में कि ही लाइक हनुमान, जिसको अपनी पूरी ताकतों का या पूरी पावर्स का अंदाजा नहीं है। ही द एक्चुअल कटिंग एज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ फोर्स एज ए होल। और ये जो आप बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस मेंबर्स हाउ टू डिस्कवर द, इसमें बड़ा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है मैडम हमारे यहाँ पर। जी सर। हर शाम को हम जवानों को इकट्ठा करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, उन जो आज के आदेश हैं वो सुनाए जाते हैं, जो थ्रेट हैं वो सुनाए जाते हैं, जो ड्यूटी है वो बताई जाती है। इसमें वो भी शामिल होता है जो ऊपर वाले हेडक्वार्टर से आता है, इसमें वो भी शामिल है जो लोकली कहीं से मिलता है, इसमें वो भी शामिल होता है जो लोकल कमांडर अपने तजुर्बे के आधार पर या अपने लोकल रिसोर्सेज, अपने लोकल सोर्सेज के इंफॉर्मेशन के आधार पर उसको कुछ ऐसी जानकारी मिलती है। और इसमें दो तरह की चीजें हो सकती हैं जो मैं मानता हूँ। जो ऑपरेशनल कमांडर है वो ऑपरेशनल चीजें बताता है। कुछ लोग, सभी लोग तो हर टाइम ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इज बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं उनको उनके अपने हुक्म मिलते हैं। सो सबको अपना अपना पिक्चर पता होता है। और फिर एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट होता है नीड टू नो बेसिस पर। वो आपने कहानी सुना होगा कि वो एक हाथी खड़ा था, अच्छा देयर वर 4 ब्लाइंड मैन, दे वर मेड टू टच, किसी ने उसका पैर टच किया, हाथी कैसे है। सो हमारे यहाँ यही है कि हर आदमी अपने अपनी जिम्मेदारी देखे, और कमांडेंट एंड स्टाफ ऑफिसर्स वो जो है उनको पूरा पता होना चाहिए कि हाथी कैसा है। रेस्ट और नन ऑफ देम इज सपोज्ड टू नो कि हाथी कैसा है। सो आई थिंक दिस इज हाउ सिस्टम इज प्रिवेलिंग एंड वर्किंग टिल नाउ फाइनली। डेफिनेटली पाल सर। अच्छा पाल सर, इसमें मेरा एक यहाँ सवाल रहेगा कि ये सारी जब चर्चाएं होती है, जब सारी वार्तालाप होती है, तो ऑफ कोर्स टीम अपने थॉट प्रोसेस भी बहुत खुलकर शायद शेयर कर पाती होंगी। तब ऐसा कुछ रॉ आइडिया आता है जो कि शायद पॉलिश की जरूरत है, इम्प्लीमेंट करने लायक है लेकिन पॉलिश की जरूरत है, तो क्या ऐसा कभी कुछ होता है जिसे हम फर्दर पॉलिश करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, या फिर सपोर्ट करें कि नहीं हो जाएगा पर इसमें ये वाली सारी चीजें चेंज करें तो शायद हम इसे प्रपोज कर पाएंगे या आगे ले जा पाएंगे? तो ऐसा कभी कुछ रहता है सर?
डिपेंड करता है मैडम। अगेन देखिए, हम सब वी आर ऑल मैन एंड विद डिफरेंट पर्सनैलिटी। कुछ कमांडेंट हम में से हमारे यहाँ बैचमेट बैठे हैं, कुछ ऐसे होंगे जिनके सामने, ऑफिस के सामने से, आई एम श्योर वी आर, आई एम ब्लेस्ड टू बी इन दिस बैच, कि हमारा बैच बहुत अच्छा है, दे आर ऑल थोरो जेंटलमैन। तो लेकिन इनमें से पक्का कुछ एक दो ऐसे होंगे जिनके ऑफिस के सामने से निकलने में लोगों को डर लगेगा, यार सीईओ साहब का मूड कैसा है। कुछ ऐसे होंगे कि जिनको कभी भी वो रात को 12 बजे भी अप्रोच करना चाहें तो लगेगा यार सीईओ साहब से अप्रोच कर लेते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट कि अगर कमांडेंट की इमेज ठीक है या कंपनी कमांडर की इमेज ठीक है, या एक हमारे यहाँ मिडिल लेवल का होता है सब इंस्पेक्टर, उसका अगर जवानों से बिहेवियर ठीक है, अपने बच्चों की तरह जवानों को समझता है, जवान एक्सेप्टेबिलिटी है, तो दे कम आउट इन ओपन और अपना आइडिया शेयर करते हैं। बट आज की तारीख में चीजें थोड़ी बेटर हुई हैं, कहीं ना कहीं चीजें सही लेवल पे पहुंच ही जाती हैं। इफ सम सब इंस्पेक्टर और सम कंपनी कमांडर इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द आइडिया, सो देर आर अदर चैनल्स विच आई मे नॉट बी एबल टू टेल हियर, उनके थ्रू वो कमांडेंट तक जनरली चीजें पहुंच ही बाय एंड लार्ज पहुंच जाती हैं मैडम। जी जी, चौधरी सर, आई गेस आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? Rightly says, as he has stated, it is a very structured mechanism is there in our organization. For example, in the evening, everyday basis, we call there is a parade everyday basis. It is, we call the roll call parade. Right, sir. So there it is generally briefed out. There it is generally spelled out everything. What is supposed to be done, what is not supposed to be done, who all will perform what type of duty. Everything has been specified. And we generally follow the need to know basis. As far as strategic this thing, regarding the strategy, the idea is that it is strictly we follow the principle of need to know basis. Right. Whoever is need to know to what level, it is generally briefed him to that extent only, not beyond that. Right. He is not supposed to know before that. So it is because of certain say, I hope you can understand, you will align with me in that case. We are basically a belt force, and here certain this thing protocol are being followed, and we strictly governed by that. And based on that, everybody is well aware about their role and about their task and about role in that particular task. Right. So it is, there is nothing like that. And yes, ideas sometimes come, sometimes raw idea come. It's very difficult to spell it out at this moment. I cannot tell you exactly, right, but yes, sometimes it comes, and that sometimes on with refining, that is very well implementable, and that implements also, that works well also at certain point of time. Definitely, sir. And with that, we can move on to the next part here, self-belief. So when individual, of course, I was talking about this raw idea. So when they have this idea, there are few things that actually, I mean, everybody thinks in that way. So what comes to their mind is, number one, would this work? सोचा है क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, चल पाएगा, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या इशू आएगा, प्लस that the control, am I really capable of performing that? There's another factor that actually strikes an individual, because innovation is something which has not happened yet, right? Which is new, which is very, the change that one has to actually, implement. So wahi se to innovation aayega. So if I change something, am I really capable of handling that change? And if I then propose, what would my colleagues or my friends or my family has to say? Because of course propose करने के बाद ये बहुत बड़ा फैक्टर आता है कि अब उस प्रपोजल का आगे क्या रिजल्ट रहेगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, कितना कमेंट्स या फिर क्रिटिसिज्म या फिर कितने अप्रिसिएशंस मुझे फील करने पड़ेंगे. तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें हमारे सेल्फ बिलीफ को स्ट्रक करते हैं. सो बीइंग द टीम लीडर्स, how what do you believe? So when individual is facing all those aspects, all those thoughts which are very self-limiting, how do we convert those to self-enabling, sir? That of course individual has an idea, and when individual has an idea, they know how this has to be properly dealt with. How do we convert that to self-enablement? What sort of motivation we have to, or what sort of support system we have to provide? What exactly do we do? I'm not clear exactly what you want to know basically out of it. So I'll just reframe my question here, which is on an individual level, sir, as a person coming from the bottom down. So as an individual, if I have some new idea,
and I need to propose it further. I have many notions in my mind. Kitna kaise accept hoga? Would it be accepted? What would people say? Mujhe dar lag raha hai. Of course, I am the person who is very confident about what my idea is, but then I'm scared of proposing it further. Then agar hum log us idea ko, if we hold right there, then we would not be able to build that innovation culture, because culture can only be created when the team is very enabled, right? So how do we convert that self-limiting thought process into self-believing thought process, that yes, if I have an idea, I must go and propose that. So how do we create that environment, since here we are talking about building that innovation culture? So how do we create that culture of innovation, that anybody and everybody who has any new idea, howsoever raw, howsoever new, howsoever basic it is, they have that liberty and the courage to propose it further? Ma'am, first of all, we should not have the habit of rejecting straight away any idea. That no, right. That sort of attitude is there generally, that you know nothing. For example, shut up type of the attitude right, is there. Right. No, you do not know what you are talking, what nonsense you are talking. Please, no. That type of attitude should not be there. If that is there, if the people who is likely to originate the idea, if he has the feeling on the person sitting in the front that yes, my idea may or may not be rejected, but I will definitely be appreciated if I bring out something new. Right. It may not be implemented or may be implemented. That kind of environment is required to be created, and for that you need to inculcate the confidence among your under command. In our sense, we can say under command. Otherwise, in the parlance of your this thing, multinational or corporate sector, that is, you can say team member. Yes. That as a team leader, he must inculcate that no, whatsoever idea you have given, it's fine. Bits and pieces I may take up from every idea, and ultimately I will amalgamate those things and ultimately formulate the new idea that will bring certain degree of senses. And there is always a earlier this thing, Laxer, it has been added that you can say kind of initiative or recognition. We must try to recognize the individual's effort idea. That will definitely create a kind of environment where people will forthcoming with ideas. Yes, yes, definitely, sir. Yeah, yes, Ojha sir. Ji sir. And sir, please unmute yourself. Ma'am, between an idea, having an idea and then leading to an action, there are a lot of other phases also. Idea isn't a desire, and excessive desire becomes a want, and excessive want becomes tension, and this tension leads to an action. So a person who has an idea, basically, he either is very much involved in the force or involved in his work, and he is sure basically that he has got ideas and he knows that he can continue with it. He knows that he has got ideas which others don't have, and it is like he can be able to explain to them, that he must be prepared for that. If he has an idea and he wants an action on it, he should have an idea which is at least, and he should have a data which Sanjay was saying, he should have a data which should be around 15 to 20 times more than the other person is having. Only then he can proceed with that idea further. And then he should be ready to face the brickbats, which comes naturally, because if you are projecting an idea, you are pushing them forward to a motion, basically, because everybody wants to be in a stagnant place. So nobody wants to move around technically, basically. So that is why he should be prepared for that, and he should have a courage, and he should have a self-belief. That is very much important. If he does not have a self-belief, he expects that everybody will be expecting his ideas, welcoming his ideas, it does not happen like that. He has to face criticism, and everybody's idea basically has faced criticism. An idea can come from any small incident or repetitive incidents. Right, sir. So that is what I wanted to say, basically, that if you have an idea, you should have an idea, you should have a data, you should have a courage to face it and explain it to others. And then the most important thing is that you should try your every bit of your effort that it succeeds, because success leads to success. Failures don't lead to success. So he has to work hard. Yeah, definitely, definitely. Rightly said, Vijay sir, and aligned with your thoughts, we have this small window. So what do you believe? I mean, this internal dialogues when individual has which very much align with the Ojha sir, because once we have an idea, individual has to ask themselves, is it true? Okay, whatever idea I have, do I have any doubts on it? Think about it.
what can happen, what cannot happen, and then find support in terms of data, individuals, motivation, and of course, so it all works. And plus, we must know what is the price that one has to pay for it. That you have to face criticism, you have to face, a strong opposition. It's all the price that one has to pay, and are you really ready for that? And that is something which enables an individual believing oneself. So that's the entire process one has to, go through. And that's how we, develop that culture. When everybody knows about these self-enabling ideas, the thoughts, and they start believing them, the culture automatically creates. So that's wonderful. So here we would take a 10 minutes break, and we'll resume the session right after 10 minutes. Yes, it is visible. Okay, great. Thank you. So I was just, I guess that's the right time to resume. So prior to this, we were only talking about, how we can, excuse me, create an environment when people start believing themselves. Now, we would now begin with this session with this quote by this French philosopher who says, nothing is more dangerous than an idea when you have only one idea. Now, that's, of course, something very, very unique thought, and something that's very, very true, that only one idea is something which actually, creates the multiple problems. So when we talk about how we can create that culture towards innovation, and when individuals come up with their ideas, we motivate them, we cherish their ideas, and we we propose those ideas further. We want those ideas to be implemented. If that's the one idea only, and we try to implement that, that becomes a hurdle at times. So rather, a better version is when we were talking about how do we, look at the idea with different perspective, so that we can get, the right or the most, workable idea. So we need to, with that perspective, we need to create options which actually gives us the range, wherein we can extend, or we can basically know about different ways how we can, come up with different ideas which are workable, what problems we might face, what sort of factors or hurdles we need to address too. Excuse me. Okay. So when it comes to creating option, the first step that we have to take is decide. Decide what's your long-term goal and what's your near-term goal. So if we have that clarity, so then only we can have, all these strategic questions which actually gives us liberty to know more, to probe more, delve deep into the problems, and look for the levers. Levers basically wherein, what are the areas which are overlooked, and then with those areas which are overlooked, and we know that yes, we can get creative, we can think of multiple ideas, something, we can then deal with the ideas which are not very easy to implicate, and then we of course be creative and propose ideas which are high impact ideas. So that's a very important way. And with that, let's talk about use of strength. So yeah, here I have this question that of course BSF has its core strength. So does your idea, all the innovative ideas that we have, okay, prior to that, let me just quickly talk about what are the core strength areas BFF has, of course. What all are, I would not be talking about one or two limiting ideas, but what all are the core strength ideas that you consider that, yes, these are the strength areas. Train manpower, well set goal, train manpower, well-defined task, well-defined task. So. And discipline, and integrity and moral value of the force. And force definitely, sir. So these are the areas. So
are all the ideas that we get get from the under commandants. So am I using the word right? That's under commandants, right? So they all use the company's core strength. Yeah, definitely. By virtue of their training, their duty is being performed based on their training, because they're supposed to perform their duty based on their training only. How they have been trained to perform that duty. So I use their strength, that training, for accomplishing the task, that is duty. So that is one area. Other thing, that is discipline. By virtue of their discipline, I am sure sitting over here that if I give him a task, he is accomplishing that task. He cannot go right or left. What he has got to do, he's supposed to do. That is another strength. Third is ethics and moral. That is, I'm sure that everybody's this thing, high level of integrity, and that is why I can rely upon them. So these are few. True. So you're unmuted, Khanendra sir. Okay, I guess you're done. So yes, true. These are the core strength areas. But let me reframe my question. When we talk about any innovative idea that an individual comes up with, does every single innovative idea uses the core strength of the company to implement that idea? For me, let me just talk about, can any of you share any innovation that's been recently implemented in BSF, and how the core strength of BSF were used in implementing that innovative idea? Over to you, sir. Any recent experience that you have had? Ma'am, innovation and improvisation. Right. These are the backbone of BSF. We always improvise because our every situation is challenging for us. Every situation is different. Like where I am deployed, it is totally different from my colleague where he is deployed. Right. So training is similar to everybody. So that training, with similar training, we are performing different type of environment, under different type of environment. So naturally, innovation and innovation and improvisation is everywhere. It is here. So there is not one. There is so many innovations, and in the morning, in the first half, we have given so many examples regarding this. So everybody has shared the example like that. Say Indo-Bangla border is fenced. Basically, fencing has been created. Where there is no fencing, we use the local resources to create a barrier, to create a fence. So that is again an innovation. You can say that is an improvisation that we used to devise, because we don't have that resources. So that is why with local resources we improvise or we innovate that to accomplish the task. So day-to-day basis, we involve in lot many innovation and improvisation. Similarly, there is another one of my colleague Vishal has cited example of hanging the bottle in pairs in the fence, so that somebody touch, someone will get there, someone will hear that sound, and based on that he will immediately rush to that location to address the problem. What is there? Who is there? Why the sound is there? So like that, we have lot many things are there to note here. I can list hundreds like that where we have innovated and where we have improvised the things, the resources to accomplish our task. Yes, and of course, having talked about all these, the manpower and the well-defined task and discipline and moral values as part of the core strength, do we anytime come up with an idea innovative which actually require some other domains, interruptions, or maybe dealing with other domains, maybe when we get interrupted with because of financial issues, or maybe scientific quest, or maybe where we require to outsource help? So does that ever happen? We require to outsource help, we require support from the other institutions or organization to implement any of the innovative ideas that we have. For example, in the training institute, the masses, we call it we dine together, that we call mass. It is officers mass,
then other ranks mess, there is subordinate officers mess, like that. We are having different institutions for massing purposes in the training institute. Earlier, these masses were running by the manpower drawn from different field formation. Now that has been outsourced because those trained manpower were field underutilized in those institutions. So that has been outsourced now, and those manpower have been diverted to the field formation for their actual duty. So that is again an innovative idea where it has been outsourced to accomplish the task, to accomplish the goal, to achieve the goal, basically. So there are examples like that. Yes, sure. And it's always, an advantage when you are able to use the core strength of your firm. So that's basically what helps us the most. And with that, we come to the next factor, which is preference for action. Now, what comes to your mind talking about innovation and, an innovative idea for which the preference is for the action? What strikes you when you look at this quote? When it comes to building innovation culture, what strikes us when we see this quote, preference for action? मैम एक बार इसको एक बार फिर से क्वेश्चन करें आप कि व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग दैट इनोवेशन के लिए व्हाट आर द आइडियाज लाइक यू वांट टू आस्क दिस सर जब हम लोग बात कर रहे हैं कि हम इनोवेशन कल्चर क्रिएट करेंगे अपने अराउंड और हमें ये वर्ड सुनाई देता है दैट व्हाइल कमिंग अप विद आइडियाज का प्रेफरेंस होना चाहिए एक्शन द प्रेफरेंस फॉर एक्शन शुड बी वन ऑफ द कोर डोमेन व्हेन इट कम्स टू द इनोवेटिव आइडिया तो क्या हमारे माइंड में आता है कौन सा फैक्टर्स कोई आइडिया कोई सिचुएशन कि हाँ ऐसा इनोवेशन प्रपोज हुआ था और इस तरह से उसमें एक्शन के लिए प्रेफरेंस था या फिर कैसे हम इस चीज को किसी भी आइडिया को हम कनेक्ट कर सकते हैं when we have to prefer the act that we have to complete. Yes, ma'am. Ji. First of all, we should have an open environment, welcome of all ideas, all sorts of ideas. Secondly, we should have that much freedom to implement those ideas. Thirdly, we should have resources to implement that ideas. Fourthly, we should have the power and authority to accept the failures also. And fifthly, we should be able to reward those people who are giving good idea and implementable ideas. All these things are creating such environment. Yes, wonderfully said, Jagi sir. And of course, जब हम लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें किस तरह से एक्ट करना है, इम्प्लीमेंट करना है किसी भी आइडिया को जो कि प्रपोज हुआ है, तो हमारे पास कुछ एक्ट स्टेप्स होते हैं which we have to take. One, describe potential solutions, design a test, build upon that particular test, और उसके बाद ऑब्जर्व करें, एनालाइज करें, क्या कंक्लूजन निकलता है, उसके बाद उस आइडिया पे हम आगे काम कर सकते हैं, ऐसे प्रपोज नहीं कर सकते. अच्छा सर, यहाँ एक क्वेश्चन आता है, बिकॉज इन फोर्सेस वी हैव टू फॉलो स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स, हमारे रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्ट्रैटेजीज, प्रायोरिटीज सब फिक्स है, ठीक है. उस सिचुएशन में व्हेन इट कम्स टू अ न्यू आइडिया, हम लोग कैसे एक टेस्ट को डिजाइन करके उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं बिफोर इम्प्लीमेंटिंग दैट. सो व्हाट प्रोसीजर, या फिर मैं कहूंगी कि क्या हमारा आउटलुक रहता है किसी न्यू आइडिया की तरफ व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली मूव ऑन टू इम्प्लीमेंट दैट आइडिया, उससे पहले हम उस आइडिया को टेस्टिंग स्टेज पे कैसे ट्रीट करते हैं? प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मेथड है मैम. जी सर. इसमें कुछ लिमिटेशंस या नैरो डाउन करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. आप कह सकती है पायलट प्रोजेक्ट, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, टेस्ट बेड, व्हाटएवर यू लाइक. मैम जैसे देयर आर फ्यू पैचेस, अगर हम अपने बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं तो आज की डेट में काफी इनोवेटिव आइडियाज वगैरह भी लोगों ने यूज किए हैं और कई ऐसे पैचेस हैं जहाँ पर कि फेंस वगैरह बनाना पॉसिबल नहीं है. तो इन स्मॉल पैचेस कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स बना करके और इस पे मीटिंग्स लेकर के अलग अलग स्टेट होल्डर्स का उसमें
फिर आपस में फिर बातचीत करके कि हमको इसको किस तरीके से हम इस गैप्स को हम प्लग कर सकते हैं। तो उसमें फिर फेंसिंग आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, उसके बाद में फिर उसकी मतलब टेस्टिंग होती है, कुछ दिनों तक रख करके देखते हैं उसका, फिर प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं कि ठीक है हाँ इससे फायदा हो रहा है या नहीं, या इसमें व्हाट और हम इसको ऐड कर सकते हैं या किस चीज को हमें घटाना है। उसके बाद में कुछ समय के बाद में फिर देखते हैं कि ओके ये हमारे लिए सूटेबल होगा या नहीं होगा, इसमें कुछ हम एडिशन कर सकते हैं या रिलेशन। तो इट इज द काइंड ऑफ बेसिकली लार्ज इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो कि अभी काफी जगह बीएसएफ में अलग अलग जगह पे चल रहा है। इस तरीके से फिर इन सब चीजों को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अच्छा सर, ये कोशिश में क्या हम लोग, आई मीन लाइक वी हैव अ सेपरेट टीम फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट दैट हैपेंस, और हम जिन्होंने आइडिया प्रपोज किए हैं उन्हीं टीम को डिप्लॉय करते हैं? नॉर्मली मैम इसमें एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स डिटेल कर देते हैं, जिसमें कि जो ग्राउंड पे हैं उनका भी उसमें रेप होता है। हमारे यहाँ कम्युनिकेशन के भी लोग हैं, वो लोग भी अपने मतलब उस बोर्ड में उनका भी भागीदारी है। इंजीनियरिंग पार्ट इज आल्सो देयर, और कुछ ऐसे फर्म्स जो कि जिनके पास में स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड, दे आर आल्सो मेड पार्ट ऑफ दैट टीम। फिर हम लोग इस पे काम करते हैं। अच्छा, जैसा कोई ऐसा एग्जाम्पल जब आपको लगा है कि नहीं आइडिया बहुत अच्छा है, और लेकिन उसको इम्प्लीमेंट से पहले जो टेस्टिंग है वो कुछ कॉम्प्लेक्स स्टेजेस को फॉलो कर रही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, या उसको टेस्ट करना थोड़ा सा बिकॉज ऑफ दी प्रोटोकॉल स्टफ हो रहा है, क्या ऐसा कभी हुआ है सर? यस मैम, एक से 1.5 साल पहले हमारे यहाँ जो बॉर्डर है जहाँ पे 85 यूनिट डिप्लॉयड है, मैं हूँ यहाँ पे। तो जो रिवर का यहाँ पे फ्लो है वो बेसिकली दिस इज एस्चुराइन रिवर। इसमें होता क्या है कि 24 घंटे में 12 से 16 फीट पानी ऊपर जाता है, नीचे आता है टाइड्स के चलते। तो देयर वाज अ काइंड ऑफ इशू, इसमें एक बीच में एक बैरियर बनाने की बात हुई थी। होता ये था कि काफी सारी चीजें जो हैं, सिंस दिस रिवर फ्लोज फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश, तो एंटी नेशनल एलिमेंट्स वाटर फ्लो का यूज करते हैं, और लो टाइड के समय जब वाटर फ्लो इज फ्रॉम इंडिया साइड टू बांग्लादेश साइड, तो दे यूज टू पुट कॉन्ट्राबैंड आइटम्स वगैरह उसमें डाल देते हैं, वो फ्लो के साथ में बांग्लादेश की ओर जाता है। तो एक पायलट प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाने की कोशिश की थी। इनिशियली वो बन गया, लेकिन जब बाद में ये देखा गया कि पानी के का जो लेवल है उसका जो रिसीड होता था वो लो टाइड के समय और हाई टाइड के समय, तो डिफरेंस यूज टू कम बिटवीन 12 फीट से लेकर के 24 फीट तक। बट बाद में ये जाकर के इतना कॉस्ट इस पे इतना ज्यादा हो गया कि इस चीज को लेकर के फिर हमको बंद करना पड़ा। हैड इट बीन अ रिवर जिसमें कि वाटर लेवल रेगुलर बेसिस पे घटता या बढ़ता नहीं होता, मे बी वी वुड हैव सक्सीडेड, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन इशू इट कुड नॉट बी डन। तो सर क्या ऐसा होता है कि बिकॉज एक प्रॉब्लम है, इशू है, इसलिए आइडिया वर्क नहीं करा, हम उस आइडिया को वहीं ड्रॉप कर देते हैं, और रियली वी इन्वेस्ट टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज टू क्रिएट ऑप्शन? नहीं, इसमें एक सिर्फ बोर्ड बना था और बोर्ड की प्रोसीडिंग्स आई थी। इट वाज नॉट लाइक दैट वी हैड स्पेंट मनी ऑन दिस। इसमें हम लोगों ने ये जो इरिगेशन के लोग हैं वो भी साथ में आए थे, उसके बाद में वाटर रिसोर्सेज के थे, उसके बाद में जो ये बांध वगैरह बनाते हैं इनका भी था, बीएसएफ के भी लोग थे, तो काफी सारे लोग थे इसमें। बट देयर वाज अ डिस्कशन फॉर ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज। सारे स्टेक होल्डर्स ने इसमें चीजों को बताया था कि ठीक है इसमें इतना पैसा लगेगा, और बट फिर बाद में जब ये इश्यू आया, इसके बाद में फिर चीजें आकर के रुक गई। उसके बाद में फिर हम लोगों ने फिर एक इसका दूसरा ये किया, जो कि अभी हम लोग लोकल तरीके से करते हैं। उसमें हम लोग डिफरेंट बोट्स वगैरह हैं, इंडियन फिटेड कंट्री बोट्स, उसका हम लोग यूज करते हैं, और वी हैव मेड सम इम्प्रोवाइजेशन की वो चीज जो चीज है एंटी नेशनल एलिमेंट जो काम करते हैं उसको हम लोगों ने काफी हद तक यहाँ पर रोक रखा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग एक टेस्ट डिजाइन करते हैं, उस टेस्ट के रिजल्ट्स पे हम लोग बिल्ड करते हैं कि अब क्या चेंज आ सकता है, किस तरह से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चेंजेस पॉसिबल है, और वहीं से एनालिसिस रन करता है।
तो सर जब हम लोग बात कर रहे हैं क्रिएटिंग ऑप्शंस की या प्रेफरेंस फॉर एक्शन की, और कुछ ऐसे फैक्टर्स है, एस्पेक्ट्स है कि हाँ हमारा आइडिया में चेंज रिक्वायर्ड है, क्या ऐसा कभी होता है दैट्स इफ इट्स डीमोटिवेटिंग फॉर द ट्रूप्स? क्या ऐसा कुछ एनवायरनमेंट आप फील करते हैं इन द टीम that is something which was actually with that all that enthusiasm proposed, but now that's not being implemented, so पूरा टीम का थोड़ा सा मोरल डाउन होना है? जी जी जी। नहीं मैम, उसमें ऐसा नहीं है कि ये अगर कोई चीज नहीं हुई तो इसका इतना बुरा असर पड़ेगा कि वन इज गोइंग टू गेट डीमोटिवेटेड। वो उस तरीके से नहीं हो पाता है, बट देयर आर डेफिनेटली ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उसको। एक हमारे एक वर्ड है, अगर ऊपर से कोई भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं और अगर वो चीज करनी होती है, अमूमन मीटिंग्स में या ऐसे भी हम लोग ये बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा, इट विल बी डन, कर लेंगे हम लोग। तो ठीक है, उसमें अगर इनोवेटिव आइडियाज अगर उस तरीके से अगर वो नहीं हो पाया तो देयर आर अदर मीन्स ऑल्सो, कर लेते हैं हाँ। पर ठीक है, एक तरीके से नहीं हुआ, दूसरे से हुआ, बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इट इज गोइंग टू अफेक्ट ओवरऑल मोरल ऑफ द यूनिट या कंपनी पे या लोगों पे इसका बहुत बुरा और नेगेटिव असर हो, ऐसा नहीं। So it's all taken in good spirits. पाल सर, I guess आप कुछ ऐड कर रहे थे? जी मैम, मैं जो अनुराग बोल रहे हैं इसी बात को थोड़ा सा जी सर इसमें ऐड ऑन करना चाह रहा था कि आप बोल रहे हैं कि डिमोटिवेट ग्रुप्स होता है कि नहीं होता, ये दो बातों पर डिपेंड करता है मैम। आजकल की जो यंग जनरेशन है, क्योंकि हर जनरेशन में फर्क होता है, हर जनरेशन अपनी पुरानी जनरेशन से असहमत रहती है, पुरानी जनरेशन नई जनरेशन को ऐसा ही बोलती है, जैसा मैं बोलने जा रहा हूँ। थोड़ा सा कंप्यूटराइज जमाना है तो वो ज़्यादा इंडल्ज हो गए हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। बट इसमें एक बात है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमारे पास कुछ कमांडर होते हैं, सब इंस्पेक्टर एएसआई लेवल के, कुछ कमांडर कंपनी कमांडर लेवल के होते हैं, तो उनमें जो डेडिकेटेड या कमिटेड होते हैं, बिकॉज नई जनरेशन थोड़ा सा रजिस्ट करेगी, वो बोलेगी यार ये काम ऐसा करने से क्यों फायदा है, बिकॉज वो ये चीज़ नहीं समझ सकते कि जो भी हमारे पास सिस्टम है वो टाइम टेस्टेड है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो वेटरन्स हैं, जो वो बना के हैं या उसमें हम ऐड ऑन कर रहे हैं, सो दिस इज ऑल हिट एंड ट्रायल बेसिस पर हमने डेवलप किया है। इसमें डिपेंड इसी बात पर करता है कि कमांडर उसको कितना मोटिवेट कर लेता है। कोई बात नहीं, बच्चे इसको करके देख लो, धीमे धीमे वो चीज़ें हो जाती हैं। अब आप बात कर रहे हैं इनोवेशन की। इनोवेशन में फिर आप शायद कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, बट बीएसएफ में मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग दो जगह डिप्लॉय होते हैं, ऐसे तो कई जगह होते हैं, बट मैं आपको सिर्फ बॉर्डर का बता रहा हूँ। जी सर। एक होता है इंटरनेशनल बाउंड्री, एक होता है एलसी जो पाकिस्तान के साथ है। तो वहाँ पर हम आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। मुझे वहाँ एक बार मौका मिला, मैं आपको बताता हूँ, वहाँ एक फैंस है जो इतनी बड़ी नहीं है जितनी हमारे यहाँ है, लेकिन उन लोगों ने उसकी डिफेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ ऐसे आइडियाज अडॉप्ट किए थे जो हमें लगता था यार ये कोई आइडिया ही नहीं है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा यहाँ पर, बट फिर वहाँ वो लोग बैठते थे, ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि उनके लिए हम उनका हमसे इंटरेक्शन लाइफ टाइम में वंस होता है, हमारा भी उनसे लाइफ टाइम वंस ही होता है। फिर वो हमको बैठ के बताते थे, ये करते थे। तो वो चूंकि थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तो थोड़ा कष्ट तो होता है जवान को। आपको फिर अपने जवान को बताना पड़ेगा, नहीं भाई हम यहाँ पे 2 साल के लिए आए हैं, साल भर के लिए आए हैं, इट इज अल्टी फॉर आवर अल्टीमेट सेफ्टी। बिकॉज वहाँ पे क्या है, काउंटर पार्ट की तरफ से थोड़ी सी बदमाशियां ज़्यादा हो जाती हैं कई बार, तो वो आपको सेफ्टी का एंगल डालना पड़ेगा। तो ट्रूप्स को मोटिवेट करने के तरीके आप ही को अपने वार्तालाप से ढूंढ निकालने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत सही चीज़ है ऑफ कोर्स। एंड ये सारे फैक्टर्स होते हैं, चाहे मोटिवेटिंग फैक्टर हो, चाहे टीम स्पिरिट्स को ऊपर रखने वाला फैक्टर्स हो, दैट कम्स from within. And when it comes to innovation, of course, as Chaudhary sir, I guess no, Pal sir was saying, yes, demotivation जैसा कोई फैक्टर नहीं आता, and that's really wonderful जब हम एक्शन के लिए प्रेफर करते हैं। अच्छा सर, इसके बारे में बात आती है because when we have team and here I was just told that कि हम लोग पूरे हाथी को नहीं देखते हैं, we look at our parts। क्या उसके बावजूद भी जब हम एज अ टीम वर्क कर रहे होते हैं, when we function as one unit, do we have that team in the right way, or are there any frictions? No, here ma'am, one thing is that we have been trained like that. We have been trained like that to work on need to know basis.
So basically, the people are generally satisfied to what they have been communicated. They feel that it is more than enough for their functioning. So they do not want to know more about that. So they also understand the protocol. It is very clear down below and upward also. What is the protocol and how much I have to share and how much I have to restrict. So everybody is well versed with that. So there is no such thing that, as you have stated, arise in our mind. It's नहीं होता है. फ्रिक्शंस की बात नहीं है मैम, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. मैं अभी का मेरे एक 2IC थे जो विशाल यहाँ बैठे हैं मेरे बैच में, उनके भी 2IC रहते. 2IC सेकंड इन कमांड, जो हमसे एक रैंक नीचे होते हैं बटालियन की हायरार्की में. जी सर. So that gentleman comes from Bihar, an educated person and from having convictions in his thoughts. तो उनका एक आदत है, अच्छा उनकी बोलने की पिच बड़ी हाई है मैडम. वो बोलते हैं तो यूजुअली से थोड़ा सा हाई बोलते हैं. नॉर्मली फोर्सेस में हम जब अपने सीनियर के सामने जाते हैं थोड़ा सा एक हम्बल पिच में बात करते हैं जनरली. तो जब भी कोई उनको बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस इन फोर्स, ऑलमोस्ट 20 इयर्स के आसपास सर्विस हो गई होगी उनकी भी, he would definitely come with alternate idea. Maybe he would try to improve this idea. Register तो मैं नहीं word इसको दूंगा, it will become the negative word. But he will come with some idea जो कि थोड़ा सा आपके आइडिया से ये होगा. So as commandant, मैंने उनको एक बार बोला, मैं बोला भाई आपकी आवाज थोड़ी सी ना हाई है, मैं थोड़ा सा लो पिच में बात करता हूँ. तो वो शर्मा गए, बोले सर मेरी आवाज नेचुरली हाई है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूँ. तो बट उनका सारे आइडिया सुनने के बाद एज बटालियन कमांडेंट कई बार मैं उनके आइडिया को एक्सेप्ट भी करता था, बट इट हैज हैपेंड ऑन मैनी एन ओकेशंस जहां मैंने उनकी बात सुन ली, फिर मैंने उनको बोला उनका नाम लेके कि भाई ऐसा करो, अब आपकी बात मैंने सुन ली है, नाउ वी डू दिस वर्क व्हाटएवर वे आई हैव टोल्ड. एज कमांडेंट आई लिसन टू हिम सो दैट उनका फ्रस्ट्रेशन आउट हो गया एंड ही कैन से कि यार मैंने जो बोलना था बोल दिया है. बट द सिंसियरिटी ऑफ दैट मैन वाज दैट आफ्टर हैविंग पुट अप हिज पॉइंट and after having listened to my instructions, he would do it with his all sincerity in the same way which I wanted, and it was with all his sincerity which I had reflected in APR also. So there is no friction, it is just वो तो करना ही पड़ेगा DPS को. There is no friction, that's what I'm saying. There is no friction, it is just the idea and the acceptability of the idea. आपको exchange of views तो करना ही चाहिए ultimately. एक से दो दिमाग बेटर होते हैं, मे बी समटाइम्स ही. अच्छा सर, इसमें जैसे पाल सर आप पहले ही बात कर रहे थे कि एजुकेशनल लेवल या फिर जैसे ग्रूमिंग होती है वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है. सो हम लोग अभी जैसे आपने बात की हायर अथॉरिटी एंड द सबऑर्डिनेट्स, जब हम लोग सेम लेवल ऑफ हायरार्की पे फॉलो कर रहे होते हैं और वहाँ जब फंक्शन कर रहे होते हैं और हमारा ग्रूमिंग एंड लेवल ऑफ एजुकेशन एंड द अपब्रिंगिंग एंड ऑफ कोर्स डिप्लॉयमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, सिचुएशंस अलग अलग होती है. तो उस सिचुएशन में आर देयर एनी occasions wherein the team face frictions within it? मैम हमारे एक DI साहब थे, बहुत अच्छा एग्जांपल है, अभी दिल्ली में पोस्टेड हैं जी. विशाल में भी नहीं, वो विशाल के भी DI रहे हैं. अच्छा हमारे एक बैचमेट थे, वो अभी आसाम में पोस्टेड हैं. तो वो जो हमारे बैचमेट हैं वो बड़ा फोर्सफुली अपना पॉइंट पुट अप करते हैं. एंड दिस DIG सर ही इज वेरी डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ कमांडर. वो सारी बात सुनेंगे. उसके बाद बोलेंगे राजीव काम कर लेना. ठीक, he would do it. जो अभी अनुराग बोलते हैं कि वो तो करना ही पड़ेगा भाई. It is that way. फोर्सेस में ऑप्शन नहीं है ज्यादा. आप अपना कोई कमांडर ऐसा होता है, देयर वाज वन कमांडर लॉन्ग बैक, ही डायड आई थिंक 9-10 इयर्स बैक, कि आप उनसे बात करने के लिए जाएंगे ना और उनको पता चल गया कि भाई बाहर जो है DP सिंह आ रखा है बात करने के लिए, व्हाट विल डू कि ऑफिस से बाहर निकलेंगे और DP सिंह को तो कुछ नहीं बोले, अनुराग को बोलेंगे अरे मैंने उसकी इंक्वायरी ऑर्डर कर दी, अरे मैंने उसको सजा दे दिया, आज उसको तुमने अंदर किया नहीं किया. ही वुड प्रेजेंट टू सच ए पोर्ट्रे कि DP सिंह की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी बात करने की. DP सिंह बोलेगा आज DI साहब का मूड ठीक नहीं है, चलो चलते हैं. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि भाई कमांडर कैसा है. कोई रिसेप्टिव है तो बात कर लेते हैं, रिसेप्टिव नहीं है तो नहीं बात हो पाती है. So there are different ways, devised to deal with different situations. Absolutely, human to human relationship है मैडम, there is no definite formula. और सर बीइंग लीडर्स, हम अपना टीम में ही अगर ऐसा हो रहा है, वो मेरा क्वेश्चन था, मैं वापस उसी पर आ रही हूँ कि अगर सेम लेवल पे दो पीपल अगर दे आर फंक्शनिंग और वहाँ कुछ फ्रिक्शन है,
तो ऑफ कोर्स बिकॉज वहाँ अथॉरिटी वर्क नहीं कर रही है, तो हम लोग उसको बीइंग लीडर्स, हाउ डू वी डील विद दैट? आज देखा ना आपने, फ्रिक्शन तो हो गया था। हाँ सर, हो तो गया था। तो एज सीनियर यू इंटरवीन, वहां पे कोई और सीनियर इंटरवीन कर देगा। अच्छा सर, इस इंटरवेंशन में अगर इनोवेटिव आइडिया है, उस पर डिस्कशन चल रहा है बहुत कि हाँ नहीं, ये वाला एस्पेक्ट सही है और ये वाला एस्पेक्ट फॉलो होना चाहिए, और हमें एक आइडिया तो एक्सेप्ट करना ही है। तो फिर हमारा क्या स्ट्रैटेजी रहता है कि किस तरीके से हम लोग ये चूज करते हैं कि हाँ कौन सा बेटर है, बिकॉज ऑफ कोर्स हम एक ही पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं बीइंग लीडर्स। तो वहाँ क्या हायरार्की में जिसके साइड से भी फ्रिक्शन ज्यादा होगा वो सस्टेन कर पाएगा। तो ये क्वेश्चन अप्रोप्रिएटली आंसर नहीं होगा, डीपी डिप्लोमेटिकली इसको आंसर कर सकता है, लेकिन इन जनरल इसको फ्रिक्शन वही लेता है जो सस्टेन कर सकता है। राइट। तो आप उसकी लाइन टो कर लेंगे अपने सीनियर की, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। अगर आप आइडिया आपका प्यारा है तो आप कोई मिडिल पाथ निकालेंगे और जिससे कि काम भी चल जाए आपका और प्रॉब्लम भी, क्योंकि अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट को ही अवॉइड करने में पूरा टाइम यहाँ चला जाता है। अदरवाइज तो इश्यूज सबको पता है देश में कि क्या इश्यूज है, एक दिन में सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं ज्यादातर उसमें से, लेकिन आदमी बस उस झमेले में पड़ना नहीं चाहता है। पीस ऑफ माइंड एंड सोल इज मोर इम्पोर्टेंट देन इशू आएगा कल, फिर कल रिजॉल्व कर लेंगे, आज रात की नींद चैन से आए, बस वो एफर्ट होता है। अदरवाइज तो सॉर्ट आउट बहुत सी चीजें की जा सकती है 24 घंटे के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो फ्रिक्शन जनरली होता नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, हीटेड आर्गुमेंट हो सकता है जी, और न उसमें डिसरिस्पेक्ट होगा और न होगा लॉन्ग टर्म का। डेफिनेटली सर, और वही बेस्ट पार्ट होता है कि वी आर एबल टू यू नो शेयर आवर थॉट्स, हम हमारे पास विदाउट दिस फियर ऑफ हैविंग फीलिंग अदरवाइज, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। सो दैट्स वंडरफुल सर। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स कुछ फैक्टर्स होते हैं, ज्यादातर कॉर्पोरेट्स में होते हैं, आप लोगों ने बताया कि हाँ बीएसएफ में बहुत सारे नहीं होते हैं, कि ये प्रॉब्लम्स होती है, और इनको डील करने के लिए ऑफ कोर्स जितना भी हमारे पास इश्यूज है, फर्स्ट वी ऑल हैव डिवाइस्ड द वे दैट वी कैन ऑप्ट फॉर, सो वी ऑप्ट फॉर दोज वेज एंड वी एक्चुअली मूव ऑन। सो या बट स्टिल अब हमने बहुत सारी बातें कर ली, देयर आर लॉट मेनी फैक्टर्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड, or keeping in all those things, are we able to create that culture, innovation culture? Are we really able to foster that innovation culture within BSF? So what you feel? I mean, we have talked about, we have discussed what is innovation, what it takes to have an innovative mindset, what are the areas, how to build that culture. But still, when we look at the commands that we hold, are we really able to create that innovation culture? Yes, culture is favorable, ma'am. Sir. Yes. So favorable है किस sense में? अपन मतलब like when we are leading. Openness and support, realization, in some aspects favorable है, मतलब considered views सबके उसमें लिए जाते हैं, और एज सच कोई आउटराइटली रिजेक्शन प्लान नहीं होता है फर्स्ट इंस्टेंस में। ट्रायल टेस्टिंग रिग्रेस है जी। आपको मतलब इतना स्मूथ राइड नहीं होगा इफ यू आर विथ योर आइडिया। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और टाइम के कंस्ट्रेंट्स हैं, वो फैक्टर एडवर्स होते हैं आपको जी। सर ऑफ कोर्स कल्चर है, but how do we maintain that culture? What efforts do we consistency require? है मैम, जो शायद you may not be aware, जो टियर स्मोक यूनिट है इंडिया में वो बीएसएफ ही रन करती है। इट्स ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, all rights of that all the cells we have, or you will be surprised to know that within the resources they have more than 50 products, Okay. तो इवन जो अभी आर्म्स और ट्रेनिंग सिमुलेटर्स आपने देखे होंगे, ये 30 साल पहले बीएसएफ ने मोटर बेस बना रखे हुए हैं। जितने उनके वेपन सिस्टम थे वो गैस ऑपरेटेड है या किसी और मैकेनिज्म पे काम करने वाले, उनके सिमुलेशन मॉडल आप आज देख रहे होंगे 3D में, उनमें उसके सेक्शनाइज्ड मॉडल बनाए हुए हैं जो ऑपरेट होते थे पावर इनपुट के साथ जी।
एक रॉकेटरी का भी प्रोजेक्ट बीएसएफ ने अपने इन पे शुरू किया हुआ था. लेटर ऑन इट वाज abandoned, but जो स्मोक यूनिट है, जो सेंट्रल वर्कशॉप स्टोर है, कम्युनिकेशन की लाइन में, प्लस जो कंप्यूटराइजेशन है, ये मतलब अमंग द सीएपीएफ वी आर द पायनियर इन मेनी केसेस. जो बॉर्डर फेंसिंग का कॉन्सेप्ट है, the cobra fencing, which you know, although it was not very refined form of fencing or guarding the border, but it was a creation of BSF only in Punjab militancy time. Later on, it was converted into a full-fledged fence designed and implemented by CPWD, and now it is implemented in every part of that is on western side also, eastern side also. So there are many innovation, but you know that now the social media and all, they are facilitating to take some credit. However, the forces generally, they don't grab the credit, or they don't go into the limelight with their innovation. Even people might not be aware about who has invented that cobra fence in the Punjab. Right. Marketing principle nahi hai hamare yahan, so they are unsung heroes, but there are many you can't count, even thousands of innovations are there. Right from the man management to resource management to doing the operational duty, ration, administration, clothing, equipments, all is based on the innovation. But generally people avoid taking credit of that. They prefer that system should take credit or organization rather than the individual driven idea or anything else. So, matlab, of course, we have all these, wonderful innovations in BSF, and we do follow that. We do follow that culture. Now, does that mean that we believe that no, nothing stands in the way? We are an organization, yes, that follows innovation culture. Yes. Well, if you go to the news articles and all, yes, drone menace is such a menace now, but right. even they are our troops are killing it hard. They have adopted a hard killing method of drones. Right. There is no any reference except in the World War II. One aircraft was shot down by SLR in the British warfare zone. So it's what you can say. It's simply innovation. Definitely. The weapon, the ammunition has been designed to kill a man. That has been used with same rate of fire accuracy, the sighting, and all system is the same, but they are now targeting that in the air. Yes. So, and that is a moving object. So training, innovation, initiative from commander on ground level who are actually facing the problem, it facilitates their innovation basically. So the weapon was same. It has been utilized in a different way. And it is having a good mitigation effect on the drone menace. एसके भी टीएसयू ने शायद एक ड्रोन भी बनाया है जिससे कि वो शेल्स को टीएस में शेल्स को क्राउड के ऊपर डालने का ये कर रहे हैं. I think they have tested also. इसका एक वीडियो even CSMT, the Central School of Motor Transport in Tekanpur, ma'am, it is one of the pioneer in the Central India and North India, imparting mechanical training. If the resources are given, they can beat any of the IIT mechanical department. I can bet. You must have seen that Java's team. Even Raj, if it was not aware that that motorcycle can be utilized in such a way that even Mama and the Rajpath and all are aware about the strength of that motorcycle that has been innovated by the BSF and their male and female contingents. So desire about the camel contingent, the only contingent in the world. Right. BSF के बारे में तो पूछे नहीं मैम, time will be less. Okay, सर बहुत टाइम है वैसे तो. चलिए सर, anyways, yes, but yes, सिंह सर आपकी बात में एक रेफरेंस आ गया resources का. Again, because that is somewhere, I guess, the only factor, the mental blocks and the resources that we have talked so far, and we somewhere feel that yes, it actually stands in the way of procuring the innovative ideas, the innovative culture. So apart from that, within us, yes, of course, that's really wonderful to share and know about that. Yes, we do follow that culture. So with that, let's quickly talk about that. So
there are certain skill set and there are options that we can actually talk about. So what do you think in general, what do you want to choose more? And then I'll be moving on to the next part. As for you, so quickly you can actually have, or judge your thoughts on which particular A or B part would you choose, and then we'll be talking about it. So how many A's and how many B's would you prefer to choose? Okay, Anurag sir and Tripathi sir is appreciating Sanjay sir. So yes, we share the truth. So how many A's and how many B's? हम इस स्लाइड को थोड़ा बड़ा कर देंगे क्या? Definitely, so I'll just give it a नहीं, try. मेरे ख्याल से नहीं, शायद मेरी इशू कहीं पे प्रॉब्लम है। बड़ी आप उसको फुल स्क्रीन करो। Yes. Okay. Yes, done, ma'am. Thanks. Yes, ma'am. What is the question now? The question is how many A's and how many B's, which tells whether we have this administrative framework of mind or entrepreneurial frame of mind. So that basically is what we follow. If we really are, using resources in a very controlled way, when we see that risk have to be minimized, we don't want to experiment. We don't want to actually, implement new ideas or structures or follow new things. That, of course, is a comparison that we have between administrative and entrepreneurial mindset. Okay, Dinesh sir has said 4 A's and 3 B's. So that's somewhere has to deal with. A's are more, ma'am. A's are more. So then still we are into that administrative framework. Because yes, I do agree that would happen, keeping in mind that we have lot many protocols, lot many mental blocks, lot many resources, scarcity of resources to follow. So that's how we have to function, because our priorities are very defined. It's very defined. We cannot experiment. So I do agree with that. But yeah, with slight change, with slight more acceptance of new ideas, we can be having more entrepreneurial mindset. So that is all said and done. Just to wrap the session up very quickly, we can talk about all these factors wherein when you think about the team, so and you judge whether they have that innovative mindset or not. So can you really identify those intrapreneurial members? Because when initially we were talking about that quiz and we asked that how whether your team is preneurial, and we saw that scores are more than 12. The teams were entrepreneurial, but what members specifically? That's for you. Any individual who is aware of what's going on, who is proactive strategically, and he has that courage, the grit as well. So yeah, we are able to then identify that one individual, or maybe somebody who can come up with an idea that adds great value. Or else, what are the barriers and how we remove those barriers? That's also one action that we have to talk about. So anywhere, any individual, any a small section of their team is not set about their priorities, or very they have that very limited belief about themselves, they keep on focused that yes, this is the only idea that we can have. So these are the self-limiting beliefs. So identifying all these factors would also help us create that culture of innovation, because if we overcome barriers, it actually a step towards creating an innovation culture, which we really want to foster. And we, of course, since we have that culture already, we want to continue with that. So, and these are the tips if we really want to follow, so that can be taken up here. So these are the tips which we can follow when we want to create that and keep following that innovative culture for ourselves. So that is something, yes, we can always adhere to. Now, if you'd like to share one insight that you're taking away from the worksheet, because we are almost done. Any one insight that, yes, this is the change or this is new that I just got to know about. Ma'am, can we go to the previous slide? Oh, definitely, sir. Give me a moment. Yes, here we are. You can take screenshots
really wish to, or if there are any further thoughts that we can actually discuss, we're open for that. Any thoughts, ideas, contemplations, delegations, of course. Select people in your company that have 6 attributes and let them solve problems. So can we, or? Yes, ma'am. Oh, definitely. And मैम एक चीज इसमें कहनी जी है, सर। जैसे कि selection of team composition. The kind of job we are into it, इसमें ऐसा नहीं होता है कि we are हमारे पास में बहुत ज़्यादा options होते हैं कि हमारी टीम में यही लोग होंगे. जी. It is not like that कि pick and choose किया, जिसको हमने चाहा उसकी पोस्टिंग करा ली, अपने पास में हमने रखा, ऐसा नहीं है. जी 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 जी. Issues इसमें होते हैं, ये किसी के भी साथ में हो सकता है, that when you get a kind of person जो कि आपके साथ में है, ऊपर वाले भी हमारे बारे में ऐसा मतलब सोच सकते हैं, that one, he is not professionally sound. अगर वो अपने टास्क के प्रति he is not very professional, but he is there, और you are duty bound to carry him. आप उसको ये भी नहीं बोल सकते कि आप ठीक है, you are not required here, you have to go, you have to leave. There are issues, इसमें थोड़ी सी issues होता है, but as a leader, as a team, उसको साथ में लेकर के चलना पड़ता है. ये कभी कभार ऐसा issue मेरे ख्याल से सबके साथ में होता है. हाँ सर, और वही जब हम लोग बात कर रहे थे setting the team right, so you know, getting rid of those frictions, चाहे वो individual level पे हो चाहे team level पे, because individual के mindset भी function करता है, and that's very important role that plays. How यहाँ पे individual think about. यहाँ पे friction की बात नहीं हो रही है. यहाँ पे friction की तो बात तब होगी when he is competent enough to pose his points, issues, वो right. He is part of that discussion. But if you are having a team, मतलब एक टीम है जो कि आपके 10 लोगों की है, और for that matter a task has been given to you, आपने एक टीम चूज किया, बट उसमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि उतने कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं जी, और बट वो हैं वहाँ पे, you cannot do anything about it. उसमें थोड़ा सा इशू होता है. और सर अगर ऐसा इशू हो जाता है तो अनुराग सर, I would like to know from you only, how do we deal with that? अब उसमें ये है मैम कि कल एक हमारे ही बैचमेट ने कहा था कि जो काम करता है उसको हम ज्यादा काम दे देते हैं, जो नहीं करता है उसको भी चीजें कम होती हैं. बट ठीक है, ही इज देयर, बट वी ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड, उसकी चीजों को बताने की कोशिश करते हैं, बट जितना मैक्सिमम हो सकता है करने की कोशिश होती है. बट अगर हम उसको उस टीम से हटा करके किसी दूसरे पोर्टफोलियो में फिर हम उसको शिफ्ट कर पाते हैं कि ठीक है, तुमसे अगर ये नहीं हो पा रहा है तो तुम कहीं और जा करके देखो. बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे कि लाइक आई सेड अर्लियर दैट ही इज देयर ओनली, वो है वहां पे एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. उसमें थोड़ा सा इश्यूज बीच में कई बार हो जाता है, और ये मेरे ख्याल से ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में होगा. ये ऐसा नहीं है कि ये चीजें यहीं पे हैं, और पॉलिटिक्स में ये थोड़ा सा ज्यादा होता होगा. बट बीइंग इन गवर्नमेंट सर्विस इसमें इश्यूज हैं कि आप बहुत कुछ चाह करके भी आप नहीं कर पाते. जी जी. Pal sir, I guess you have to add something here. बिल्कुल. तुम्हारे बिना बात ही नहीं पूरी होगी. सर वो ना सर कुछ एक्सपीरियंसेस रह जाते हैं, हमें लगता है कि हमें शेयर करने हैं, फिर हम सोच रहे होते हैं करना है नहीं करना है. सब कर सकते हैं सर. मैं बहुत पहले जी डीआई साहब हमारे रिटायर हो रहे थे, तो अपनी डाइनिंग आउट पार्टी में उन्होंने एक बात कही थी, एंड आई रिमेम्बर. बोलते हैं कि जब वो कमांडेंट बने खुद, तो उनके जो सेकंड इन कमांड थे वो दुर्भाग्यवश ऐसे थे जो उनसे सीनियर थे लेकिन सुपरसीड हो गए थे. दैट मीन्स कि वो जब तक 2IC थे तो दैट 2IC यूज्ड टू बी सीनियर एंड दिस डीआईजी सर यूज्ड टू बी जूनियर, बट ये प्रमोट होगा एंड समहाउ ही कुड नॉट मेक इट टू द नेक्स्ट रैंक. ही सेड कि वो उनके पास आ गए, तो ये हमारे लिए बड़ी असहज स्थिति होती है. प्राइवेट सेक्टर का नहीं आइडिया है, बट गवर्नमेंट सेक्टर में बड़ी असहज स्थिति होती है कि एक व्यक्ति आज तक आपसे जूनियर है, सीनियर है, और कल वो आपका जूनियर बन जाएगा. तो ही सेड कि यार, मैंने अपने 2IC साहब को बोला कि सर ये रही आपकी गाड़ी, ये रहा आपका स्टाफ, ये रहा आपका ऑफिस, और आपका डिफाइंड रोल है, जो काम करें सो करें,
और कोई वो मैं आपको बोलूंगा नहीं बिकॉज आप इतने साल मेरे सीनियर रहे हैं, बट कोई काम करें तो ना करें, लेकिन कम से कम मेरे काम को हैम्पर ना करें, काम को रोकें ना। जी जी, यही तरीका है मैडम। ये सब मैं जो अनुराग बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम वी कैन मेक आउट। कोई बंदा काम को नहीं करे तो चल जाता है, काम को ड्रैग ना करे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और हर डोमेन में, हर इंडस्ट्री में यही फंक्शन है कि काम होना जरूरी है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज वर्किंग व्हाट डजंट मैटर, एंड रिजल्ट चाहिए, एंड रिजल्ट मिल गया सो इट्स ऑल सॉर्टेड। टीम में 2-4 बंदे चल जाएंगे जो काम नहीं करेंगे, लेकिन काम को खींचने वाला एक बंदा मिल जाए तो वो फिर पूरी टीम को तरफ में ले जाता है। नहीं तो ये तो गुड साइन नहीं है। साइन तो गुड नहीं है सर, लेकिन कर क्या सकते हैं हम, वही सोल्यूशन है, आप सजेस्ट करें। ये मजबूरी, यही मजबूरी तो ऑर्गेनाइजेशन को भी चला रही है और फैमिली को भी, इस देश को भी। इस मजबूरी से ही तो बाहर निकलना है। People have been paid equally for doing that. Exactly. If somebody is not doing, why he can't be penalized for that? Yes. Idealistic बातें हैं, I agree with that what SK is telling, but sometimes you have to be more practical. ड्यूटी ऐसी है कि आइडियलिज्म तो आपके राइट साइड में होना ही पड़ेगा। ये तो मतलब नेशन गार्डिंग है। इसमें डिफरेंट व्यू भी नहीं है कि मेरा कोई डिफरेंट व्यू है। देयर इज a law book written in almost 50 years back by some and passed by the parliament, and it has given all the references which even in 2022 we are facing. So people have vision relevant also. So try to implement those things in letter and spirit. Don't follow the letters only. We are missing the spirit somewhere. That's why we are keeping the people, incompetent people in the organization for 30-35 years. They are taking promotion also. They are getting promotions also. We are giving them promotion also. That should not be endeavor. In my personal view. बिल्कुल पर्सनल व्यू ही है, फिर बाद में बात होगी इस पे। नहीं, एचआर मैनेजमेंट में मैम डिफरेंट चीजें होती हैं। अब ऐसा नहीं है, वो जो ये वो भी ठीक है। ये वी में कौन शामिल है भाई? एक अपना बात हो सकता है, बट अभी नहीं मैम, मैं तो फर्म बिलीवर हूँ इस चीज का। इफ यू हैव नॉट बीन पेड, यू हैव नॉट बीन गिवन टाइम, you have not been given resources, you have not been trained, then you have every right to refuse or not do that work. Right. If opportunity has been given, privilege you are availing, then there is no reason of any excuses. And we should not accept as a supervisory officer, whatsoever will be the consequences. There may be various reasons I can't explain here, but we should not. नहीं, you are telling that is correct, but different type of personality है, इसलिए तो एक कोर्स हो रहा है ना भाई कि how to deal with those type of personalities. No, यही मैं बोल रहा हूँ कि ये 1965 में लोगों को पता था, ये अलग से नहीं, मैं भी नहीं करता कि इस कोर्स के बाद हम उनको डील कर लेंगे. There are mechanism available. Yes, this course is certainly teaching us that how do the things in a more structured way and to get it done in a more professional way. Then we are doing it, but by undergoing these courses or such type of lessons learning, it facilitates us to take certain decisions which we might be taking, considering 1, 2, 3 points only. Now we will take all 5 points into consideration, or 6 or 7, or we will be having a open-minded in approaching any of the problem or person. Yes, sir. Thanks, sir. And your point is well taken, of course, because we cannot, have all the solutions in one go. But yes, devising ways is what innovation is all about. So your point is well taken. Of course, that's one issue that almost every sector faces. It's not just about forces, it's about corporates, it's about academics, everywhere. There are people who work and there are people who do not. And of course, this job is not pizza delivery job. Nation God. Yes. Weapon is not the job which is trusted to everybody. So one should be careful. It can't be equated with any other job, ma'am. We don't have even our whole fundamental rights also. Definitely agreed, sir. मैं इस बात पे नहीं, मैं इमोशनल कॉल कोई नहीं ले सकता इस पे. कॉल होगी, that is very clear. Yes, definitely. Incompetency. Definitely, sir. And I guess Tripathi sir has something to add here. नहीं, मैं संजय की बात से सहमत हूं, लेकिन जैसा डीपी ने कहा कि ये कॉपी बुक स्टाइल तो है,
लेकिन काम करने में आपको थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच रखनी पड़ती है और फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ती है, और उसी को मैच्योरिटी कहते हैं आजकल। तो साथ में उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। जी जी जी। साइडेड मैच्योरिटी कब तक चलेगी त्रिपाठी? अरे नहीं, ऐसे में तो फिर 3 से ज्यादा जितनी भी बैड एंट्री ऑलमोस्ट 30% लोगों की है, सबको तो अब तक हम लोग घर भेज चुके होते हैं। कोर्ट का भी ऐसा ही व्यू है अनुराग, जिनको फांसी की सजा और उम्र कैद देते हैं उनके घर में भी कोई ब्रेड देने वाला नहीं होता। नहीं, दैट इज देयर, लेकिन इमोशनल कॉल लो, नहीं आप या तो उसकी फैमिली रन करने का हम ठेका ले लेते हैं। नहीं देखो, किसी भी लोगों को वहां रखते हैं, किसी भी कल के दिन वो इन सब चीजों में डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, यू आर देयर, काफी सारी चीजें हैं पेपर में दी हुई हैं, बट हर चीज लॉ से और जो रिटन में है उन सब चीजों पे अगर हम देखने जाएं, देयर इज आल्सो सम काइंड ऑफ ह्यूमन एंगल आल्सो। बिना ह्यूमन एंगल को चीजों में ला करके और डिसीजन लेने में मुझे लगता है मे बी हो सकता है कि आई मे बी यहाँ पर ये भी कहना है कि द मोमेंट यू स्टार्ट, आप कुछ स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जस्ट ऊपर वाला ही उसको उल्टा करके रख देगा। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। नहीं मैं यही की बात कर रहा हूँ, और नॉट ओनली फॉर BSF, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, दोज हु आर गार्डिंग द बॉर्डर और नेशनल सिक्योरिटी कॉज में, लॉ एंड ऑर्डर में लगे हुए। मैं बोलता हूँ कि अब कम टू द पॉइंट, you are a senior officer, you have some discretionary power, you have a rational logical thinking apparatus in you, you have been paid handsomely by the government for that purpose. So what all mechanism we have implemented or placed in place to correct those things? क्या 96 के बाद से banditry वाले अभी नहीं है हमारे? एक्सट्रीम पे नहीं जा सकते। what त्रिपाठी is trying to say, वो ये बोल रहा है कि approach should be balanced। अगर हम बिल्कुल एक्सट्रीम पे रहें कि ठीक है, मतलब कहीं भी थोड़ी सी गलती हुई उसको उठा करके हटा दिया, जैसे कि कल वो वीडियो की बात, ये तो इनसेन है, ये तो आपकी पावर का मिसयूज है। मैं तो कहता हूं कि you have been placed at a place where you have rational thought, logical and all the reasoning, and you have been placed above 1200%। अगर तो उस रीजनिंग के साथ ही आदमी, अरे ये तो कहने की बात ही नहीं है कि इसमें बैलेंस अप्रोच की क्या, आप तानाशाह नहीं हो, यू आर पावर्ड, बट यू हैव बीन एम्पावर्ड टू मेक पीपल वर्क आल्सो। मैं यही अरे तभी तो काम चल रहा है भाई। अगर काम नहीं, काम तो हमने बोला ना, काम तो हम उसको देते हैं, अभी हमने एक्सेप्ट किया, काम उसको देते हैं, करता है। नहीं अरे यार बोला गया, सुनो ठीक है, ये बात मैंने बोली थी, बट दैट वाज रेयर। मतलब ऐसा नहीं है कि सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही हैं। वन ऑट केस हर जगह होता है, हर एक यूनिट में होगा, हर एक सेक्टर में होगा, फ्रंटियर में होगा। ऐसा नहीं है कि सारे लोगों का काम करने का तरीका और आउटपुट जो है वो एक जैसा है। व्हाट आई मीन टू से, आज भी अगर आप देखो एक सेक्टर में या एक फ्रंटियर में अगर कोई इंपॉर्टेंट स्टाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है या कि मतलब इस टाइप का कोई अगर इन्वेस्टिगेशन करना है, तो ऑफिसर्स पहले से मार्क रहते हैं कि हाँ ठीक है, ये काम अगर इसको दिया जाएगा तो ये ढंग से कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि वो तो अलग माइंडसेट है। अनुराग जब क्राइम बढ़ जाता है ना, जिस आदमी को पुलिस लाइन में SP बना के सस्पेंड किए रहते हैं, उसी को डिस्ट्रिक्ट का चार्ज देते हैं क्योंकि वो ऑनेस्ट होता है। अरे बाबा सही, किसको फेवर कर रहा है? इसको BSF पार्लेंस में मत लीजिए आप। नहीं मैं BSF की कमांड के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सिस्टम क्यों फेवर कर रहा है इनकॉम्पिटेंट को। नहीं यस क्वेश्चन है। नहीं आपकी बात मैं आपको या अपने को या किसी को नहीं कह रहा हूं कि हम इनकॉम्पिटेंसी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर कहीं दिल में हमारे है कि व्हाट आई एम प्रपोजिंग और व्हाट आई एम सपोज टू एक्ट, आई एम नॉट एबल टू एक्ट इन दैट वे, ये क्या है? नहीं वो तो आप डिप्लोमेटिकली जितना भी बैलेंस, मैच्योरिटी और उसको ह्यूमन कंपैशनेट ग्राउंड जो भी आप समझ लें, लेकिन फैक्ट तो यही है पार्टनर कि जो काम नहीं करे उसको निकालने का मन करता है, लेकिन हम निकाल नहीं पाते हैं। बस जो काम नहीं करता है उसको कुछ और करने का मन करता है, करने से क्यों नहीं निकाल पाते? I think we should stop. क्यों नहीं निकाल पाते? नहीं यार, ये सब क्यों नहीं निकाल पाते? आप पूरे गवर्नमेंट सेटअप को देखे, जब लीडरशिप में आप चेंज नहीं कर सकते, जब आप लेजिस्लेटिव एक्सिक्यूटिव हर जगह इम्प्लीमेंट 56 जो है ना आपके पास। But yes, I do agree that yes. आप केवल इस फील्ड के इनकॉम्पिटेंसी की बात नहीं, आप लोग वही फिर आगे वहीं पे कॉर्नर में ले जा करके और मुझे जो है बॉक्स मत करने की कोशिश करो।
मैं बोल रहा हूँ कि हर जगह इनकॉम्पिटेंसी को हमने तो प्रोटेक्ट किया हुआ है ना. यू सी एनी फील्ड, मैडम तो बता रही है प्राइवेट में भी ऐसे हैं. दे मस्ट बी हैविंग अदर टूल रेदर देन डिलीवरिंग द प्रोडक्ट्स. वो फैसिलिटेटर होंगे, वो उनके पास इनफॉर्मल चैनल से कोई इंफॉर्मेशन ले जाते होंगे, वो एक्चुअल वर्क से ज्यादा वो ट्रस्टवर्दी होंगे. जो आइडिया लेके जाते होंगे इनोवेशन, उनसे ज्यादा वो ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि वो उनके राय मंत्री हैं. Tripathi, I have succeeded. एक ही कहावत है फौज में, द रिवार्ड ऑफ वर्क इज मोर वर्क. तो बात यह है कि जो अभी डीपी कह रहे थे, जहां से बात शुरू हुई थी वो ये हुई थी कि कमांडेंट या फॉर दैट मैटर कोई भी हेड ऑफ द ऑफिस है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि जो आपके अंडर कमांड्स दिए गए हैं, जो टीम दी गई है, उनको आप कैसे किस काम के लिए बेहतर समझते हो, उस तरीके के उनको काम देना और उनसे काम लेना. मैं बिल्कुल इस बात का सपोर्ट नहीं करता कि कोई काम नहीं कर रहा है तो आप उसको काम ना दें. वही बात कर रहा था मैं, और कोई डिफरेंट डीपी या बीएसएफ की बात नहीं है, हर जगह है. आपको क्या लगता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरा काम कर रहा है क्या? कर रहा है क्या? ये कोई आप ज्यादा ओपन हो, हम्बल हो, आप एक्सेप्ट कर ले रहे हो, वो तो एक्सेप्ट भी नहीं करते. एसके, हम जिस सोसाइटी से आते हैं, हाँ, सोसाइटी उसी तरीके से हम तो एकदम मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ. ये थॉट प्रोसेस है हमारा. थॉट प्रोसेस है, राइट फ्रॉम पॉलिटिक्स टू गवर्नमेंट ऑफिस टू प्राइवेट जॉब, सब जगह जब सिस्टम ऐसा है, तो इसी सिस्टम में हमको अपने काम करने हैं. सर, जो आप कह रहे थे ना कि त्रिपाठी जी कह रहे थे कि that the recognition that if you work more or you work better is more of work. Actually sir, इसका एक term है, वो कहते हैं performance punishment. So somebody who performs gets more work. Yes, and that's yes, absolutely. So it's not there in the forces, it's universal. Ma'am, you will be punished for your sincerity or hard work. ये मतलब सर हमें वो शायद बने भी इसी तरह होते हैं मैम, उनको फिर सर हमें इतना नेगेटिव नहीं सोचना है, हमें पॉजिटिव देखना है कि शायद उनको इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वो कर सकते हैं, और उनको नहीं दिया जाता है जो नहीं कर सकते हैं. और ये मिस्टर एसके सिंह भी उन्हीं में से एक हैं. मैं समझ रही हूँ कि उनका दर्द काम न करने वालों पे कौन से नहीं ज्यादा काम करते हैं उनमें से एक है. नहीं, ज्यादा काम करने वाले ही बोलेंगे. बोला सर आपने. दिनेश सर, तुम इतने किस्से सुनाए हो कि मेरा भी मन कर गया. टाइम 2 मिनट लूंगा. जी सर. तो एक हमारे यहाँ वो ड्राफ्ट बनाते थे, तो वो हर बार मैम वो जानबूझ करके, उनको लगता था कि हम क्यों अपना टाइम इसमें वेस्ट करेंगे, तो वो किसी भी तरह का आड़ा तिरछा ड्राफ्ट को भेज देते थे हमारे पास कि ये तो ठीक कर ही देंगे इसको. एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ. टास्क उन्हीं का था, वो काम करना था, बाकी प्रिविलेज वो ले रहे थे उस पोस्ट से रिलेटेड. तो हम रहते थे डाउन में और उनका थोड़ा सा रेजिडेंस हिल साइड में था, मतलब करीबन 100 सीढ़ियां रही होंगी. लोकेशन कई लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, रहे हुए अपने भी बैचमेट वहां. तो वो मेरे पास करीबन 5:45 बजे, 5:30 बजे वो ड्राफ्ट भेज देंगे, जब जानते हैं कि ये 6 बजे जाएंगे अब खेलने के लिए, या तो नीचे जाएंगे अब ये अपने रेजिडेंस की तरफ. ये जेएनके की बात है. तो मैं भी लेके उसको चलाता था, और मैं फिर 8 बजे जब उनके खाने का टाइम होता था, तब उस ड्राफ्ट में करेक्शन के लिए उनको नीचे बुलाता था. 8 बजे आप रजाई में से जब कश्मीर में निकल के आते हैं, ये चला करीबन 15 दिन. उसके बाद इतनी अच्छी उनकी अंग्रेजी हो गई, इतना बढ़िया वो ड्राफ्ट बनाते थे, एक बार में ही ओके हो जाता था, क्योंकि वो 2 बार, वो फिर 8 बजे एक बार आते थे, फिर करेक्ट करके उसको टाइप करके फिर 9 बजे. तो उन्होंने इतना बढ़िया 5 बजे ही देते थे, और बोलते थे सर जब आप नीचे जाएंगे एक बार हम लोग इसको रिविजिट कर लेंगे. हमने कहा एकदम बढ़िया, 5:30 हम ओके कर देंगे. So वही ना, आपने डिवाइस कर लिया एक वे. एंड दैट्स व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट. मनीषा जब कह रहे थे कि हाँ हमें देखना होता है, so these are the नहीं, वो तो आइडेंटिफिकेशन तो टैलेंट का डेफिनेटली, अदरवाइज तो आप फेल हो जाएंगे. सबसे काम कराने के चक्कर में तो फिर किसी से नहीं हो पाता है, ये तो फैक्ट है. बिल्कुल 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 सर. चलिए, having said it's almost done, and these are the further readings. Vani, we can now. Yes. So, yes. Yes. Thank you, Dr. Kirti.
And thank you, the entire cohort. It was really wonderful and learning opportunity for me as well. Thank you. Thank you. And I think, what about closing the session early today, cohort? I think we can leave the floor open for any further discussion, because I mean, the crux of the innovation day has been done. इससे अच्छा तो इनोवेटिव आइडिया हो ही नहीं सकता है. आप सेशन को 15 मिनट पहले क्लोज कर दीजिए. Yeah. So thank you so much, Dr. Kirti. I would request my team Divya to please share the feedback link on the chat, and I'll just brief you about the sessions tomorrow. So we'll be starting with a session on personal finance management, and then we will be having a session on delegating effectively. That's how the day 11 will go. And so Arvind, Puneet, we will keep the link open for the next 10 minutes. We can and just going away from our coaches gender, we'll both have coaches are male tomorrow, so enjoy it. Over to you, Tanvi. नहीं, वो पैसे का मामला है मैम, तो वो तो फिर तो हैंडल करना पड़ेगा. Over to you, Tanvi. Yes, Vani. So we have shared the feedback link, participants. We are off the camera. Recording will be off now. 10 more minutes, the link is open. All right. Bye-bye. Have a great day. Shubh Ratri. Jai Hind. Thank you, ma'am. Shubh Ratri.